एक्सेसिंग लिख रखा है। हाँ हाँ, नाउ अनम्यूट। ओके ओके ओके। All are going to sit into meditation. A very good morning to everyone. And अब हम ध्यान में बैठेंगे जब तक सर नहीं आ रहे हैं। तो अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। Just be with your normal, natural flowing breath. Just be with your normal, natural flowing breath. अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। Relax each and every part of your body. अपने आप को पूरी तरह शांत कर ले। Just be with your easy, simple, natural, tender, tranquil breath. अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। हम सब भगवान हैं। Just be with your natural flowing breath. नमस्ते पत्री जी। नमस्कार। नमस्ते सर। Continue, हम सब continue meditation. just feel the normal, natural flowing breath inside you. The simple, tender, peaceful, tranquil breath inside you. Just be with your normal, natural flowing breath. हम सब भगवान हैं। कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। लगातार ध्यान। Be with your breath, my dear friends. Out 10 minutes. Keep the music on. Don't disturb the music. A little more music. कोई भी आंखें न खोले। और 10 मिनट। लगातार ध्यान। ब्यूटीफुल मेडिटेशन। लगातार मेडिटेशन।
Be with your breath. Normal, natural breath. Okay, Baba. Kindly keep your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. चलिए नीलम जी आगे बढ़िए थोड़ा. हाँ सर, सबसे पहले आपको प्रणाम. प्रणाम बाबा. And today, sir, Odisha Masters, along with Awaken Youths, have organized the third digital Dhyan Yagna, sir. सर्वप्रथम आपको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को. उसके बाद मेरे जितने भी आत्म बंधु हैं उनको मेरा प्रणाम. सर, कबीर का एक दोहा याद आया है जो जरूर बोलना चाहूंगी सर. गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दिया मिलाए. गोविंद here doesn't means Krishna consciousness. It is the Atma within us. He made us realize that God is within us. वो हमारे अंदर है. हम बाहर किसकी पूजा कर रहे हैं? ध्यान के द्वारा हम स्वयं को पहचाने, हम अपने आप को पहचाने. He is a living Buddha who is teaching the art of meditation to the whole world. He is the founder of Pyramid Spiritual Society movement. Sir was born in the year 1947 and he got enlightenment in the year 1979. His guru was Sadanand Yogi. सर, हम सबसे एक बात कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के मित्र हैं. यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, हम सब एक हैं. ऐसे तो मुझे सर की सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत प्रिय है, दैट इज सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग. आप सरल सोचिए और सरल रहिए. सर ने 30 साल पहले ध्यान का एक बीज बोया था जो आज एक बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है. एंड टुडे वी मिलियंस ऑफ पिरामिड मास्टर्स आर स्प्रेडिंग हिज विजन ऑफ पिरामिड जगत, ध्यान जगत एंड शाकाहार जगत. Sir, it is his pledge to convert each and every person in this world vegetarian. He is very simple. He is a friend, mentor and guide to all the PSSM masters. And we all pyramid master follow the 18 principles, 18 guided principles of PSSM and the 9 Dhyan Ratnas. We'll just like to brief the 9 Dhyan Ratnas. That is, आत्मा ही पर ब्रह्म है, मतलब अहम ब्रह्मस्मि. शरीर ही देवालय है. दिस बॉडी इज द टेम्पल. जीव ही ईश्वर है. जो जीव हमारे अंदर जो आत्मा है वही भगवान है. श्वास ही गुरु है. समय ही साधना है. सहन ही प्रगति है. पेशेंस इज प्रोग्रेशन. अनुभव ही ज्ञान है. ज्ञान ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष है. सर के बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम है, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सर को आमंत्रित करूंगी कि वो हमें कुछ बताएं. नहीं बाबा, नहीं. आप कैसे आए ध्यान में? आप कैसे आए, क्यों आए, वो तो बताइए हम सब लोगों को. सर, लाइफ में सब कुछ था सर, लेकिन कुछ कमी लग रहा था सर. देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ. So sir, I entered and I loved doing meditations. Sir, आपने guide किया and
through your guidance, through other masters of Odisha's guide, sir, I came into When was it? meditation. Sir, I came into meditation 2012, sir, when I went to Egypt with you to Okay. meditate in that Giza pyramid. Is a 360-degree turn, sir. A person who could not speak in front of everyone, could not express herself, is sitting right in front of you, sir, now. So this dhyan has changed me completely, sir. And sir, what to say, it is to me. And now I'm teaching. हिंदी और अब मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, सर। मेरे पास छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। एक बच्चा आता है, सर, आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ दैट छोटा बच्चा, सर। हिज नेम इज ऋषि। He is only 8 years or 9 years, sir. लेकिन every day, sir, he will come to me and he is going to meditate. वो मेरे साथ ध्यान करेगा, सर। सॉरी, वो मेरे साथ ध्यान करेगा, सर। पूर्णिमा ध्यान के दिन मेरे साथ में बोलेगा, आंटी चलिए अपने पिरामिड में 1 घंटा और बैठते हैं। प्यारा बच्चा है, सर। आई थिंक, मेरे को लगता है वो बच्चा जरूर कोई योगी रहा होगा, सर, क्योंकि वो डेली, सर, वो आएगा मेरे पास। कुछ हो, बारिश हो, कुछ हो, लेकिन मेरे पास जरूर आएगा, सर, वो बच्चा। कितने साल का बच्चा है? सर, वो 9 साल का है, क्लास 3 में पढ़ता है, सर, वो बच्चा। तो वो जगत गुरु बनेगा बाबा आपके हाथों में रहकर। हाँ, सर, लगता तो ऐसा ही है, सर, क्योंकि उसका जो डेडिकेशन है, सर, कोई आए ना आए, सर, 7:30 बजे पहले ही सर आ जाएगा, पिरामिड में बैठा रहेगा। और चाहे कभी-कभी नींद भी आ जाए, सर, उस बच्चे को, लेकिन वो रहेगा, सर। वो 9 बजे तक मेरे साथ रहेगा। और पूर्णिमा ध्यान के दिन हम रात को छत्ता पे बैठ के सब ध्यान करते हैं, सर। तो कोई आए ना आए, वो ऋषि पक्का आएगा, सर। मुझे पूछ रहा था, आपने मेरे बारे में सर को बताया क्या? मैंने अभी तक नहीं बताया सर को। देखिए, आज अपने से ऐसा हुआ कि मैं आपके सामने उस बच्चे के बारे में बता रही क्या हूँ। नाम है उस बच्चा का? उसका ऋषि थटोई, सर। अच्छा। उसका नाम है ऋषि थटोई। सर, ही इज़ अ सन ऑफ अ डॉक्टर, सर। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। और वो मेरे पास आकर बैठता है, सर। 18 गाइडेड प्रिंसिपल मेरे से सुनता है। वो जब आया कि नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, तो उसे लगा आंटी ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज़ हिज फादर हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, सर। हम बोले, बेटा ध्यान करने से तू देखना, तुझे कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका एक वीडियो भी बनाई थी, सर, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं ध्यान करने लगा, तब से मैं पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्संट्रेट करने लग गया और मैं खाना कम खाने लग गया, आंटी। और मैं ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक हो गया हूँ। मैं उससे पूछी, "तू 2 महीना से आ रहा है मेरे पास ध्यान करने के लिए, तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुन्ना?" तो बोला, "आंटी, मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, कोई दवा लेने की मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही है और एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ और खाता भी कम हूँ अब मैं।" अरे वाह! आपके घर में क्या-क्या डिफरेंसेस आए हैं, चेंजेस? घर परिवार? सर सर, घर परिवार में सब, एवरीवन इज़ लिस्टनिंग टू मी नाउ, सर। सब मेरी बात सुनते हैं, सर। Whatever I say, everyone listens to me, even my husband, my mother-in-law, my father-in-law. My mother-in-law, she makes, वो हिंदी में, सर, वो आती हैं, सर, पिरामिड में ध्यान करने के लिए 1 घंटा। हालाँकि उनका इतना मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो मेरे बोलने से आती है। वो 7:30 बजे आती हैं। वो आधे में, पता नहीं वो आँख खोल लेती है, नहीं मुझे पता नहीं। कभी-कभी आधे में चली जाती है, लेकिन सर आती रेगुलरली है। वो डेली आती हैं, सर। मेरे दोनों बच्चे ध्यान करने लग गए, सर। राघव एंड चेरी, वो ध्यान करते हैं, सर। सर, आई थिंक माय हस्बैंड will also come into it and my father-in-law will also enter this. दैट इज़ लेकिन वो वेरी ग्रेट, मुझे, दैट इज़ वेरी ग्रेट बाबा। एक आ गए घर परिवार में, पूरे लोग आ जाएँगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आ जाएँगे। हुँ, सर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सर, ये जो पिरामिड आपने मुझे दे दिया, सर। इट इज़ अ ब्लेसिंग टू मी। और लॉकडाउन के टाइम तो इट इज़ रियली प्रूव्ड अ ब्लेसिंग टू मी, सर। अ रियल ब्लेसिंग व्हिच हैज़ कम माय वे, सर।
I should thank the universe for giving me such a beautiful pyramid, sir. In the morning, sir, I'm there in the pyramid. 4:30 I'm there. 2-3 लोग आते हैं सर मेरे साथ में ध्यान करने के लिए. Till 7 we are there in the pyramid meditating. Then 7:30 daily there is a class, sir. 7:30 to 8:30 regularly we do a meditation, sir. And पूर्णिमा ध्यान होता है सर, तो रात को हम 2-3 घंटा बैठते हैं सर ध्यान करने के लिए. ठीक है, थोड़ा मदर इंडिया के बारे में बात करिए, उनके परिवार, घर परिवार. Mother India is a beautiful soul, sir. She has inspired me a lot. रोहिणी जो है, she is very sweet, sir. And भैया अरुण भैया is also very sweet. उन्होंने she is a inspiration to Odisha masters, sir. क्योंकि सारे दिन she is there in the pyramid teaching people meditation, and she is also a mentor, guide, everything to me, sir. क्योंकि उन्होंने सब जगह मुझे हेल्प किया है सर, whenever I asked for it, and she is always standing there, sir. मदर इंडिया को हम प्रणाम करते हैं बाबा. हैदराबाद से पूरा PSSM के तरफ से हम मदर इंडिया को प्रणाम करते हैं, पूरे ओडिशा मास्टर्स को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं. You please translate my English into Hindi. Okay, I would like that way. Sentence by sentence I will speak, right? Okay, sir. Remember that Corona is the best thing that to happen to everybody. आप ये सोचिए कि करुणा सबसे बड़ी चीज है जो एक किसी के साथ में होगा. इतने दिन हम बाहर थे सड़कों के ऊपर, अब now we are I am in Hyderabad, my home, and you are in your homes. Nothing can be greater than this. We are homebound now. Our home has become ashram. Our home has become our retreat, our resort. Yes. हम इतने दिन घर के बाहर थे, अभी हमें चांस मिला है घर के अंदर रहने के लिए. ये घर हमारा आश्रम है और यही हमारा रिट्रीट है. Otherwise, we used to go to other retreats, to go somewhere else, to have peace of mind, to do meditation. But now our home is our place of peace of mind. Our home is our meditation center. We are doing meditation at home, right? Happily. पहले हम दूसरी जगह जाते थे ध्यान के लिए, पीस के लिए, लेकिन अब हमारा घर ही है जहां पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं and we can be in peace. We don't have to go to any other ashram, any other place, any other Himalayas, or any other Puri Jagannath. Our house is our ashram, our body is our temple, and we are gods. And our breath is our guru. Guru is nowhere else. These are the equations. Our house is our ashram, our body is our temple, we are the gods, and our breath is the guru. When you understand these 4 equations, you are happily at home. Your home has become ashram, my dear friends. Yes. हमको हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा घर ही हमारा आश्रम है. श्वास ही हमारे साथ है. हमको कोई कहीं और जगह जाने, कोई रिट्रीट जाने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ बैठ के ही आराम से ध्यान कर सकते हैं. कोई दाढ़ी वाले के पीछे मत पड़िए आप. Be with your breath. No other person can be your guru. Your breath is your guru. That is the fundamental theory of pyramid spiritual society movement. The breath is our guru. So, you said, Guru bina Govind nahi. So, where is the guru? So, you don't have to search for a guru. Your guru is there with you in the body as the breath. So, you close your eyes, hands into hands, and observe the breath. Go to the breath. That is going to the guru. Then you will not understand. You will understand that you are the Govind. You are the Govind, residing in the body. Everybody is Govind. Every prani is Govind. But to know that, you must go to your guru. That is the breath. Yes. आप दाढ़ी वाला को मत अपना गुरु बनाइए. आपका गुरु आपके साथ है. आपकी सांस ही आपकी गुरु है. और गोविंदा जो है, जो आत्मा है,
आप अपनी सांसों के द्वारा ही उसको पा सकते हैं। आपको किसी बाहर गुरु की जरूरत नहीं है। मैं एक बार खाली इंटरप्ट सर को करना चाहूंगी कि सर आपने बोला कि गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन वी वांट अ मेंटर एंड अ गाइड सर टू गाइड अस, कि वो सांस हमको आत्मा, तो वो बताने वाला भी तो कोई चाहिए सर। अरे बाबा, उसको मेंटर मत कहिए, उसको और कुछ भी मत कहिए, इन्फॉर्मर बोलो, इन्फॉर्मर। हाँ, चलो वो आपको तो चाहिए ना सर। बस इन्फॉर्मर इज वेरी वेरी सिंपल बाबा। आप देखो, आप और जगह जाने का है, एयरपोर्ट जाते हैं, आपको चेन्नई जाने का है, आपको से कौन सा काउंटर में जाऊं, कौन सा गेट में जाऊं, वो बोलते B4। ओके, अब B4 बने तो उधर जहाज, हवाई जहाज मिलती है, देन यू टेक द प्लेन। So that fellow who gave you information that you go to the B4 gate, is he your mentor? Is he नहीं, your इज guide? इन्फॉर्मर। That's all. Don't use big heavy words like mentor and guide and friend. That fellow is not even your friend. You have put a question, where is the B4 gate in the airport? He said, okay, go this way, left and right. You will find the B4 gate. Thank you, he says. Informer. You are asking for moksha, enlightenment. Okay, close your eyes, observe the breathing, then you will get it in your home. So we are informing you, just like that fellow who shows B4 gate in the airport. Nothing more than that. Don't use heavy words. Guru, mentor, guide, दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। मेरे दोस्त हैं सर, मेरे दोस्त हैं, मेरे गाइड भी है, सब है मेरे। फिर वही आप, you come to the same point again. बाबा, I am not बाबा, I am informer. You put a question, कहाँ जाने का है हाँ ठीक आपको? है सर। चेन्नई जाने का है तो B4 में जाइए, मुंबई जाने का है तो B5 में गेट में जाइए, बस उतना ही बात है। If you want health, you do meditation. If you don't want health, go to hell. Who cares? So use the word informer from now onwards. You please translate this into Hindi. सर बोल रहे हैं कि गुरु, मेंटर, गाइड, ये सब आप मुझे मत बोलिए। मैं जस्ट इन्फॉर्मर हूँ। मैं खाली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप अगर अपनी सांसों के साथ रहते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। यू गेट गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग। आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप अपनी सांसों के साथ रहोगे। अब अगर आप एयर फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कौन से गेट पे जाना है, तो आप कहाँ पर जाओगे? इन्फॉर्मेशन डेस्क में ना, जो आपको बताएगा कि हाँ, आपको इस डेस्क में जाना है। तो वो आपका ना फ्रेंड हुआ, ना मेंटर हुआ, ना गाइड हुआ। वो जस्ट ही इज़ एन इन्फॉर्मर। वो खाली आपको इन्फॉर्म करता है कि आप इस गेट में जाइए, तो यू विल गो, आप राइट गेट को अप्रोच करोगे। So I am in the information deck, and all pyramid masters are there along with me in the information deck. They all give information when asked. Okay, when asked, then you say, okay, this gate, this gate. That's all. You buy your ticket. You want to go there. It is your intention to go there, and we are not even helping you. We are informing you what you want. That's all. We are not healers. We are not helpers. We are not guides. We are not mentors. We are not gurus. We are simply information givers. इन्फॉर्मर। Information givers sitting in the inquiry counter. Where do you want to go? What do you want? You want health? Okay, do meditation. You want wealth? Okay, do meditation. You want peace? Do meditation. You want moksha, enlightenment, third eye? You want to see your past lives? Okay, do meditation. You have cancer, you want to get rid of cancer? Okay, do meditation. Whatever your question is, our answer is the same. Our information is the same, because meditation gives everything to everybody. It is the one doorway to all your destinations. Please. हम Again. इंफॉर्मेशन डेस्क में बैठे हैं। सर इज इन द इंफॉर्मेशन डेस्क। वो इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारे जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं, वो सब इंफॉर्मेशन डेस्क में बैठे हैं। वो सब आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप पूछना चाहते हो कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, मुझे फाइनेंशियली अच्छा होना है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो आप अपने सांसों के साथ में रहिए। ये हमारे सारे पिरामिड मास्टर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो अब ये आपकी मर्जी है
कि आपको हेल्थ चाहिए तो ध्यान करिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप मत करिए। इट इज आपका चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। Then many people come back. We are doing meditation, but we are not getting results. Then we inquire, are you a vegetarian? Are you a vegan? Then they say, no. So you are useless. You must become a vegetarian. You must become a vegan. Okay. And then you must do meditation. This is our answer. You can't do any himsa. You can't be any non-violence. So we add vegetarianism, ahimsa, to our information. You cannot eat meat. You cannot eat fish. You cannot eat fowl. No way. And be a good master at meditation. No way. Please. बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे ध्यान से कुछ लाभ नहीं हुआ। हम उससे पूछते हैं आपको क्यों नहीं लाभ हुआ? आप क्या वेजिटेरियन हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, हम वेजिटेरियन नहीं हैं। अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, तो आपको ध्यान से वैसे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप नहीं मीट खा सकते हो, आप किसी जानवर की हत्या करके उसको खा नहीं सकते हो, नहीं अंडा खा सकते हो, नहीं मछली खा सकते हो। हमको उन सब के साथ में रहना है, वो भी धरती के प्राणी हैं। सो वी हैव टू कोएग्जिस्ट विथ नेचर। हम उनके साथ में, एनिमल किंगडम के साथ में हमारे को रहना है। तो हम ध्यान में तभी प्रोग्रेस कर सकेंगे जब हम अहिंसा, वी विल नॉन वायलेंस को अपनाएंगे, तभी हम ध्यान में प्रोग्रेस कर पाएंगे। 3 things are important: non-killing, non-violence, and non-interference with others' affairs. 3 चीज जरूरी है। आप किसी को मार नहीं सकते हो, नॉन वायलेंस एंड Non-interference. नॉन इंटरफेरेंस। आप किसी के लाइफ में दखल नहीं दे सकते हो, आप किसी के भी लाइफ में जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। इट इज एवरीवन्स चॉइस कि उसको क्या करना है। I'll give you an example. We know Raman, Ravan. Ravan was a great meditator. He even got Lord Shiva to him. Yet he was a killer. He was killing everybody. He was violating everybody, and he was interfering with everybody's life in the whole of India. So he had to be killed. If Rama will not kill Ravana, some Karuna will go and kill him. So Ravana was a great meditator. So meditation is not going to help you, but you must be with non-killing, non-violence, and non-interference. This is what we learn from Sri Ramayana ji. Please. हम रामायण से क्या सीखते हैं? रावण जो है वो एक बहुत बड़ा ध्यानी है, वो बहुत ध्यान करता है। उसको भगवान राम ने मार दिया क्योंकि वह सबके लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा था, नॉन वायलेंस, वो किलिंग कर रहा था, सब जानवरों को मारना, सब आदमियों को मारना, ये सब रख रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो ध्यान उसे कुछ हेल्प किया। So along with meditation, ahimsa should be there. You are interfering with their lives. If they ask you, you can give advice, but your goals should not be your children's goals. Every parent should understand that. A parent is not there to guide children. A parent is there to inform children the truth, that's all. As I am informing you when asked. आप Please. पेरेंट हो, आप अपने बच्चों के लाइफ में भी दखल अंदाजी नहीं दे सकते हो। आप अपनी सोच उनके ऊपर नहीं थोप सकते हो कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो। आप वो सब नहीं थोप सकते हो और आप गाइड भी नहीं कर सकते हो। जब तक वो आपसे नहीं पूछे, तब तक आप उनको खाली इन्फॉर्म कर सकते हो। बाकी आप उनकी लाइफ में नहीं देना है। And you cannot give fish or meat or egg to them in your house. If they want, they can go out and eat, but they cannot have in your house. So you should not supply them. That is the point of parenthood. आप अपने बच्चों को घर पर न मीट दे सकते हो, न फिश दे सकते हो, न अंडा दे सकते हो। अगर उनको खाने की इच्छा है तो वो बाहर जाए और खा कर आए, लेकिन घर के अंदर ये तीनों चीज न आना चाहिए, न बनना चाहिए। हर कैसे से मास्टर के घर पर अंडा, माछ, मच्छी, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। My own
family, half of the people have started eating meat. So I stopped going to them. They are not my relations at all. I have stopped going to their house. And see, I won't go to their house, even though their house is by my side, because they are meat eaters. My own brothers, my own sisters, or my own brothers' children. I won't go there. I stopped my connection with them because they are meat eaters. I don't maintain any connection with them because they are not human beings at all. Although we are one family, we are not at a family now. Before I came into meditation, they were my family. But after I came into meditation, they are not my family. They are meat eaters. Nothing to do with me. So I stopped my connection with them. I'm happy, very happy. Please. So even if your children are going out and meet, you don't talk to them. Right, sir. सर की फैमिली में बहुत सारे लोग अब मीट खाने लग गए हैं। सर उनसे अपना कनेक्शन पूरी तरह से तोड़ लिए हैं। जब वो मेडिटेशन में नहीं थे, तब वो उनकी फैमिली थी। वो मीट खाते थे, लेकिन उनकी फैमिली थी। लेकिन जब से वो मेडिटेशन में आ गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि जो मीट खा रहा है, जो ये हिंसा कर रहा है, वो मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो वो ना उनके पास जाते हैं, ना वो उनके पास आते हैं। वो हालांकि उनके घर के बगल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सर उनसे अब कोई कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। My family members are always vegetarians. अहिंसात्मक हैं. अहिंसा परमो धर्मः. Now, himsa parama adharmah. So all those people who are non-violent, non-killing, non-interfering, they are my family members. That is my family. That is my wide family. My family is a very big family. And if within the next 10 years, the whole humanity will become my family. Will be forced to become my family because of coronavirus, because of PSSM masters, and because of digital revolution through which we are speaking to each other. These are the three causes. Coronavirus, digital revolution, and PSSM masters are opening their mouth, giving information, right information. Because of these three, within the next 10 years, everybody will become my family member. सर बोल रहे हैं जो 10 साल के अंदर सारे लोग सर के फैमिली मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो आ रखा है और जो हमारे PSSM मास्टर है और ये जो डिजिटल ध्यान यज्ञ जो हम कर रहे हैं, जिससे हम राइट इंफॉर्मेशन राइट लोगों तक पहुंचाते हैं, हम सारे लोगों को इस माध्यम से सब कुछ बता पाएंगे। डिजिटल ध्यान यज्ञ जो आज चल रहा है और डिजिटल मूव के द्वारा हम सबके साथ में मिल सकेंगे और उनको बता पाएंगे कि हम सबको अहिंसा का मार्ग अपनाना है। See, what is this digital revolution doing? I don't have to go to Orissa to talk to you. I don't have to spend a rupee. I don't have to spend any extra time for you. I am sitting in my home family, having my breakfast, and I will have my lunch here. I'm not moving out of my chair, but I am still talking to you. The information is being passed without any cost. So digital revolution, 0 inputs and 100 outputs. We are not traveling, we are not spending our time, nothing. We are not spending our comforts, stopping our comforts, nothing. But we are informing, information is happening instantly. Otherwise, I have to catch a flight to go to Orissa and go to your house and then talk to you. So this computer revolution, technological revolution, digital revolution, this is helping us so much. Helping in what? Helping in everybody becoming well informed, instantly informed. So once the information is there, then the solution is there. Problem is there, and information is lacking, the problem is not solved. Problem is there, information is available, then it is solution. For all the problems, the solution is meditation. So we are sitting at home because of the digital revolution. And you are also sitting at your home because of coronavirus. Otherwise, you would be somewhere in the streets. Yes. Doing some shopping. Yes, Nilamji, I know you are a good shopper. But now you are sitting at home
So because of Corona, you are sitting at home. I am sitting at home. If I was not sitting at home, you couldn't get me like this. And Corona is there. This revolution, computer revolution is there. Digital revolution is there. And we are all informers. We have got the knowledge of the solution for everything. Solution for everything. So we open our mouth and give the information to you. That's all. We are not mentors. We are not gurus. They are heavily loaded words. I don't like them. No. That is not PSSM. No. We are simple people. Simple informers. We are able to spread across the world because of the digital revolution, computer revolution, and now added to it Corona. Corona has made everybody silent. Yes, sir. Made everybody homebound, not road-bound. Homebound. Now, no other retreats, no other resorts, no other travels. Sit at home, close your eyes and observe your breathing. Do meditation for hours and hours. Earlier, you complained there was no time for you. Now, Corona says, okay, all the time is for you. Yes, sir. Please. कंप्यूटर रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ना मुझे ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना फ्लाइट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही हो और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने घर पर बैठा हूँ। बिकॉज़ ऑफ दिस कोरोना वायरस, वी ऑल आर एट हम सब अपने-अपने घर पर बैठ रहे हैं और हम सब ध्यान करें। सबका प्रॉब्लम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अब हम इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। हर प्रॉब्लम का एक ही इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ ध्यान। आप ध्यान में बैठिए, अब आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ना कोई रिट्रीट में जाना है, ना कोई पार्टी में जाना है, ना शॉपिंग करने जाना है, कहीं नहीं जाना है। आप घर पर बैठिए और देखो जाए। अपने अंदर चेंजेस देखिए कि कोरोना वायरस इतना अच्छा So children are there. Problems are adults are there. Soldiers are there. Farmers are there. It is not a problem. But the solution बनेगा क्योंकि आप अभी अगर नॉन किलिंग कर रहे हो तो आप अपने पहले अभी से कर्मास को डिसॉल्व कर दिए लेकिन अगर आपके साथ में है तो जगन्नाथ you become meditation dissolves the past. Ahimsa purifies the current. Vartaman, your own hell, and you create your own heaven. According to these two things, meditation and ahimsa. हो इससे आप अपने फ्यूचर While killing it is meditation. Sowing the right seed is the with no craft. So the right seed is ahimsa, killing the right information. Because there was no meditation, this is how whole the of earth has become hell. But now, because of PSSM, plus because of meditation and ahimsa, every family is set right within the family. When every family is set right, the whole nation is set right. When every nation is set right, the whole world is set right. Information is important. Right information. What is right information? Do meditation. Close your eyes, observe the breathing, and no killing, no violence, no interference. These are all sacred principles. Non-killing, non-violence. Even a husband cannot rape his own wife.
Parents cannot rule the children in the name of discipline. No. Right information. The children are beautiful people. They are only wanting right information from you. They become great masters by themselves. Thank you very much, Neelam ji. Thank you, sir. Thank you very much for the beautiful session. सबका बधाई हो. Please carry on. Thank you, sir. अभी क्या टाइम हुआ? सर अभी 10 बजा, ठीक 10 बज गया सर. It is. ना देखो फिर. I don't have a watch, but still I know that there is a time. Thank you, sir. एकदम ठीक 10 बजा है सर. डॉट 10 बजा है बिल्कुल. तो अब मैं विराम दूंगा. यहीं बैठा हुआ रहूंगा. आप सबको देखते हुए रहूंगा बाबा मजे में. Thank you, sir, for this beautiful session. I think everyone liked it. All the masters who are watching us, they all liked the session. And now I would like to hand over the next session to Rohini Bhavsinkar. Rohini. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. प्रकृति जी को बहुत बहुत प्रणाम. आज इस सुंदर प्रवचन जो मिला हमें, उसे सबकी जरूर आंखें खुली होंगी. और इस प्रवचन के बाद आई टेक द प्लेजर टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर संगीता नेहरा. फर्स्टली शी इज अ PSSM master from last 10 years, and she is also a MD in Ayush with the Haryana government. She's a spiritual scientist. She's a specialist in herbs, yoga and meditation, nutrition and dietitian. She also works on Panchkarma, that is the healing process of 5 stages, and even in quantum healing. Today, Dr. Sangeeta Nehra will shower her wisdom on the shift of knowledge, wisdom, surrender, and bliss. A journey towards wholeness to emptiness. So may I please invite Dr. Sangeeta Nehra ji. Yes, thank you. Thank you so much. Welcome. नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते. सब बहुत अच्छा लग रहा था. आपने बताया कि कोरोना और पिरामिड मास्टर्स एंड डिजिटल ध्यान योग से पूरा वर्ल्ड अभी मेडिटेशन और वेजिटेरियन होने जा रहा है. तो सेम अभी मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को थैंक्स करती हूँ, और इस डिजिटल ध्यान योग और अवेकन यूथ को सभी को थैंक्स करती हूँ कि एक इतना बड़ा मूवमेंट हमारे सब पिरामिड मास्टर्स के थ्रू पूरी धरती को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है. मैं शुरू करूंगी. जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं एक बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ रही थी, अगर था. ये रिटन बाय मैरियाना, और अगर था इज द अर्थ्स इनर वर्ल्ड. आने वाली जो लाइफ है, हमारी रेस है, वो कैसी होगी. तो उसमें एक लाइन लिखी है, वहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे. तो उसमें लिखा है कि देयर इज विजडम एवरीवेयर, यंग मैन, ही रिस्पॉन्डेड. द मैन हु बिलीव्स हिमसेल्फ वाइज इज स्टूपिड. Stupidity always try to mislead wisdom. But if you are seeking wisdom, you need only look around carefully. The nature is full of wisdom. तो जो nature है वो full of wisdom है. And which surface dwellers are doing their best to destroy. तो तभी ये जो हमारे surface dwellers हैं, जो धरती के ऊपर हैं, वो अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं. और उसी वजह से कोरोना आया, और उसी वजह से हम घर में बैठ के अपनी एक राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज टू विजडम टू सरेंडर टू ब्लिस, ए जर्नी फ्रॉम होलनेस टू एम्प्टीनेस. तो मैं अपनी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इसको शुरू करूंगी. फ्रेंड्स, जब 24 साल का मैंने आयुर्वेदा किया था, तो नॉलेज तो थी. हम एक एजुकेशन में हमारा एक माइंडसेट रहता है
हम उस नॉलेज को गेन करते हैं, और उस नॉलेज को जब हम गेन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक एजुकेशन लेवल पे हम हमारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अभी पूरा वर्ल्ड इम्यूनिटी कैसे एनहेंस होगी, उसको कैसे बूस्ट अप करेंगे। तो इम्यूनिटी के लिए मैं सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के ऊपर फिक्सअप थी, और मैं सोचती थी कि इम्यूनिटी जो बढ़ेगी वो फिजिकल बॉडी के ऊपर ही बढ़ेगी। लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ जैसे ही मेडिटेशन में आई, मुझे पता लगा कि हम तो फिजिकल बॉडी है ही नहीं, वी आर गॉड्स। हम हमारी वाइटल बॉडी भी है, हमारी मेंटल बॉडी भी है, कॉजल बॉडी भी है, सुप्रा कॉजल बॉडी भी है, कॉस्मिक बॉडी भी है, निर्वाणिक बॉडी है। जब तक हम इन नॉलेज से विजडम तक नहीं जाएंगे, जब तक हम नॉलेज से विजडम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि immunity is not only based on physical body, it is based on vital body, based on mental body, based on cosmic body, based on nirvanic body. We have to accept everyone. Immunity का फर्स्ट फॉर्मूला यही है कि हम सबको एक्सेप्ट करें, अलग अलग छोटे छोटे समुदाय में उस बॉडी को ना बांटे, वो स्पेशलाइजेशन ना ले। पत्री सर ने बताया कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, अभी समझ आया नॉलेज और विजडम में बहुत बहुत फर्क है। हम बेसिक एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन अभी स्पिरिचुअल एजुकेशन मिसिंग है, जो हमारे डिजिटल ध्यान योग से, यज्ञ से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन, स्वाध्याय, साजन संगत करना ही है, तभी हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। बिकॉज हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सबसे एक अनकंडीशनल लव, केयर, सपोर्ट, हार्मनी, जॉय, सब चीजें उस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो इम्यूनिटी सिर्फ अकेली एक दवाई खाने से, या एक खाना आज खाया और हम सोचे कि 2 दिन में हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी। या हम आज मेडिसिन खा रहे हैं और सोचे कि इम्यूनिटी बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी है, जो फिजिकल बॉडी है, वो फ्रूट है। पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि ऑल बॉडीज आर द रूट, वहां से रूट से आने के बाद हमारा फ्रूट। तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इम्यूनिटी इज डिपेंड ऑन मेडिटेशन, स्वाध्याय और साजन संगत, जो अभी हम घर में बैठे हुए इस लॉकडाउन पीरियड में हम कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लूंगी, बचपन से ही मैं 24 साल से पहले कबीर को पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कुछ वेदास, गीता, ये सब पढ़ा। लेकिन नॉलेज तो पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन लेती गई, लेकिन उसका विजडम नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, समत्वम योग उच्यते क्या है, त्रिकरण शुद्धि क्या होता है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में आई और पत्री सर का जो ट्रांसलेशन किया गीता का, वो पढ़ने के बाद त्रिकरण शुद्धि जो चैप्टर नंबर 6 है, उसका 13वां श्लोक है, उसको मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया। उससे पहले नॉलेज तो थी, लेकिन विजडम नहीं था, खुद का आत्मज्ञान आया ही नहीं था। तो नॉलेज के साथ साथ हमारा विजडम, हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ स्वाध्याय, बहुत सारे राइट स्पिरिचुअल मास्टर्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकरण शुद्धि में सिर, ऐसे शिरो, काया, ग्रीवा, वाणी, इन तीनों चीजों का, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी वाणी, इन तीनों का शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको दूसरी तरीके से उस नॉलेज को लेते जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, और शायद मैं भी भटक गई थी। और मैं उस रेस में चली गई, उस रेस में जहां पर सोचने लगी कि बस पढ़ाई सब कुछ होता है। और बिल्कुल ठीक है कि जो सोसाइटी है हमारी, वो सोसाइटी हमारी बस इसी के ऊपर बेस्ड है, जो हम कस्टम, हमारी ट्रेडिशंस, और वो एजुकेशन हम लेते लेते हमारा पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो 24 साल तक मेरा भी पूरा माइंड सेट चेंज हो गया, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट आने लगा कि चलो अब शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। जैसे एक सोसाइटल जो पत्री सर बोलते हैं, संघ
बुद्धि, जो समाज से बुद्धि मिलती है, हम उसकी रेस में शामिल हो जाते हैं। तो हमें उस रेस में ना शामिल होकर हमें अपने उस विज़डम को, उस आत्म ज्ञान को आगे लेके आना है। उस नॉलेज के साथ-साथ उस नॉलेज को समझते हुए। फिर तीसरे एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि चक्रास। आयुर्वेदा में भी मैंने पढ़ा कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी कि चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। और मैं बहुत पैशनेट थी, अपने टीचर से भी पूछती थी कि क्या होता है, सर कैसे समझ आएगा? बट किसी ने आंसर नहीं दिया और मैं ढूँढती रही कि मैं किससे पूछूँ? लेकिन 41 ईयर की एज में आने के बाद पत्री सर से मुलाकात हुई और डोर ओपन हो गए अपने आप ही। जैसे सर ने कहा कि अगर ये एक ऐसा डोर है मेडिटेशन जिससे आपकी सारी डायमेंशंस खुल जाती हैं। तो चक्रास को मैं बहुत एक सिंपल कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, तराटक कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिस में लाती रही, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज था, पढ़ती रही, किताब पढ़ती रही, बट एक आत्मज्ञान विज़डम बिल्कुल नहीं आया। तो जैसे-जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, उस विज़डम वो अपने आप आने लगता है। तो हम ये समझें कि जो आज की सोसाइटी है, अगर हम सोसाइटी के 2 पार्ट कर दें, एक सोसाइटी है ए पार्ट और एक सोसाइटी है बी। सोसाइटी में भी उतने ही लोग रहते हैं, बी सोसाइटी में भी उतने ही लोग रहते हैं। ए सोसाइटी के पास भी पैसे हैं, उसके दोनों चीज़ें बराबर हैं। लेकिन जो बी सोसाइटी है, उस बी सोसाइटी के पास मेडिटेशन है। बी सोसाइटी के पास बहुत सारे कांसेप्ट हैं। नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस, 5 फिंगर कांसेप्ट, ये सब फॉर्म हो जाएगी। और हम जो पिरामिड मास्टर्स हैं, हमें अपनी धरती को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। जो सोसाइटी है, उसको देखना है कि जो राइट एजुकेशन है, वो अभी नहीं मिल पा रही है ए सोसाइटी को। जो फिजिकल एजुकेशन है, अभी वो बेस्ड है सिर्फ मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे। उनका जो पूरा फोकस एनर्जी है, वो एनर्जी सिर्फ फोकस्ड है अपनी मेंटल लेवल पे। एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। वो एनर्जी नहीं है जिसकी हम नॉर्मल बात करते हैं। ब्रेथ एनर्जी इज चेंज्ड इनटू यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ना। लेकिन जैसे ही भटकेगा मन, तो हमारी मेंटल एनर्जी उस तरफ जाने लगती है। समटाइम्स इंटेलेक्चुअल एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी का जो फिनोमेना है, वो हमें समझना पड़ेगा। बहुत बार हम ये बोलते हैं, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। तो उसका मतलब क्या है कि हम हमेशा अवेयरनेस में रहें, जागृति में रहें। कॉन्शियसनेस, वी आर गॉड्स, अहम ब्रह्मास्मि। एवरी मोमेंट वी हैव टू फील। तभी हम उस बी सोसाइटी के जो पार्ट है, वो ए सोसाइटी में अब ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अभी धरती डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही है, एक शिफ्ट हो रहा है। सेम उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी शिफ्टिंग हो रही है। हम उस नॉलेज के कुछ पार्ट को जो बचपन में हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने उस सोसाइटी में देखा, उसके बाद हम उसको एक विजडम लेवल पे, आत्मज्ञान पे, स्वाध्याय पे हम उसको समझने लगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी लाइफ का, शादी के बाद एक लैक ऑफ सेल्फ लव, अपने आप से दोस्ती थी नहीं। टोटल फोकस माइंड बॉडी में दूसरे के ऊपर था, एक्सपेक्टेशंस थी। और धीरे धीरे कुछ कुछ साल बढ़ते चले गए और मैं अपना पूरा ट्रू नेचर खो दिया। वही जैसे एक समाज में, जो समाज में जैसे होता है, उस तरीके से मैं फॉलो करने लगी, उन्हीं रिचुअल्स को, उन्हीं ट्रेडिशंस को, उन्हीं कस्टम्स को। लेकिन अंदर से तूफान था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जॉब कर रही हूँ लेकिन खुशी नहीं है, टेम्परेरी हैप्पीनेस थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था। सारा कुछ होते हुए भी इतना सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी मैं। लेकिन ये टाइम पीरियड होते होते आई वाज 41 ईयर, 41 साल बीत गए और उससे पहले बहुत सारी किताबें पढ़ डाली,
कि शायद मुझे कहीं कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन नॉलेज इकट्ठी होती चली गई, नॉलेज इकट्ठी, एजुकेशन, डिग्रियां इकट्ठी होती चली गई, बट उससे कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो हमें अपने लेवल पे हमारा सोल इवोल्यूशन, हमारी सोसाइटी का इवोल्यूशन टोटल बेस्ड ऑन मेडिटेशन। साजन संगत, सब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुने, फॉलो करें। ब्लड के अंदर आना चाहिए वो। अगर वो ब्लड के अंदर नहीं आता तो कुछ फिजिकल पार्ट हमारा अलग हो जाता है, क्योंकि माइंड इतना जल्दी अपने आप को ढका लेता है कि हम सीधा वहां से उस कॉस्मिक लेवल से चुटकी भर में हम यहाँ पहुंच जाते हैं, मी सेंटर्डनेस आ जाता है। तो हमारा अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन, हमारी ब्रेथ एनर्जी से ही आएगा। तो हमें इस नॉलेज के साथ साथ विजडम में आगे चलना है। और अभी बताया कि मैं 41 एज में पत्री सर से मिली, माय बिलवड गुरु। अभी पत्री सर ने कहा वी आर इनफॉर्मर्स, बट ए डीप ग्रेटिट्यूड माय बिलवड गुरु, कि जिन्होंने मेरे रास्ते खोल दिए और मैं एक ऐसे पाथ के ऊपर, सोल पाथ के ऊपर चली गई जहां पर सब अच्छा लगने लगा। लाइफ में एक शिफ्ट आया, चेंज आ गया। लेकिन 41 कोई चेंज नहीं था, बिल्कुल मर के जी रही थी। 41 एज के बाद मुझे मेडिटेशन से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने देखा कि आप आंख बंद करते हैं तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी कैसे एक जगह अलाइन होकर आप एस्ट्रल ट्रेवल सिखाती है, कैसे आप अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं और कैसे उस पास्ट लाइफ से आप सीखते हैं कि द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मिशन ऑफ लाइफ क्या है, और आपका होलनेस, आप क्या है अंदर से। फिजिकल बॉडी, पंचमे कोश तो मैं आयुर्वेदा में भी पढ़ती थी, लेकिन पंचमे कोश कब समझ आया? जब पत्री सर से मिली, मेडिटेशन किया, स्वाध्याय किया। स्वाध्याय की शुरुआत हुई फर्स्ट टाइम, रामराजू सर ने मुझे एक बुक दिया, ये सोल जर्नी, पीटर रिशेलू की लिखी हुई। जानने लगी कि यस, मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर से एक एस्ट्रल बॉडी कैसे ट्रेवल कर सकती है, द सेम मोमेंट। अभी क्वांटम फिजिक्स में पता लगा कि देयर इज नो स्पेस एंड टाइम इफ यू वांट टू कनेक्ट विद एनीवन। उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अभी समझ आने लगा कि हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोल जर्नी से मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ। यू फॉर एवर, लोबसंग रंपा, उन्होंने बताया कि वी आर नॉट जस्ट फिजिकल, we are made up of atoms and molecules and then tissues and everything। कितना डिटेल में उन्होंने बताया है। समझ आया कि अरे वी आर, अगर मेरा एक गुस्सा है तो मेरे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पता है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो तो उधर ही ट्रेवल करेंगे जहां एनर्जी ट्रेवल करती है। समझ आने लगा कि यस, अगर मैं कहीं दुखी होती हूँ तो मेरे कितना मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, मैं दूसरों को कैसे तंग करती हूँ। अगर मैं नहीं बोलती हूँ, नाराज होती हूँ, रिलेशनशिप में बदलाव आ गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एक बार मेरी फैमिली में, जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल सीख रही थी और द मीनिंग ऑफ थर्ड आई और ये सब जान रही थी, तो ऑटोमेटिकली मेरे मेडिटेशन में एक बहुत स्पेशल बात होती है कि ऑटोमेटिकली अंदर से एक मैसेज आता है कि यू गो थ्रू दिस बुक। तो सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वो हंसने लगे कि एक दिन तो ये मर जाएगी, ये छोड़ जाएगी अगर एस्ट्रल ट्रेवल ऐसी सूक्ष्म जरिए छोड़ दिया तो सेम मोमेंट मुझे मेडिटेशन में आया कि यू गो फॉर द क्रिएट योर ओन रियलिटी, रिटन बाय जे नाइट, एंड यू हैव टू गो फॉर द 7th चैप्टर, 7 सील्स। मैं सरप्राइज थी कि मुझे कौन बता रहा है ये, मुझे जब तक कुछ पता नहीं था, स्टार्टिंग था मेरा मेडिटेशन का। जैसे ही मैं ऑफिस में गई, मैंने नेट के ऊपर वो पीडीएफ निकाला, उसका 7th पार्ट पढ़ा और उस पर पता लगा कि हम सिल्वर कोड होता है, एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी में सिल्वर कोड है, हम ऐसे नहीं मर सकते हैं, हम ट्रेवल करते हैं सिर्फ।
great masters, invisible masters are present always. अगर हम सही ट्रू पाथ पे जाना चाहते हैं, ट्रुथ नेवर चेंजेस, पत्री से बोलते हैं, ट्रुथ कभी नहीं बदलता। तो धीरे धीरे लाइफ में स्वाध्याय का, मेडिटेशन का पार्ट बढ़ने लगा। और उसके बाद इजिप्ट गए, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, रिटन बाय डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा पढ़ा। उसके बाद मुझे पता लगा कि आयुर्वेदा की ही ओज क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, शुक्र धातु क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, कुछ कुछ चीजें मुझे उसमें डिटेल पता लगने लगी। उसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, यू आर ए प्लेसिबो, बिकमिंग सुपरनैचुरल एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, रिटन बाय पीटर टॉम्किंस। अभी जब मैं अपना एमडी कर रही थी, तो उस वक्त मुझे पता लगा कि अरे प्लांट्स के अंदर कितना सेंसिटिव, उनका कितना सेंसिटिव नेचर होता है। अगर हम प्लांट्स के पास खड़े होके बोलते हैं तो दे रिसीव द वाइब्रेशंस। मेरी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई। और जो नॉलेज का पार्ट है वो विजडम में तभी आएगा जब हम खुद में प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, चेंजेस आएंगे लाइफ में अपने आप। ओनली किताब पढ़ने से या मेडिटेशन अकेले करने से, मेडिटेशन करने से हमें एक पूरी बॉडी के अंदर हमें सभी बॉडीज का ज्ञान होता है और उसके साथ हमारा अलाइनमेंट होता है। और दूसरे नेचर हमारे चारों तरफ जो नेचर है उसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप बनता है। तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो पत्री सर एडवाइस करते हैं, जो आपके अंदर से आता है, उन बुक्स को, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनको जरूर से जरूर पढ़ना है। ये बुक्स पढ़ते पढ़ते अंदर से कुछ मेडिटेशन लेवल पर भी कुछ कुछ अनुभव हो रहे थे। फिर एक बुक आई, द 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उस बुक के टाइम में जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो उस वक्त मुझे ऑटोमेटिकली एक कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक मदर एंड मेरा एक पास्ट लाइफ सतयुग का मुझे दिखाई दिया। एंड वहां से मुझे गाइडेंस मिली कि यू गो फॉर दिस बुक। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो पर्पस है इज द फेमिनिन एनर्जी, मुझे अभी सोसाइटी में क्या करना है। धीरे धीरे उस चीज को मैं समझने लगी, क्योंकि बहुत फास्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जो माइंड है या जो हमारा मन है, उसके पैटर्न्स है, वो हमेशा हमें खींचते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ जो चीजें हैं जो सोसाइटी की है या जॉब है, ये फैक्टर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन फिर से अवेयरनेस आती है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और जब हम अपने पिरामिड मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो उससे हमें एक बूस्टअप मिलता है कि यस, हम एक सही पाथ पे जा रहे हैं। वो जो ईगो सेंट्रिक हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया है कि जो हमारा ईगो सेल्फ है वो वहीं पे मणिपुर चक्र में ही रहता है। और मणिपुर चक्र में रहते रहते हमारे जो नीचे के 2 चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, हमारा पृथ्वी और ऊपर उसका जल तत्व, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ईगो आया, दोनों डिस्टर्ब हो गए, मन में कुछ कुछ चलने लगता है, ईगो सेल्फ मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर ईगो सेल्फ मजबूत होगा तो तीनों चक्रास ओपन ही नहीं होंगे। हम उस फिजिकल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी कभी मैं जॉब में देखती हूँ कि बहुत झगड़े रहते हैं, कास्ट का झगड़ा, क्रीड का झगड़ा, सेक्स का झगड़ा, रेस का झगड़ा, कितने झगड़े हैं। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि मेरे को समझ है। वो समझ कहाँ से आई? मेडिटेशन से आई, विजडम से आई, और बुक पढ़ने से आई कि नहीं, अभी वो मणिपुर चक्र को शांत, नो ईगो सेल्फ, अभी बहुत बड़ा सेल्फ हमारे पास है, कॉस्मिक सेल्फ है। तो अभी मैं उस कॉस्मिक सेल्फ पे आऊंगी, क्योंकि मैं अभी लास्ट 2 ईयर से मैं उस रियलाइजेशन से निकल रही हूँ
तो विजडम दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें हर रोज उसका प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ अपना एक मैनेजमेंट करिए। और जैसे ए सोसाइटी और बी सोसाइटी, ए सोसाइटी में बहुत समुदाय हैं, अलग अलग मठ बन गए। मैं कभी कभी सोचती थी कि पता नहीं क्यों इतने टीकाकार और ये सब हैं जो अपना लिखते हैं, बट वो राइट राइट नॉलेज, राइट विजडम नहीं है। लेकिन अब समझ आने लगा कि यस, हमें उसमें से क्या लेना है, लेना भी है नहीं लेना है, पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है। ये एक विजडम का पार्ट है जिसमें हम स्वाध्याय और स्वाध्याय के साथ साजन संगत, हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो हमें सिखाते हैं, हमारे ईगो सेल्फ से निकाल के हमें मेन हायर सेल्फ के साथ जोड़ते हैं कि नहीं। अभी सर हमेशा बोलते हैं अपना मुंह जब खोलना है, जब आपके पास कुछ राइट शब्द हो, मुंह नहीं खोलना है। कितना प्यारा है, एंड मैंने वो अपने ऑफिस में लगा के रखा हुआ है। अभी कोई ऑफिस में आता है तो वो सबसे पहले चुप ही हो जाता है कि बोलना है नहीं बोलना है। सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस से कितना बदलाव आता है सोसाइटी में। और ये बुक पढ़ने से बहुत सारी चीजें और जो मेरी लाइफ की थी उसके डोर ओपन हुए, और मैं जो एक प्राइमोर्डियल जो है जिसको मैं बोल नहीं पा रही थी, वो एक अंदर से ऑटोमेटिकली फीलिंग आती चली गई। अब ये 3 चक्रास के बाद जो अभी पिछले 2 सालों का अनुभव है, वो ऑटोमेटिकली जब हमारे पर्सनल मैटर शांत हो जाते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि अभी हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में हम सब फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, तो वी आर सेटिस्फाइड, ओके, वी आर विद द फैमिली मेंबर्स, ऑफिस का काम भी घर से चल रहा है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैंने मेडिटेशन में एक मैसेज देखा, फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉस्मिक मदर, फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सल मदर, टू मदर्स आर डिफरेंट। उन्होंने कहा कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द 3 चक्रास। 3 चक्रास का एंड का मतलब कि हमारे जो फिजिकल अफेयर्स हैं, जिसमें हम इतने ज्यादा इंडल्ज हैं, बिकॉज द अर्थ इज गोइंग इन द 5th डायमेंशन, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे इन 3 चक्रास का काम इतना ही है जितना हमें जरूरत है, नीड है, उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो वी विल डिस्टर्ब अवर, इन तीनों चक्रास को डिस्टर्ब कर देंगे। और अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट चक्र जिसमें इम्यूनिटी भी रहती है। और अनाहत चक्र में इज द डीप साइलेंस। जब आप खुश हैं, एक डीप साइलेंस आता है, और उसमें आपके इन तीनों चक्रास की कोई बात नहीं रहती। नो ईगो, नो इमोशंस एंड नो फिजिकल एक्टिविटी। उसमें आपका कर्म इंद्रिया, आप फिजूल की काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब कोरोना ने स्टॉप कर दिया। नो वे, नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू कम इन अनाहत चक्र, ए डीप साइलेंस। डीप साइलेंस के बाद क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली लास्ट 2 मंथ से मैं मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन कर रही हूँ, कुछ दिन मौन में चली गई, लेकिन 2 सालों से उस डीप साइलेंस का आंसर आने लगा कि ऊपर से कुछ वॉइसेस आने लगी उस साइलेंस में। वो वॉइसेस मेरी नहीं थी, मेरी आवाज नहीं है वो, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, शांत बिल्कुल। कुछ और वॉइसेस आ रही है जो बता रही है मुझे कि साइलेंस में भी कुछ साउंड वाइब्रेशंस होती हैं। ये जब साइलेंस में जब ये वाइब्रेशंस आने लगे, तो हम एक कॉस्मिक सेल्फ बनने लगते हैं। विशुद्धि चक्र, आपकी भाषा में सच्चाई, स्पष्टता, ये सब आने लगती है, शुद्धता आने लगती है। फिर आप उन चीजों के लिए नहीं बोलते जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, ऑटोमेटिकली मौन आ जाता है। नो फिजूल की बातें कुछ होती नहीं। तो जर्नी फ्रॉम नॉलेज टू विजडम टू सरेंडर, अभी मैं उस जर्नी की तरफ जा रही हूँ जहां पर हम सरेंडर करते हैं। 2 साल पहले मुझे ये फील होने लगा कि बहुत बुक्स पढ़ ली,
अभी इस बुक्स के साथ साथ मुझे कुछ शायद और करना चाहिए। और जब हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो कभी कभी उसमें हम जजमेंटल हो जाते हैं, ईगो सेल्फ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और थिंकिंग भी चलती रहती है। और बुक्स के साथ साथ मुझे लगा कि नाउ आई वांट टू सरेंडर माई सेल्फ। मुझे ये सब चीजें सरेंडर करके, और जैसे हम सरेंडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने गुरु के चरणों को छूते हैं या भगवान को छूते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। कितना फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है। सरेंडर इज समथिंग यू आर नाउ इन द ट्रू नेचर। आपका वो ट्रू नेचर आता है, वो आपका आर्कीटाइप, आप कैसे आदर्श हैं, जो मैंने खो दिया था 41 साल से पहले, वो सब धीरे धीरे वापस आने लगा, और एक डीप साइलेंस आ गया। और वो जो डीप साइलेंस है, उससे आपकी वाणी में ऑटोमेटिकली बदलाव आता है, वो रस से भरने लगती है, आपके शब्द बदल जाते हैं। ये जो सरेंडरेंस है, वो एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन है, ग्रेट हैप्पीनेस है, जहां पर आप सिर्फ मुस्कुराते हो कि अच्छा ठीक है, सब जो कर रहे हैं इट्स ओके। कुछ अपनी तरफ से बात नहीं आती, उन तीनों चक्रास की कोई ईगो बोलता नहीं। तो वो एक जो डीप साइलेंस एंड देन विशुद्धि वाणी आती है, तो ये जो वाणी आएगी उसमें ऑटोमेटिकली मधुरता आ जाती है। तो दोस्तों, एक नॉलेज से विजडम एंड सरेंडर, और जो सरेंडरेंस है, द जॉय ऑफ सरेंडरेंस, वंडरफुल चीज है जो मैं रियलाइज करती हूँ। उसमें कहीं कोई बात नहीं आती, उसमें लगता है कि यस, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ साइलेंस। अभी रिसेंटली पत्री सर ने एडवाइस किया कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ, टोटल हाई एनर्जी वाइब्रेशंस आई फेल्ट। और उसमें एक जो वर्ड है, द सेल्फ गवर्नेंस, कि हर एक के पास जाके उनकी तकलीफ सुनना, उनकी बातें करना, और एक पूरा सर्कल क्रिएट करना, पूरी सोसाइटी में सेल्फ गवर्नेंस क्रिएट करना। द सेम word is equal to wholeness, a journey towards wholeness. Wholeness is something, पत्री से कितने दिन तक, कितने पिरामिड मास्टर्स सब डोर टू डोर जाते हैं। द जर्नी टुवर्ड्स होलनेस, आप जहां बैठे हैं वहां पर आपको साइड वाले की भी वाइब्रेशंस फील होती हैं। आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो आपको उसके बारे में पता लग जाता है, एंड यू लिसन अदर्स। लेकिन 24 साल की संगीता मी सेंटर्डनेस पर थी, लेकिन आज एट द एज ऑफ 51, 52, नाउ द होलनेस आई अंडरस्टैंड। और धीरे धीरे जब होलनेस आता है तो हम सब आपस में एक होने लगते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ वननेस। होलनेस, आपको पेड़ की वाइब्रेशंस भी सुने। पेड़ क्या कहना चाहता है? कभी कभी उदास होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो पेड़ अपने आप ही बोलता है कि यू फील द वाइब्रेशन, यू फील द प्रेजेंस, आई एम हियर। दिस इज द स्टोरी ऑफ होलनेस। लेकिन फिर मन खींचता है। ये तो एक प्रैक्टिस है। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी में रोटेट करना लगता है वो एनर्जी। जब मैं ये द्रव्य गुण पढ़ रही थी तो उसमें एक फॉर्मेको डायनेमिक एंड फॉर्मेको काइनेटिक होता है। डायनेमिक इज टू चेंज इंस्टेंटली, और काइनेटिक द एनर्जी ऑफ दैट हर्ब, वो चेंज करती है पूरी बॉडी को। द सेम, द कॉस्मिक एनर्जी, द यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रेथ एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को चेंज कर देती है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ होलनेस। अब होलनेस में हम अपने सराउंडिंग में अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना रिलेशनशिप, अपना फ्रेंड्स, अपना ऑफिशियल,
दायरा, अपने प्लांट्स, अपने एनिमल्स, इन सबको हम एक ही सर्कल में ले लेते हैं, जैसे इम्यूनिटी, पूरा चक्र जो सबको एक लेता है। और उसके बाद फिर आपकी आवाज अपने आप बंद होकर वो ऑटोमेटिकली चैनल होने लगती है, बिकॉज यू आर द कॉस्मिक सेल्फ, यू आर द निर्वाणिक सेल्फ। एंड थैंक यू टू ऑल पिरामिड मास्टर्स कि जो इस मूवमेंट को इतना तेजी से आगे लेके जा रहे हैं, इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर आउट ऑफ इंडिया। और बिल्कुल सत्य है जो सर ने बोला कि अभी आने वाले 10 सालों में सब बदल जाएगा। अभी कोई बिलीव नहीं करता था। ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ऑल माई इन लॉज, नाउ दे आर वॉचिंग, दे आर इन मेडिटेशन, अंडरस्टैंड करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट होलनेस आने के बाद एक स्माइल आती है, एक मुस्कुराहट आती है, एक हैप्पीनेस आती है कि यस, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एंजॉयिंग। एक जॉय आता है, उसको प्राइमोर्डियल जॉय भी बोल सकते हैं, बट एक फीलिंग है कि एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन की। एंड उसके बाद आता है नथिंगनेस, द एम्प्टीनेस। तो बहुत सारे सेशंस जब मैं सुनती हूँ और मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, और एक जो पेन होता है समटाइम्स, इनर चाइल्ड, ऐसे एक फीलिंग आता है इनर चाइल्ड का कि कहीं वो इनर चाइल्ड मेरा दबा हुआ है, कहीं पेन है। तो पेन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर in the emptiness, you dissolve everything, you dissolved all your past life, akashic record, and inner child, your pains and emotions, सब कुछ dissolve हो जाता है। But it needs the daily practice of meditation, daily practice of reading spiritual books, and daily listening the experiences of masters। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमें हमारी जर्नी फ्रॉम टुवर्ड्स होलनेस टू एम्प्टीनेस, टुवर्ड्स होलनेस टू नथिंगनेस, दिस इज द जर्नी जहां पर हम अपनी फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, माइंड बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी में आके ठहर जाते हैं, द होलनेस, एंड देन द निर्वाणिक बॉडी, वी आर नथिंग। कितने मास्टर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, कितने मास्टर्स अलग अलग पूरे ऑल ओवर द कंट्रीज काम कर रहे हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। जो एक ए सोसाइटी है जो अपने रिचुअल्स में लगी हुई है, ए सोसाइटी है जो अपने समुदाय एंड ऑल दीज थिंग्स बनाने लगी हुई है, वी आर नॉट दैट वन, वी हैव टू लिव इन वननेस। यही हमारा लाइफ का पर्पस है, और यही हमारा फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डायमेंशन जाने के लिए यू हैव टू कम एट द सोल लेवल फीलिंग। सोल लेवल फीलिंग इज समथिंग you have to live in truth, the forgiveness, your real archetype, your real quantum energy. You are energy beings. Molecule atoms को किधर ही ले जाएंगे उधर ही चले जाएगा, because it is up to you. And cosmic energy तभी हमारे पास आती है, तभी ये अंदर आती है when we are in nothingness, when we are in emptiness. So हमें अपने लाइफ के साथ साथ पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फिर से तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि हम अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और जब रोशनी होती है तो कोई अंधकार नहीं होता, नो डार्कनेस। लिटिल बिट माइंड
इंटेलेक्ट, सोसाइटल एजुकेशन, ये लिटिल बिट आएंगे, बट हम डिस्टर्ब नहीं होंगे फिर। 1000 सीड्स ऑफ जॉय में एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल उसमें दिया है। क्वेश्चन पूछती है माँ कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत साधारण सा मैं बता रही हूँ, नॉट इन डिटेल। तो वो कहती है कि यू जस्ट स्टैंड इन द स्टॉर्म, आप उस तूफान में खड़े रहिए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए, यू स्टैंड इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म अपने आप निकल जाएगा। द सेम हैपेंड विद अस, कि हम बहुत ही पीसफुली, बहुत ही ग्रेट सेटिस्फेक्शन से हम अपना काम कर रहे हैं। आराम से इस लॉकडाउन पीरियड में हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इन्फॉर्मर बन के एक राइट एजुकेशन, राइट स्पिरिचुअल एजुकेशन सब लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, उड़ीसा मास्टर्स, and thank you all pyramid masters, and thank you all seekers, and thank you to my beloved guru Patri sir. Thank you very much. Wow, what a wonderful session that was. Thank you, Baba. Thank you, thank you. Thank you. Love you, sir. और क्या क्या हो रहा है? On behalf of PSSM and the entire team, I would like to thank Sangeeta ji for gracing us with her important work and sharing her knowledge and wisdom on us. Thanks a lot, Sangeeta ji. Thank you. Now I hand over to Anubhav. Wait, I would like to talk to Sangeeta ji. Yes, sir. Where are you now? सर अभी मैं सिरसा में हूँ, हरियाणा में। आज संडे है और कल फिर से पंचकुला जाऊंगी ऑफिस में, और आयुष की जो गाइडलाइंस आ रही है अभी सर, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं सर। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में हम गाइडलाइंस पहुंचा रहे हैं कि क्या खाना है, कैसे योग करना है, एंड अपना अपना मैसेज जो सब भारत सरकार की गाइडलाइंस है वो दे रहे हैं। और पर्सनली मैं सर जो बुक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ वो पढ़ रही हूँ, एंड सबसे ज्यादा ये कि आई एम इन्वोकिंग द तारा माँ एंड द पार्वती माँ इन माय मेडिटेशन, और उससे मुझे पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो मिल रहा है, एंड हाउ टू बी कूल विद इन अवर सेल्फ। अभी पूरा कितना बदलाव आ रहा है इस धरती पे, उसके लिए हमें और मेहनत करनी है, बिकॉज द मेन मैसेज वाज कि जो 3 चक्रास हैं वो हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं वो बंद हो गए हैं, एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू ओपन द हार्ट चक्रा एंड विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा एंड सहस्रार चक्रा। द मीनिंग इज कि हमें अपना डेली रूटीन का काम करते हुए उसमें उलझना नहीं है। अगर हम उसमें उलझेंगे तो वी लॉस्ट इन 5th डायमेंशन। तो ये सर नॉलेज मिल रही है। और अभी 2 दिन पहले पार्वती माँ का सेशन था आशा गुप्ता मैडम के साथ, तो वहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ वो, और उसमें जो चैनलिंग हुई बहुत अच्छी थी, और उससे काफी कुछ इफेक्ट आया सर, प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे हरियाणा के जो मास्टर्स हैं उनको पर्सनली मैं मैसेज दे रही हूँ, और उनको ये जूम करना ये सब अभी दे आर वीक। अब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उनको पक्का सिखा दूंगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू We are all very happy to listen to you today. थैंक यू सर। It is our great joy to listen to your experience and wisdom. यस सर। Your travel from wholeness to nothingness. यस सर। Yes, Anubhav, proceed. Thank you so much, sir. Pranam to our Guru Shri Patri ji, and thank you, Dr. Sangeeta Nehra, for enlightening us with your wonderful wisdom. Coming up next session is one of the most wonderful, one of the most energetic, and one of my favorites is our youth session, and we have a wonderful community of youths
set up and co-founded by our very beloved Sahil Kandori. He has been my childhood friend and my co-meditator, and I have learned a lot from him. And right now, I would invite Sahil to come forward to take forward this session of Meet the Awakened Youths. And wait, tell more about yourself, your family, your upbringing, how you came into contact with him and PSS him. Please, a few more words. So I, as a child, I have been very curious and very मुझे बहुत जानने की इच्छा थी, सीखने की बहुत इच्छा थी बचपन से। और बचपन से मुझे काफी दिमाग में क्वेश्चंस आते थे कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान हमें मिलते क्यों नहीं है, और हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। बचपन में तीर्थ यात्रा के बारे में सुनते थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और वैष्णो देवी माँ और रामेश्वरम जी, और मैं सोचता था मैं यहाँ कटक में बैठ के भगवान को अगर पाना है तो मुझे इतना दूर जाना क्यों पड़ता है, मुझे इतनी दूर जाने की क्यों जरूरत है। मेरी जिंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो मुझे इतनी दूर जाके उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या कि मेरे इश्यूज को सॉल्व करो, या मेरे को जो अंदर फील हो रहा है उसको समझाइए, उसको बताइए कि क्यों फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। बचपन से मुझे ये सारी चीजों की बहुत उत्सुकता थी जानने की। फिर दोस्तों से भी मैं जब बात करता था तो मैं बोलता था कि यार जिंदगी से मैं बोर हो गया हूँ, जिंदगी में क्या हम लोग यही करेंगे कि सुबह उठो, खाओ पियो, स्कूल जाओ, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर जब बड़े होंगे तो काम करो। सेम रूटीन से मैं बोर हो चुका था। एंड मैं सरप्राइज था कि एज अ चाइल्ड, मैं शायद स्टैंडर्ड 3 या 4 में था जब मुझे ये सब क्वेश्चंस आते थे, कि एज अ चाइल्ड मैं सरप्राइज था कि मुझे ये सब क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, मैं लाइफ से बोर क्यों हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चीज। लेकिन बचपन में ये सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे कोई कहीं से सैटिस्फैक्टरी आंसर मिले नहीं थे, और मैं भी काफी थोड़ा डरा हुआ था कि किससे पूछूं ये क्वेश्चन और कौन मेरे सवालों का जवाब देगा। तो बचपन में तो ये हिम्मत नहीं हुई कि एक्सप्लोर करूं ये चीज। जब बड़ा हुआ तो जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मुझे अपने आप के अंदर से ये एक तो मैसेज आया कि अनुभव, अभी तुम्हें ही खोजना पड़ेगा आंसर्स, यू ओनली हैव टू फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड नो वन इज गोइंग टू। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे वो वर्कशॉप करना है, और पापा ने भी थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि मैं जाके और वो वर्कशॉप अटेंड करूँ। वर्कशॉप करके डॉक्टर न्यूटन ने मुझे एक तो 40 डेज का मेडिटेशन का चैलेंज दिया कि आप 40 डेज 40 मिनट्स तक एवरी डे कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करो, और उसके बाद आप मेरे को मेल लिखना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। तो मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया, एक संकल्प ले लिया कि 40 डेज 40 मिनट्स तो कुछ भी हो जाए, मैं 40 मिनट्स के लिए तो मेडिटेशन करूंगा ही करूंगा, एटलीस्ट 40 डेज के लिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जब 40 दिन पूरे हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो चीज़ है जो कि मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, जो कि जिंदगी का पाथ जो है, हमारी जो जीवन का जो रास्ता है वो बता सकता है। तो मेडिटेशन मैंने शुरू किया था 2016 में, और उस दिन से लेके आज का दिन है मेडिटेशन करना मैंने बंद नहीं किया है। और पत्री जी से जब मिला तो मतलब मुझे पता चला कि डॉक्टर न्यूटन के जो गुरु हैं वो हैं हमारे बिलवेड श्री पत्री जी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ वन मैन। मतलब एक पत्री जी ने दुनिया भर में जो मेडिटेशन का जो मैसेज है गए हैं, उनमें से अभी फल निकल रहे हैं, और सब उस फल का मजा ले रहे हैं। तो हम भी मजा ले रहे हैं, और हम भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मेडिटेशन, अपने ध्यान की जो स्टोरी है, जो जर्नी है, उसका मैसेज लोगों को फैलाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोग भी खुद अपने जिंदगी में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता अपने में पैदा कर सकें। और जैसे कि सर आपने आज बताया कि कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर गाइड नहीं है, बस इन्फॉर्मर है। और सर ये चीज़ बहुत 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 छू गई है मेरे को
And it is, sir, it is such a humbling thing to say that I am not your guru, I am just an informer. This is like an epitome of humbleness, sir. And I am deeply, deeply grateful that I am born and I am alive in a time when you are here to give this message to us live. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Baba. Aage badho. Now I would like to invite Sahil Kandoi to please take over the session and invite all the awakened youths to share their experience. Sahil, please. Namaskar, everybody. A wonderful, wonderful morning to everyone. Thank you, Patriji. Thank you, Anubhav, for sharing your beautiful experience. I'm so happy that you also shared your experience. And very warm welcome to Patriji and all of us, all the people who are here for this amazing DDY session. And it's a great pleasure to host it and do it in this beautiful way. So I'm Sahil Kandoi. I have been in meditation for the past more than 10 years now. And in this process, with Patriji, we've formed a youth organization called as Awakened Youths, and it is guided by the 18 principles given by Patriji. It is the core essence of our information of our basic software is the 18 principles. So it's a youth collective where we've decided, it's simply PSSM in a more youth packaging, and that is why, because we thought that we need to reach out to all the youngsters, because meditation is so important. Because in my life, मेरे जिंदगी में ध्यान ने इतनी परिवर्तन लाई, तो मैंने कहा ये तो हर जगह तक पहुंचना चाहिए, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए. जब PSSM से मैं नहीं भी जुड़ा हुआ था, तब भी जब मैं ध्यान करना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, तो मैं सबको स्पिरिचुअल रियलिटी जो वीडियो है दिखाने लगता था कि आप वो वीडियो देखिए, कितनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं उसमें, कितने अच्छे से समझाया गया है कि ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पिरामिड की क्या ऊर्जा है. And then later I connected with PSSM, and then I realized that this PSSM is spreading the exact truth of meditation, of pyramid energy, of spirituality, of the truth, of the real truth, which is meditation. तो अभी at this point of time इतने सारे organizations हैं, लेकिन ध्यान का जो मूल है, सब बहुत बातें करते हैं, बहुत प्रचार होता है, बहुत wisdom होता है, but the real wisdom that resides in the beauty of meditation. And Patriji is the person who जो उससे ज़्यादा emphasize किसी ने इसको नहीं किया है, क्योंकि he has made sure that everybody knows that if you do everything else, but if you don't meditate, you're not going to get the result. आपको result नहीं मिलेगा अगर आप ध्यान नहीं करोगे. तो ध्यान is the mold. So that is why we formed this beautiful organization, and we have a lot of masters, young masters who awakened in this journey. जो ध्यान करके उनको फायदा हुआ है, उनको लाभ हुआ है, who've gained beautiful essence. And we formed a small sangha, which through which we share each other, we learn from each other, we learn experiences exactly how it is happening here. So we also believe that it's about experiencing oneness. हम सब एक होके एक दूसरे से सीख के कुछ शेयर करें दुनिया को, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब में कुछ यूनिक है. आप सब में जितने भी मास्टर्स हैं, आप सब में कुछ यूनिक है. हम सब आम आदमी हैं, लेकिन हम सब इंडिविजुअली कुछ यूनिक है. हमारा एक रंग है, हमारा एक तरंग है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है. उस तरंग को पहचानना ध्यान के माध्यम से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आप किसी को पूछ नहीं सकते कि मैं कौन हूं. ये प्रश्न गूगल भी आंसर नहीं कर सकता. ये प्रश्न सिर्फ आप ही आंसर कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको अंदर ही मिलेगा. तो ध्यान वो मार्ग है जिससे आप ये पूछ सकते हैं कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या यूनिकनेस है, व्हाट इज योर अबंडेंस. फाइंड दैट अबंडेंस, फाइंड दैट पैशन, find what you're made to do in this life, and then go out and do it. And not just do it alone, do it together. साथ में करें, एक संघ में करें, लोगों के साथ करें, एक community में करें. Expressing oneness. We want to express oneness in our action. We want to express togetherness in our action. So that is a little brief about Awakened Youth. You're going to meet all amazing people in the community now. We have a lineup of Awakened Youth from all over the world who are going to be sharing their experience in 5 minutes. So stick around to meet all of them. And before I shift to them, I will just share my experience also, that Patri sir had told me some time ago in the period of Corona lockdown that Swamiji, aap 7 days mon mein jaiye, you will gain a lot. And I did practice that 7-day silence, and it was a very transforming experience.
but the experience was very it's something that I did not anticipate. जब मैं पत्री साहब ने जब मैं कहा कि भाई आप 7 दिन ध्यान में जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है 7 दिन मौन में जाओ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, 7 दिन मौन में जाएंगे एंड बहुत सारे मास्टर से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे विजन्स दिखेंगे और बहुत कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज वेरी डिफरेंट। व्हाट हैपेंड वाज जब मैं ध्यान में बैठा तो छठा दिन, 5 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। छठा दिन ध्यान में इतनी जोर से मुझे हार्ट में पेन हुई एंड immediately ऐसा लगा कि there is a flower that is blossoming in my heart, and then my heart told me, the message was that, you know, it doesn't matter how many masters or how many spiritual beings we connect with, or you know, how many visions we have, how much abilities we possess. It is not, doesn't matter. What matters is that you should have compassion in your heart. You should have love in your heart for everybody. जिस तरीके से हम अपने अपने हृदय को हर इंसान के लिए खोल सके, वो ज्यादा जरूरी है। उसका वो आध्यात्मिकता है, ना कि आप कुछ बहुत एबिलिटीज लिया है अपने लाइफ में, बहुत कुछ देख ले। अब इफ यू सी फॉर पत्री जी, ही इज सच अ सिंपल पर्सन, ही इज सच अ सिंपल मास्टर, जो इतने अच्छे से इतने लोगों को ध्यान सिखा दिए, एज एन इन्फॉर्मर, एज ही सेज, एज अ फ्रेंड, as a father, as every element that he is, you know, and all he does is share from his heart, share from compassion. पति सर बोलते हैं कि करुणा is what matters. Karuna is compassion for every one of them. So I would like to share that everybody should open their hearts to everybody. You know, किसी को भी हम अपना नहीं बनाए, सबको अपना बनाए. Let us open our hearts to everybody in this world. Let us think about everybody, because the moment I make a boundary of अपनापन कि भाई ये खाली अपने, हम दूसरों को पराया बना रहे हैं, तो किसी को पराया ना बनाए. Let us open our hearts to everybody. And अगर हमें आध्यात्मिक में ग्रो करना है, तो हम सिर्फ अपने आप को एक चीज पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मेरा करुणा खत्म हो रहा है, कहाँ पर मेरा करुणा रुक रहा है, क्यों मेरा करुणा रुक रहा है, why is my love not flowing, क्यों मैं इसको अपना नहीं बना पा रहा हूँ. वो एक ब्लॉकेज है, उसी ब्लॉकेज को आपको ब्रेक करना है. एंड यू हैव टू इंक्लूड एवरीबॉडी इनटू योर फोरम. इट डजंट मैटर दे मेडिटेट और दे डू नॉट मेडिटेट. इवन इफ दे डोंट, इफ यू हैव कंपैशन फॉर देम, दे विल लर्न मेडिटेशन. यू कांट जज देम, यू डोंट हैव टू जज देम. लव देम and they will come into meditation. So my message is love, that all that matters in this world is love, is compassion, and out of compassion you will naturally go out and serve people. You will naturally move to people, and आपको अपने आप अंदर से मन करेगा कि आप सबको ध्यान सिखाए, क्योंकि ध्यान से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है जो आप इंसान को दे सकते हो. तो हर इंसान को ध्यान सिखाने का जो तड़प है वो प्यार से ही जन्मता है और आपके अंदर से जन्मता है. सो लेट योर हार्ट ब्लॉसम. ध्यान करिए, अपने इस प्रेम को उजागर करिए, फिर आप अपने आप सबको ध्यान सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इससे बढ़िया कोई गिफ्ट ही नहीं है इस पृथ्वी में इस इंसानों को देने के लिए. So let us all spread love and spread meditation. So with that, I conclude my message. And now I would like to invite a beautiful array of people from all over the world. So many awakened youths from everywhere, from Switzerland, from Vietnam, from Qatar, Bhubaneswar, everywhere. From everybody they're coming, and let's look at each one of them and see how these beautiful people have कैसे इन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जागृत किया, and the change in their life they witnessed after meditation came into their life. So now I would like you to meet Sriram Chakravarti as the next AY to share his experience. Thank you so much. Hello all. First of all, I'm so happy to be on this forum and share the stage with so many other AYs. It's a beautiful time. And as Sahil said, and as Patriji said, it's a time for a lot of karuna. It's a time for a lot of love. And that has been my journey as well, because I was caught up in the world, you know, the material world for a long time. And finally, the world decided that I need to wake up. So what did the world do? It made me fall sick. So I was unwell for about 6 years. Doctors could not do anything. Every year they used to give me a new phenomena, a new condition, new medication. But finally, meditation and going inwards was the only way I was able to recover from this problem that nobody else was able to solve. And at that point,
when I was able to heal myself, when I was able to come out of my whole sickness, I also realized what my purpose in this world was. I was able to understand that how I can help more people, support more people to understand that they need to go inwards first, need to meditate. So to me, being spiritual means when you go beyond yourself, you go beyond your body, go beyond your senses. And the best way to go beyond your body and your senses is by meditating. It has been my experience that meditation takes me to some beautiful places, to beautiful new realities that is beyond me. So when I started exploring this, so when I started exploring how that being humble, being small is actually better than having a big bloated ego, it was a wonderful experience of supporting more people to understand that they can be more. They can be more, and there can be more as well to them. So I believe that in this time that there are more people who come into the state that they are beyond their egos, beyond their materials, then they will automatically gravitate towards love and togetherness. So I would like it that it is the need of this hour, it is the need of today that we meditate together. And through the meditation, we will not only seek out each other, we will also seek our own togetherness, and we will grow love together. So with this, I would like to invite the next AY. Please meet Inaya Gupta. Hello, sir. Namaste. Hello, everyone. I am Anaya Gupta. Thank you, Shriram, for sharing your experiences. I am from Mumbai. I came into meditation first through my mother. My mother, Rinku Gupta, she taught me how to meditate. So I've been on this journey since 2011. And I started meditating. I took up those 40 days of meditation. And then I heard about this GCSS. Everyone told me about this big event called GCSS. And I attended that. That was my first PMC event. And then PSSM. And then I went there. I met so many youth, so many youngsters coming together, everyone, like the entire PSSM, everyone came together for such a big event. It was so good. It was so overwhelming. I met Sahil, I met Mahesh, I met Shriram. They helped me a lot. And recently, so what happened is, while after a couple of months, I started going into other healing modalities. A lot. I used to do my anapanasati, but also at the same time, I thought, I want to try my past life, inner child. So I started trying all that, but I realized that I could never hold on to anything. The only thing which stuck with me was anapanasati, which I would practice regularly. And then just recently, just a week or 2 weeks ago, it just happened that I heard a talk about another healing session. And then from inside my inner voice, it just spoke to me saying, you don't need any of this. It just said that you have what you need, what you require. So it was so beautiful. It was so beautiful that I realized you just need yourself. You just need to be with your breath. You don't need anything else. Everything will get healed inside you. Everything. You can heal all your chakras. You can heal all that you want just by being with your breath. Breath is everything. And then yesterday, while I was thinking about this event today, and um,
when I sat into meditation, and when I came out of meditation, suddenly it just the message just came to me while I was, thinking about my higher self when I came, and it just came to me suddenly that all our higher selves are one. Like being told that all is one. Yes, I knew it, but realizing it just happened yesterday, and it was such a beautiful realization that all are one. We all are connected to one source. So believe in yourself and just be with your breath. Thank you. And now I would like you to meet Manisha Agarwal. Hello everyone, I'm Manisha Agarwal and I have been member of Awakened Youth from last 2.5 years, and my journey has been really very beautiful. इतना time ध्यान करने के बाद I got realized that I have become much more aware with myself. I have started understanding myself in a much more better way. ध्यान स्टार्टिंग में wasn't easy for me because मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती थी स्टार्टिंग में. Then I took the 40 days challenge of sitting every day, and with that challenge I made it as a habit of sitting every day for at least half an hour. And from that I did it every day since then. So I realized that how with whomever I talk, whatever I do, I feel that I have become much more aware with myself. And इसी तरह से जो भी मैं सोचती हूँ, I keep checking my thoughts also. Whatever I think, if I check that whether I'm getting more influence towards negative thoughts, एंड उसी टाइम पे आई स्टॉप माई सेल्फ एंड अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हूँ कि ना, सो दैट आई डोंट ओवर थिंक ऑन दो सिचुएशंस एंड आई डोंट थिंक नेगेटिव. So this is how awareness has helped me. Through this, I also realized that how acceptance is so important, how it is the key to everything. Because if I won't accept the things, the situations, I will not be able to release from it. I realized that I need to accept the things with whatever is coming into my path so that I can no longer hold it on to. एंड अगर एक्सेप्ट कर लूँगी तो उसी तरह से मैं रिलीज़ हो जाऊँगी उस चीज़ से मैं जान पाऊँगी कि ना मैं क्या चीज़ में गलत थी. एंड फ्रॉम दैट आई रियलाइज़ दैट वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ. So this is how acceptance helps me. And if we accept the things without any judgment, then it becomes more easy, because where you bring judgment, there you cannot accept it easily. So one more thing which I realized through meditation is self love. How loving yourself completely brings you beautifully start sharing that love, joy, happiness with everyone among yourself, everyone around you. Because if you have accepted yourself truly, then you can love yourself also truly. And once you start loving yourself truly, you know how beautifully you can spread that thing, that you can express that love with everyone around you. So be with more awareness, accept without judgment, and love unconditionally. Thank you so much, and thank you so much, Awakened Youths, which given me this platform, this opportunity to share my experience of all this meditation. And now I would like you to meet the AY Hiraktong to continue this session. Thank you. Hello, I'm Hirak and I'm from Cuttack. I have been meditating since 2007 and the journey has been amazing since there on. Life has been the same as it is to all of us, throwing its challenges and surprises. But all that has changed after meditating is it has changed within me. Since I have been meditating, I have
the life which I used to live, it has changed completely. And I have realized to value the journey and to live by the moment. So meditation has made me strong. It has made me strong as iron and soft as cotton. So we have to. It has made me realize that we are more than this body. We are above this body, and it's been a really amazing journey. And I'm really very happy to be sharing in this platform, and I'd like to meet our next AY, Geeta. Thank you. Namaste everyone. I'm Geeta Manahalli. First of all, I would really love to thank Patri sir, uh, for what I am today. It's all because of you. Because from my childhood, I have observed myself that I was not like others. Like I was having so many questions, like why I'm getting the kind of questions that others are not getting. So the journey was going like this. I was kind of an isolated person from family or like friends. So it was in 2012. So I there was a program, Sangeeta Dhyana Mahayajnam, that was happening in Davangere, Karnataka. So I was studying engineering that time. So I just went there. To just check. There was some beautiful music was playing. I just went there and started listening to the experiences. This is what is the beauty of PSSM, I feel. Patricia says meditation, reading books, and sharing experiences. So when you listen to sharing experiences of others, you kind of relate to others, and I that's what happened in me also. Like I just started feeling there was a lady sharing her experiences about her emotional ups and downs and how she started healing those. And I felt so interested. And we were around 11 friends went there. It was happening in a school ground. Every one of them left, but I was the only one who was sitting there. And soon after, that girl got out of the stage. I went to her, I spoke to her. I just asked what it is, like what are you doing, like you said like you're doing some meditation, so can you please teach me about it. And she was so kind, she was so compassionate. I don't even remember her name now, so she just invited me to her home the next day. So she taught me meditation. She gave me some books about thoughts and a power of subconscious mind. I started reading it. And she even took me to Bangalore Pyramid Valley, and I felt like it is so heavenly. And that's when I started reading more books, which is one of the three important things that happen in PSSM. And I started reading more books, but I never meditated very regularly. And things were good, like because of reading books, I started having a positive kind of mindset. So with that, I used to manifest things. But then uh, the kind of real transformation started happening in me when I started facing my own inner, my own dark side. I started feeling like, fears, insecurities in me, my own inauthenticities. I didn't know what was like, what was like triggering me. Somehow I felt, okay, I have a tool with me, so let me start meditating now. So the more I meditated, the more I started understanding what is happening in me. I felt so, it was so hopeful. Like, without meditation, I don't think like what my life would have been. Because meditation gives you that strong awareness, like what is happening in you. And, as I said, I was reading a lot of books. And so because of my knowledge I have received with those books, I have understood, okay, I have read about this, I have read about these and these things, how to heal myself and stuff.
So I increased, duration of my meditation, and things were all good. But still, life always throws challenges at you, and it's not like life is not a stagnant thing. It is a variation. So there are so many unconscious behavioral patterns in you about which you don't know, because you live in a surface level. But the more you meditate, the more you meet yourself. This is the beauty of meditation. I feel like uh, many of us go through this, like, even today, like, children are so stressed out because of school, homework. There are so many things, not only children, adults, elderly. Each category has their own challenges. I feel gone were those days, like, wherein meditation is only for 70 plus people. But then I feel like meditation is for everyone. Meditation is not a option. Meditation is a need. Because I have went through that. I can see myself now, like, life before meditation, life after meditation. I know how I was, like, I was living with fears, insecurities. I didn't know what was happening within me. So only meditation, and only because of the awareness I achieved through the meditation, I would, I could able to sense, oh, okay, this is what is the thing. So then I knew, like, I was so blessed, and I started feeling so, I started developing lots of qualities. That feeling of gratitude, the kind of uh, the kind of experience, the feeling of gratitude, and the feeling of that peaceful mind, and that feeling that you get after meditation is that can be experienced only by the person who meditates. So I feel, so meditation there is no substitution for meditation. That is first point. And and we have to read a lot of books, and that also gives, uh, I mean, reading books, like, that gave me a lot of clarity about my own self. Like, I was like, I was getting a lot of awareness, and a lot of, how do I say, um, like, the kind of phase I was going through, I meditate, and then I used to get so strong intuition that I should read this book now. So I started reading that book, and again I meditate, and then I get another strong level of intuition that was developing in me, that guides me from within. So journey is so beautiful. At the same time, uh, it's like, like, it's amazing. It's amazing. I'm so overwhelmed. uh, Everyone should meditate. Everyone should experience this joy. And now I would like to invite Ayushi. Thank you. Hi everyone, this is Ayushi, and I started meditating before 10 months, and today I turned 21, and I think this is the best thing that has happened with me in my 20 years of lifespan. And it actually came to me when I needed it the most. Like, as a teenager, I have faced irritation, stress, anxiety, but the most important thing happened during meditation was I started exploring self love. And that was the starting point. Like, when I started exploring self love, I started to realize that how important it is. I started to embrace my flaws, my emotions, and everything else. I started to be more aware, and I started to observe my emotion, my thoughts, my actions. It's like I'm watching my own movie. And I used to read books before also, but now when I'm reading it after doing meditation, I'm able to get everything. Like, when I'm reading a sentence and I'm able to accept it, and I'm like, oh, I have learned this thing while meditating. Like, Sahil Bhaiya has told us this thing, and I already know it. So it's
it has been an amazing journey so far, and I have been to places after doing meditation, it's like I'm going with the flow. Like destiny takes me to places and destiny takes me out of places. And now also, like, I have a lot of things to do, like work on my emotions and all. Now also, by mistakenly, when I judge someone, like I hear a voice saying to me that, oh shit, Ayushi, you are judging him or her. And then I'm like, oh, okay, I need to work on that. And that's all I would say. Thank you so much. And now I would like you to meet the next AY, Snehadi. Namaste, everyone. Proceed. Yes. Namaste, everyone. My journey into meditation started in 2017 under guidance of Mother India when I was going through really tough times of my life. But since then, when I got into meditation, my life has changed completely. To be precise, like 360-degree change has come. And all of it has come through meditation. Like I feel gratitude for those tough times which introduced me into this. And since then, the journey to this self-exploration and understanding who I am as a person has started. And meditation for me is being what I am in the most true sense. The answers that I was seeking outside, those reside within me, and all that was required was to connect to my own breath. Meditation has helped me see things clearly and overcome my fears. This very moment of sharing this experience with everyone around is the very proof of it. I have been an introvert, a very shy person, but I was able to overcome this fear all through meditation. There's this particular incident I would like to share with you all. Like we all are searching peace within ourselves. And when we are at peace with our breath, we ask our inner self, like, what is our soul's purpose? And the answer is not very clear. But for me, it happened that 2 days back, I was able to connect with our beloved Patri sir in a session. And I was able to ask him this question, like, sir, how do I understand my soul's purpose? And in very simple words, sir explained that whatever you are doing currently in your life, just go with the flow and be and try to understand, like, what makes you happy. Whatever you are doing, the thing that makes you most happy is your soul's purpose. Just be observant, look forward to it, and you will have all the answers. So friends, keep meditating, be good, do good. And this is what meditation teaches us. It's not our thoughts that have to control us. We need to stop letting our thoughts control us. So friends, keep meditating, be happy, be good, be with yourself, understand yourself. That's all I want to say. Thank you. Thank you, sir, for like introducing meditation to everyone, every soul on this earth. And we express our deep gratitude for this. And now I would like you all to meet our next AY, Pooja. Hello everyone, I am Bhavya. I have been a member of Awaken Youths since last 2.5 years. Well, my journey has been a lot of learning one. Well, 3 words that I would say they summarize my learning.
forgiveness, fearlessness, and love. Forgiveness, as in, why you think that we think we need to forgive others for their peace, for their well-being. But no, I realized through meditation when I went that I need to forgive others for myself, for my peace. And that's how I changed from man. How do you know that what the change do you need in? That is how what meditation taught me. And the second one, fearlessness. Well, I fear people. More than swords, I fear people because people can say anything. So, how did I overcome this fear? Through meditation. That is how I'm expressing today in front of you all, and openly I'm expressing my views. And the third one, love. Well, it was actually the most important, and it took almost 2 years, 2.5 years to realize me this, that I had not only to love myself, to love someone, like throughout the life, I love him or I love her. No, I have to love everyone because love is the essence of life. And I'm very thankful to the awakened masters, and I myself thank to help me this recognize this. And with this, I would like to invite our next awakened youth, Nikita Jain. Thank you. Hello everyone, I am Nikita and I have been in the spiritual path for last 4 years. My guru once said me about these lines, Jaha sthit saha pragya, which means stillness is necessary for our consciousness and for gaining wisdom, as consciousness is more vital than our knowledge. Meditation has changed my life. I was a very negative person. I was a huge introvert. It helped me to connect with myself and realize what I really want out of my life. It helped me to slow down and breathe as I realized life is very short. It helped me in self transformation. Each and every day, I'm knowing myself a little more and making myself more positive and trying to be more perfect. Now I have learned the art of attachment from detachment and detachment from attachment. Now, gradually, I have started observing things and realizing things in a better way. Now, I'm able to control my anger and I have become a good listener, which is very much necessary and is the essence of life. Meditation is the best solution to reduce the stress and strain. There is a great sense of awareness in me, and I'm developing my inner sense. The attachment of my body with my soul has become more strong. Before, I had just learned to adjust, but after meditation, I have started to learn how to adjust and accept. Meditation is helping me to keep myself in contact with the Supreme Power. Lastly, I would like to say, Jo Khyamam Baha Yamaham, which means God assured us that if we meditate, then He will always be with us, guiding us and saving us from all the bad and evil. Thank you for giving me a chance to speak about my experiences regarding meditation. Thank you. And now I would like to meet our next AY, Lokesh Bhaiya. हेलो एवरीवन, नमस्कार। पत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी पिरामिड मास्टर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, 2 साल हो गए हैं मुझे मेडिटेशन में आए हुए। और मेरा एक दोस्त शशांक ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया था। और मेरा मेडिटेशन में आने का एक ही रीज़न था, वो था क्यूरियोसिटी। मुझे जानना था कि ये जो एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं और ये जो लाइट्स और कलर्स दिखते हैं लोगों को, क्या वो सच है या नहीं। सो मैंने उसके बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, परंतु कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक भी मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं घटा, ना मुझे कभी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, ना कभी कुछ लाइट्स और कलर्स दिखे। परंतु एक दिन मुझे ध्यान में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ
जिससे मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए और मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि लाइट्स और कलर्स दिखना मेडिटेशन में कोई जरूरी नहीं है, आपको रियलाइजेशन अंदर से होना जरूरी है। अगर जहाँ तक गेम्स का सवाल है, अगर हम मेडिटेशन से मिलने वाली चीजों की अगर एक सूची बनाएं तो ये सूची नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मेडिटेशन एक सागर के समान है और हम उसके बूंद के बराबर की नॉलेज के बारे में जानते हैं। सो अगर मैं मेरे रियलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मुझे मेडिटेशन की जो शॉर्ट लिव जर्नी में मुझे 2 की रियलाइजेशन हुए हैं। एक हुआ है कि सरेंडर, कि हमें लाइफ को सरेंडर करना चाहिए। लाइफ जो कर रहा है हमारे लिए वो हमारे भले के लिए कर रहा है। ये जो लाइफ हमारे लिए कर रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है और हमें लाइफ हर समय कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और हमें उतना अवेयर रहना है कि हमें जानना है कि लाइफ हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा चीज है अवेयरनेस। कभी कभी बीच में एक ऐसा समय आया था जिसमें मैं हर दिन मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था, रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। सो उस समय मुझे लाइफ एक चीज अवेयरनेस ने मुझे ये चीज सिखाया कि without doing meditation every day, how can we be meditative all the time by being aware? हम अवेयर रह के भी मेडिटेटिव रह सकते हैं। अवेयरनेस से हमें ये पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। सो मेडिटेशन से हमें ये सब कुछ रियलाइजेशन मुझे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यूथ मेडिटेशन में जुड़े, क्योंकि हम यूथ को सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। बिकॉज हम सबसे ज्यादा एनर्जीज यूज करते हैं अपने लाइफ डे टू डे एक्टिविटीज में। सो ये कॉन्सेप्ट जो लोगों के मन में है कि ये मेडिटेशन सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए है, ये पूरे की पूरी भूल है, जो मैंने खुद रियलाइज की है, क्योंकि मेरा भी ऐसा एक थिंकिंग था और मैंने धीरे धीरे अपने थिंकिंग को बदला और अब मेरे को ये रियलाइज होने लग गया कि हम यंग एज लोगों को ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। सो यही बोलते हुए मैं मेरा टॉक समाप्त करता हूँ और नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट आवर नेक्स्ट एवाई ऋषभ। थैंक यू। Hello everyone, my name is Rishabh Agrawal and I have been practicing meditation since 1 year approximately, and I have started this feeling changes in various aspects of my life from past few months. The major change I want to share is about my immune system, which was very weak because I suffered a minor asthma attack 7 years back, which damaged my immune system and I became prone to various illness and allergies and diseases. Cold and fever due to climatic change were very frequent, and but now it's because of meditation, it is repairing this damage, and I can feel that climatic change has almost no effect on my immune system, and I can feel it is healing from me from the inside. Allergies are also been reduced, and meditation also helped me with my emotional imbalance as I was very spontaneous and just reacting to the situations. For example, getting sad, depressed, or getting frustrated because of the adverse situation around me. So, meditation helped me to keep myself grounded and stay calm in these situations, and not only balancing my emotions but also releasing it from my inside, the buried emotion which I kept it from the past, which were harming me from the inside, and I can feel that it is clearing myself from the inside now. So in short, I would say meditation has become my friend and who balance my ups and downs. So I would like uh, जिसको भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना है वो मेडिटेशन करना पड़ेगा। सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन इफ यू डू द मेडिटेशन यू फील द पावर ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। So now I want you to meet AY Peter. So, good morning from Switzerland. Thank you very much for the invitation, and let me share my story. I would say that I'm kind of like self-taught because I come from the Czech Republic, and when I was a teenager, I actually realized I was different, and I hated myself for that. And in that period of time of my life, books were the biggest help.
books, that the knowledge helped me to turn 180 degree from self-hatred to self-love. And this is one of my key realization. It's accepting my destiny, accepting whatever it is coming. And I felt also alone, but once I went to university, I started meeting kindred spirits and soulmates, and I realized, oh, I'm not alone. And when we are together, when there is a group of people, like-minded people, it was a time when I made the giant leap in my spiritual growth as a community with people. And also I realized, like, for me, meditation, the day-to-day life became a meditation. Whatever is coming, I just accept. I don't fight with my fate, with my destiny. It's about finding the inner peace. I think that's also very, for me at least, it's very important to find the inner peace. And many times I got from my life not exactly what I wanted. I never wanted to live in a big city and work for money, and then boom, I got in capital in Prague, and I worked for 5 years for international corporation. I never wanted to live in a cold place, and boom, I live in the middle of the Alps. So I learned that eventually it doesn't matter what exactly is happening, because it's about how I react, how I respond, whether I create positive or negative energy. And the negative energy I can call like ego. It will be always here, but I can deactivate it through understanding. That's also what I realized. It's so important to look on our shadows and just accept them, embrace them, not to try to hide them or fight against with them. And as many of you said, meditation is important. For me, meditation, it's also a time when I can go to nature and I feel connected with myself. After all, how we, the relationship with ourselves, it's what determines everything. We need to love ourselves first, and then we can love the other people and just expand our love and open our heart. That's what I learned. And when I was a kid, I thought we are on the top of the technical development and nothing can ever change or nothing can be even better. And now we have all these instruments. We can be like instantly connected globally. And I'm just curious what's next. And what I feel also, each of one has the wisdom inside of us. And the next step for the future could be this oneness, connectedness, that everybody, as many of you said, just love each other, open your heart, live in the truth. It's also one of my key understanding, living in the truth. And then we can change the world. We can become the change in the world we want to see. So thank you again for getting me this opportunity to speak up. And now I would like to invite AY Pastor Sarah. Good morning, everyone. I'm Astha Saraf. I'm into meditation since 2 to 3 years, but it's been a year I am meditating regularly. And I was brought to this beautiful world by my mother, Sarika Saraf, and I really owe to her for bringing me to such a beautiful and magnificent world of meditation. And it has given me many cherishable and profoundable experiences. What I really got from meditation was hope. No matter in whatever situation I am in or will be in my life, I have this powerful tool, a ray of hope called meditation. I realize that I don't need to go to solutions, but the solutions will automatically come to me. The solutions lie within us,
And we just need to connect to that breath who brought us to this world. I truly realize that we should focus on what we want rather than giving energies on what we don't. If you suppose you want to be an astronaut, imagine you have become an astronaut with full belief, and it surely got to manifest. What struck me the most in meditation was vegetarianism. I'm a born vegetarian, but I'm a born vegetarian, but there are people who still continue to be killers of animals and consume non-vegetarian items. But they truly need to be awakened and educated that by killing animals, they are not only destroying the animal life but also their own lives. So I have made this one of the purpose of my life to spread vegetarianism to each and every house. That's the need of the hour. And this is my message to all the youth striving hard for in the exams, क्योंकि ये मुझे भी बहुत help किया था अपने 10th के exams में. Just be calm, meditate, and surrender to the universe. You're gonna step to a world of peace and knowledge where no negativity can stop you achieve your inner goals. Thank you. Now I would like you all to meet our next AY, Bharat Bhaiya. Hello everyone. My name is Bharat and I'm from Cuttack. And thank you so much, Asta, for this invite. And I want to share this experience, my first experience into actual spirituality, you may say. I started meditation around 1.5 years ago. Shashank took me to Awakened Youth's Pyramid Center at Cuttack. And I was meditating and it was normal for around 4 weeks. I felt nothing. And then suddenly there was a realization that I'm meditating and all of a sudden it turned into a gaseous form or air and got merged with each and everything that is there. Means the spirit of oneness is what I experienced that day, and it was a great experience. From that day, my prospects started to change regarding what perceptions I used to keep in my mind, carry with myself. I would like, everyone spoke so amazingly, and I think they covered each and every essence of meditation. But yes, I also want to share something like three things: in and out. There's a connection between your inner self and your outer world. Your outer world is your outer self, and the thing is, it's very weird when people do not realize that what it's going inside is actually projecting outside. Say for example, there is some sort of frustration or anger within yourself. Actually, this is my own experience, that what I am sharing with, do not take it as a statement, but it's my truth. What's happening inside is being projected outside. We have potential energy, and the kinetic energy is what we do and what we receive. There is a great connect between the inner and outer world, and it's by your breath. It's your constant support between you and your outer world, your outer self, I should say. uh, and one more thing that I gradually got to know is by observing myself and observing people around me, that using your abilities, it's a very important thing that we should know, that wisely using our energies is very important. Energies or your abilities in this physical world, because if we misuse it, there will be a karmic ripple effect, and which will hamper only you and your growth process. So it can be done only through one thing, that is thought awareness. Yes, thought awareness. Because thought awareness is very important. What we think, we start to do. And thought and man actually defines you. Thought awareness can be brought in by just one thing,
and that's meditation in any form, but meditation. And the easiest of those is Anapanasati, and no doubt. You just have to sit, clasp your hands, and just close your eyes, start breathing and observing it. And it has actually helped me a lot in bringing in patience and more things. The third thing that I want to share is energies. See, uh, we cannot control energies. We need to understand this. But yes, those who are able to control them, they must be aware that there might be consequences. So be aware and use it. We all can do just one thing, and this is a gift from Paramatma or the universe, that we can just flow with the energy. And what Paramatma has given us freedom about is choosing it. It's we who choose the energies we want to flow with. Thank you so much, Awakened Youth. Thank you so much, PMC. And now I would like you all to meet J. Venugopal, RAY, the and the Indian in charge of PYMA, a youth organization. Thank you. Hello, all awakened youths. Hello, my dear friends. This is J. Venugopal, All India PYMA in charge. I hope you guys are listening to me. Thank you so much, Bharat Kochar. That was a great expression from you. Am I audible? Okay, fine. Continue. Yes, sir. Thank you. Hello, all. This is J. Venugopal, All India PYMA in charge. Bharat Kochar, it was a great expression from you. My dear friends, I would like to express my views about meditation and the awakened youth. We are actually, let me tell you guys about myself. I've been practicing meditation from last 20 years. From the बचपन से मैं ध्यान कर रहा हूँ. When I was started meditation in the childhood, I was like I never wanted to do meditation. But when I started meditation, practicing meditation, slowly, I started understanding spirituality. When I started understanding spirituality, I wanted to dig deep into the spirituality. And after some days, because of Patriji and PSSM, I learned a lot of things, and I came to know about so many spiritual masters and read so many books, and finally I have become awakened. I was aware that I was awakened. So when I came to know that I was awakened, I wanted to spread the meditation. I wanted to spread this spirituality. So then I started teaching meditation to all the youth all over the world, and I started practicing meditation as well as telling the meditation to all the people. So when I started doing that, I even more digged into spirituality, and I came to know many more beautiful things. And all this happened because of only one thing, that is PSSM. Yes, Pyramid Spiritual Society's movement. Thank you so much to Brahmasri Pitamaha Patriji to establishing this beautiful organization where all of us combined and getting together, doing Sajjana Sangatya, and gathering at one place and learning spirituality together. We are PSSM equals to oneness. It is giving us a chance to explore spirituality. So we have PSSM to spread meditation. The same way we all have awakened youths to spread meditation to all over the world. So I would like you all guys to understand about this meditation, and I would like you to know about the importance of awakened youths and Sensei and PYMA, all of the organizations, youth organizations, whatever we have. I would like you guys to involve into such organizations, and like our friend Lokesh said, spirituality and meditation is not only the elder people. It is for youth, younger people like you and me. Younger people are like bridge, like a bridge for children and the elderly people. We can communicate with both of them. So we youth must know spirituality, must practice meditation, and
to practice meditation, why can't we come together at one platform, that is Awakened Youths and Paima, Sensei? We have so many organizations. Wherever you are, you have an organization in PS system. There is a separate grant for that. So you guys please join in all the youth organizations and let us work together to spread spirituality. Let us bring peace and become one, bring oneness to the world. Thank you so much. With this, I would like you all to invite Mr. Shashank, my dear beautiful awakened youth, to express his feelings. Hello everyone and namaste. A very good morning to everyone. My name is Shashank Parekh and I am from Cuttack, Odisha. ध्यान करते हुए अब मेरे को करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं एंड काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे मेरे, काफ़ी सारे बुरे भी रहे। कई चीज़ों से मैं सीखा, कई चीज़ों को मैंने वर्कआउट किया एंड सॉल्व किया। बट इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी जैसे हमको पता है कि हाँ, वी नीड टू लर्न एक्सेप्टेंस, वी नीड टू इम्प्रूव आवर अवेयरनेस, हमें ग्रैटिट्यूड देना है, हमको लव स्प्रेड करना है सबके साथ। बट ये सब जानते हुए भी हम डेली इसको अपने लाइफ में क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट एबल टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी डेली इन आवर लाइफ्स? सो ये क्वेश्चन मेरे मन में काफ़ी समय से आ रहा था कि मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, मुझे सब चीज़ मालूम भी चल रहा है, बट फिर भी मैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही जिस हिसाब से हम जानते हैं कि वो हो सकती है अगर हम ये चीज़ करें। तो व्हाट हैपेंड अ डे, मैं एक बहुत यूट्यूब पे बहुत अच्छा एक सीरीज़ है बुद्धा के नाम से, आप सबको देखना चाहिए। तो जब मैं वो सीरीज़ देख रहा था तो फ्रॉम दैट आई केम टू नो दैट बुद्धा वन्स सेड कि the knowledge you have is useless until and unless you put it in your daily lives. जो ज्ञान आपके पास है वो तब तक इस काम का नहीं है जब तक आप उसे अपने कृत्य में नहीं लाते। सो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जब भी मैं ध्यान में बैठता था, आई केप्ट ऑन रिकलेक्टिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। आई केप्ट रिकलेक्टिंग अगेन एंड अगेन इन दिस माय एक्सपीरियंस कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, उसे मैं अपने लाइफ में डेली अप्लाई करूँगा। बट ये बोलने के बाद भी अब मेरे को ये लगने लगा कि हाँ भाई, अपने ये भी बोल रहे हैं बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना है? तो इसका भी एक बहुत ईज़ी सा उपाय मेरे को अपने आप को जानने को मिला कि जितनी भी छोटी-छोटी जगहें हैं मेरे लाइफ के डेली कार्यक्रम में, जो छोटी-छोटी हैं, जैसे कि कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे गरीब लोग हैं, हम जाके उनसे स्टार्ट करें। मतलब इंटेंशनली वी कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे कि इतने एनिमल्स है, वी शो आवर कंपैशन टू द एनिमल्स, वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द पीपल हु आर पुअर, जो जिनके पास खाना नहीं है, जो मतलब सबके साथ, सिर्फ उनके साथ नहीं, हर किसी के साथ हम ये प्रैक्टिस करें इंटेंशनली। तो जब हम इंटेंशनली ये छोटी-छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगेंगे, लव, ग्रैटिट्यूड एंड प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, जब ये छोटी-छोटी चीज़ें हम इंटेंशनली प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब ये अपने आप अपने कृत्य में आ जाएँगे, अपने आप। तब हमें ज़्यादा इसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग डेली। सो ध्यान हम रोज़ करते हैं, हम सारी चीज़ें जानते हैं, उसके साथ-साथ हमें अपने डेली स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते रहना है। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी सब ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी डेली। छोटी-छोटी जगहों पे एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, स्प्रेड लव टू एवरीवन एंड बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जो आपके पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग टू यू बिकॉज़ देयर इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। एवरीथिंग दैट हैज़ यूनिवर्सल लॉ दैट हैज़ मेंट टू हैपन विथ यू विल हैपन विथ यू। चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, जो होना है वही होकर रहेगा। सो बी इन द फ्लो, be in a state of acceptance, be in a state of gratitude and spread love with everyone. From this, I would like to conclude my experience sharing. And now I would like to invite AY Pooja Sharon from here. Thank you. Namaskar. I am Pooja Sharon from Hisar, Haryana. तो अगर ये पानी का ग्लास मैं यहाँ गिराऊं एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ लैक्टोपस, तो आप इसे क्या कहेंगे? मिरेकल, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। पर अगर इसी पानी को मैं पीऊं
इट टर्न्स आउट टू बी मी, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर कंटेंट है। सिमिलरली जो अर्थ है उसके ऊपर भी 72% वाटर ही है। तो हम में और प्रकृति में कितना सामंजस्य है, हम कितने सिमिलर हैं। यथा पिंडा तथा पुमाने, अर्थात जैसा पुरुष है वैसी पृथ्वी है। तो हमारी बॉडी मिराकुलस है। सिमिलरली जितनी भी इन्वेंशंस हैं, एक बल्ब से लेकर एक स्मार्ट कंप्यूटर तक, सब किसने की है? ह्यूमन बीइंग। वो भी किससे? थ्रू ब्रेन। और वो भी तब जब हम ब्रेन का कुछ ही प्रतिशत इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद भी इतनी सारी इन्वेंशंस हमने कर दी हैं। तो ह्यूमन ब्रेन से बड़ा तो कोई कंप्यूटर नहीं हुआ और इस बॉडी से बड़ी कोई क्रिएशन नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि ये बॉडी जो इतनी मिरेकुलस और सुपर्ब है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि इसे कोई हार्म या डिस्ट्रक्शन हो तो ये खुद को खुद हील कर सके? ऑफ कोर्स होगा। द पावर दैट मेक्स द बॉडी हील्स द बॉडी। बट हमने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास हो रही चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। कुछ सालों पहले मुझे भी इस चीज का नहीं पता था। द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू हील। आई वाज नेवर इन्फॉर्म्ड बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बट इन ऑर्डर टू वेक अप गाइज, एवरीवन नीड्स अ वेक अप कॉल। और मेडिटेशन बनी मेरे लिए वो। जब संगीता नेहरा मैम ने 2.5 साल पहले मुझे मेडिटेशन सिखाई, आई वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, बट मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई हेट इट लिटरली। बट अब माइग्रेन में सीवियर हेडेक होता है तो हमें मेडिसिन लेनी होती हैं। तो आई स्टार्टेड मेडिटेशन। तो जब भी मुझे हेडेक होता, मैं 10, 15 और 20 मिनट्स के लिए बैठती और मेडिटेट करती, एंड इट वर्क। मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता। और तब से अब तक मैंने कोई भी पेन किलर नहीं ली है माइग्रेन के लिए, बिलीव मी, कोई भी नहीं। हमेशा मेडिटेशन करती हूँ और ठीक हो जाता है। देन आई रियलाइज दैट मेडिटेशन इज मेडिसिनल। बट बुद्धा सेड एवरी मैन एंड वुमेन इज आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन हीलिंग एंड ओन डेस्टिनी। तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है बाहर से कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट लेने की? क्यों हम किसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, किसी फॉरेन मेडिसिन को या किसी चीज को, जब हमारी बॉडी के पास इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कैपेसिटी है हील होने की? तो गाइस, हमें करना क्या है? इस चीज पर सिर्फ बिलीव करना है। और हमें इस पे बिलीव कौन करवाएगा? मेडिटेशन। तो ट्रस्ट में गाइस, रिप्लेस योर मेडिसिन विद मेडिटेशन। आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करिए, और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक यू टू मीट नेक्स्ट day by साहिल भैया। So thank you so much, everybody. Welcome back, guys. I hope you enjoyed the beautiful sharing by all these beautiful masters. What a great message from every one of them. See, this is how, इससे हमें ये पता चलता है कि हर युवा के अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान है, हर इंसान के अंदर दिव्य ज्ञान है। बस उन्हें जागृत करने की देरी है, ध्यान करने की देरी है, फिर ये दिव्य ज्ञान हम सब में है। तो इससे बस यही प्रमाणित होता है कि किसी को भी हम छोटा नहीं समझे, किसी को भी हम कम नहीं समझे। Everybody has been is God. Patisarka, we are all gods. So we respect everybody's God within them. Meditate and let it out to share with everybody. So with that, I would like to say, Patriji, I would like if you wants to share some words about how the session went and how you felt about it. So if you would like to share something, and then we'll move to the next session. It was wonderful to hear everybody all the way. Every person was wonderful, was giving something new to us. Especially the last person. He said, no doctor, no medicine. See, this body is a great creation. I was very, very happy to hear all these words. Sahil bhai, aap to jadugar hain. I really appreciate all the masters, young masters. Meditation is not for old people like me. No. Meditation is for young people who are going to be Jagat Gurus. Yes, Sahil bhai, aage badho. Thank you so much, Patriji, for such great motivation to us. You are the source of our inspiration, and thank you so much, Swamiji. And now we are moving on to the most very, very important, very beautiful session. It's going to be wonderful. So I will not reveal it. I will now invite Samita to take over the session and invite one of the great masters who's going to be with us today. Thank you so much. Thank you so much, everybody.
Namaste everyone. Namaste Patri sir and namaste all Pyramid Masters. So honor to be here on this platform. Thank you. मैं भी पिरामिड मास्टर हूँ, समिता फ्रॉम मुंबई, और मैं भी ध्यान करती हूँ सिंस 2012, और मेरी जर्नी भी GCSS से शुरू हुई बैंगलोर से, और यहीं पर GCSS में ही पहली बार जूडी सटोरी से मुलाकात हुई, माय डियरेस्ट फ्रेंड जूडी सटोरी, और बहुत लोग जानते भी हैं उनको क्योंकि वो बैंगलोर में आती हैं, एंड आई एम सो ऑनर्ड टुडे दैट आई एम वेलकमिंग हर टुडे इन दिस इवेंट. जूडी सटोरी के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट मैं कुछ वर्ड्स में कहती हूँ. शी इज लाइक शी इज अ एनर्जी हीलर herself. She is multi-galactic translator. She is a spiritual teacher. उन्होंने एक बुक भी लिखी है, सनशाइन बिफोर द डॉन, काफी लोगों ने पढ़ी भी है, और शी इज एक्चुअली मीडियम. उनकी जो मिशन है अर्थ में, इट्स वेरी यूनिक. शी हैज बीन टोल्ड दैट शी इज अ मल्टी dimensional translator, or translator from not just the earth but all from the star nations, galaxies and beyond. तो वो जो translate करती है, she is the medium to help the human potential, to bring that energy, that translation हमारे through, हमारे लिए वो ये translate करती है for the people on earth. And she speaks the language which is multidimensional, which is called light language. हमें वो कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं, बट शी स्पीक्स फ्रॉम हर वॉइस, फ्रॉम हर हैंड मूवमेंट्स, बट उसकी जो एनर्जी है वो हम महसूस कर सकते हैं. ऑल्दो वी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी स्पीक्स इन दैट लाइट लैंग्वेज, बट हमें वो महसूस श्योरली होती है, और यही उनका जो मिशन ऑन अर्थ है वो 22 ईयर्स से कर रही है. एंड दिस इज सच एन ऑनर कि आज मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ. मैं भी उनके साथ इसी तरह जुड़ी हूँ, एंड शी हैज बिकम गुड फ्रेंड सिंस देन. मैंने उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए बॉम्बे में बहुत बार, उनके साथ लद्दाख टूर्स किया है, और मैं क्रिस्टल बॉल बजाती हूँ उनके साथ, जो कि मैं पिरामिड वैली में भी करती थी. तो आई फील सच एन ऑनर टू इनवाइट हर टुडे in this event and let her speak her ideas about it. Or I invite and take this pure honor from PMC, through PMC, to invite Judy Satori now. Thank you. Is so very critical and important. Any process of change feels uncomfortable as it is unfamiliar and strange to us. Within our lockdown bubbles, we are changing in how we feel physically and emotionally, and how we co-create together. We are being asked to ignite our imaginal selves and begin to look at life through new eyes, to create a new vision. We're being prepared to go beyond who we know ourselves to be. The
changes that we are experiencing are partly to do with our own personal human experience. But really, what is occurring is part of a much bigger picture of an expansion of human evolution. What we once considered important is for many of us no longer our focus. A desire for inner peace, love, connection, and happiness is becoming the new indicator of success. When we emerge from this time of reset, life will not be the same. But consider this. Maybe this time of reset is actually being divinely orchestrated, and that breaking through into a new way of being will actually lead us to greater success, peace, love, and co-creation together. As you go through the 6-week breaking through process, you'll be prepared physically and emotionally, supported to move through a personal energy transformation to support your emergence into a new reality. Hello, everybody. It's wonderful to be speaking with you all tonight. And thank you to Samita for your wonderful introduction of me and for your friendship. And I want to acknowledge with deep respect you, Patrici. It's really lovely to be looking at you on the screen. And it's wonderful to be speaking to all of you in India and to be connecting with Pyramid Valley for this evening. This evening here, I'm speaking to you from New Zealand, and it's a great pleasure to be here. Really wonderful. So Samita told you a little bit about me, but I'll just tell you a little bit more. My work with spirit began 22 years ago, and it's been quite a journey of change. What you are all going through and experiencing in your own awakening, and it's so wonderful to see so many young people here joining together, because the future of our planet depends on all of you. And when you go into the stillness of meditation, you begin, as some of you shared, and it was wonderful to hear you share, but when we go into meditation, we really tune in to the authentic soul aspect of ourselves. And from that place of going deep within, we can build the true energy and essence of us. So as we gain that wisdom of the authentic being that we truly are and have always been, then we become empowered. My work with spirit is about helping people to open to their true authenticity and helping people to really activate the soul truth inside of all of us. So I've been doing this work for quite a long time, and I was trained by spirit as a channel, like a conduit, to bring energy through my body. And after 5 years, quite spontaneously, I began to speak these rather strange sounding languages that Samita referred to as the languages of light. This language that we can all speak is part of our sacred truth. It's part of our authentic soul self and our eternal soul aspect. So what I can do, you can also do. But the thing that maybe is a little bit different for me is that it's part of my role. You know, we all have something that we've come in this physical body, in this life, to do. And my role in this physical body, in this life, is to bring through energies as a ascension catalyst. This is like energy spoken in very fast frequencies of sound and light and vibration that are designed to activate and open people to what their role and their truth is. So I want to demonstrate this to you. Some of you may know me and some of you may not. I have an Ascension library, and there's many tools there that help people that I'll talk about later. But for now, let's gain a connection, a more expanded connection with spirit and our spiritual selves.
because today, I have many beings of light around me who are wanting to speak to all of you as you are star beings. When we talk about the spiritual hierarchy, we might refer to the Buddha or the Christ or other spiritual masters and teachers that have walked this planet. But we also are referring to those unseen ones, those beings of sound, of light, who overshadow us, who guide us on our way, that we may not even know are there. So as I began my work 20 odd years ago, I began to connect to some of those beings. And many of you will have your own connection with them because those wonderful beings of light and love are with all of us. So the first being that really comes to mind and comes into the space here is Tara, the goddess Tara, the Buddhist goddess Tara. And Tara comes to us in her golden aspect, because her golden aspect is like the future Tara, the future energy that is to come forth upon the planet. Because Tara is the great mother goddess of the earth. And as the great mother goddess, she wants to mother us. She wants to support us. She wants to nurture us. She wants to guide us forward so that all of you and your incredible beings, incredible masters, and in your lifetimes, you're going to do an incredible amount of work and good upon planet Earth. But what is occurring now is that Spirit want to help all of you, all of us, to gain a greater connection with them so that you can all at a much earlier time step forward to do what you are called to do. Because when you were born, you came in, all of you, on a much more expanded vibration. And that star-seeded expanded vibration, Spirit are now saying to me, needs to be activated on this session today. So let's begin with this activation with the energies of beautiful golden Tara, Mother Goddess. Moko kalaki celestia, alabadagola galabadia, akalakadabadagalasia, akalakadabadasia bedadia, akalakadabadagalabadia, akalakadabadagalabadia, selgulugulabadaki, mokolakadabadagia, salvadagli, ishtanabadiya, kulugadasia, ishtanabadagalabadia. So what you might feel within your body, and just let whatever happens for you happen for you, because we're all unique. And so these energies are like keys and codes to open time locks within your own soul memory, your own soul's Akashic records, but also within your human DNA, because we've had all these lifetimes where we've been able to do much more advanced things than we remember doing. This life, for all of you who are watching today, is about opening into these more expanded aspects of self and bringing more of the soul knowledge, the soul's authenticity into your human life today. All of you have certain things that you're being called to do. And this calling is really beginning now, because in 2020, we've already seen unprecedented change on our planet. But 2020 is the sparking or the beginning of a much more expanded energy vibration coming through to the earth. And in the next 13 years, all of us are going to be expanded. And we're going to be being human people in a different way. And we're going to be being these human people, and we're going to be bringing in the star being aspect of ourselves, or the multigalactic spiritual aspect of ourselves, so much more strongly. So Golden Tara, she has a blessing, and her blessing is one of holding us in the palm of her hands, really, like holding us in the light, holding us in the truth and the energy of that sacred knowing that we really are. And as we connect now through the heart, because everything happens through the heart, because the heart is all about love, and love is the key in the way. So as we connect through the heart, we pull through with the love vibration, the energies of the divine, beginning with the support of Golden Tara. So all you have to do really is sit with your hands palm up
and just open your heart into as much love as that you can muster up and create, and just be with what is, knowing, as some of you expressed, and I was very impressed by what you said, as some of you expressed, life is already planned. Destiny will play out. And all we really have to do is follow the heart, to follow the still small voice within the heart and be guided by the intuition, and then actually step forward, take action and do it. So it's a great privilege to be here talking to you all today, because you've all stepped up, stepped forward, and you're doing it. This energy is just to help you. So some of you might feel strange sensations in your body. This is just like spirit recoding, spirit opening, spirit activating, spirit getting you ready for your own unique role on the planet. And if you have any questions, you could just type them in the chat box, because I can see that, and then I can make sure that I cover anything that anybody needs. But we're going to be having Q&A later on. So now as I sit and I see within my inner sight beautiful golden Tara, like she's not going away, she's stepping back. And who is coming? It is Maitreya Buddha. Maitreya Buddha is now with us. Maitreya Buddha is future Buddha. And Maitreya Buddha is bringing the energy and the blessings of the open heart, of the fully open lotus to us. It's like this 1,000-petaled lotus within the heart is blooming and opening and strengthening and showing itself for all to see. So as you sit in meditation, this is the most important thing that we can all do to grow spiritually, to open into the authentic truth that we are on a soul level. It is in the meditation process that we become still, and like a still, calm lake. And as we become still, so we become receptive to the promptings of spirit, to the promptings of soul. We settle down from the rough water of our human emotions and our human thoughts. And as the emotional body within us calms and stills, so we can truly open to the energies that are to come. So imagine now that your whole being is going into a deeper state of meditation, the calm, still lake of yourself. You know, when you walk beside a beautiful lake and you throw a stone, a pebble into the water, if it's really calm and still, you'll see a ripple spreading out. If the water is all rough and ruffled, you throw the stone in the water and it doesn't even leave a mark. You can't even see where it went. And this is the difference between someone who meditates and someone who does not. So when we meditate, the calm stillness of our mind allows a receptivity for the energies of spirit to flow in and activate. So just imagine now, even though you're not sitting in meditation, imagine that you are, and just allow yourself to go deep and still, and imagine that you're making your mind like this calm, still lake, and just be. And spirit, God really, source, all that is,
is like a trinity with Golden Tara, Maitreya, and Source energy, God energy. Golden Tara, Maitreya, Source. And then my body is the fourth part, is to anchor this. So my role now is to anchor Source energy, God energy, through the auspices of Golden Tara and Maitreya Buddha into you. So you can step forward and you can illuminate and be the illumined master that you are meant to be. We're just grounding the energy now. So these energy words that I'm speaking are transmitted automatically through me. It's not a language that I've ever learned or practiced. It's just a language which is transmitted through me as a channel, as a conduit for it. So many of you will know, I'm sure, about this galaxy, this Milky Way galaxy that we are part of. The Earth is a very rather insignificant planet on the outer arm of this Milky Way galaxy. And many of you will also know about the galactic center, the source, energy source of this Milky Way galaxy. But what you may not know is that in the last 7 years, since 2013 to 2020, there has been a profound opening of more energy, more of the source God energy, creation energy, being able to come into the Milky Way galaxy and us on Earth and all of us, we've been receiving more of this very catalytic, stronger and stronger, more accelerated ascension energy. Ascension is not about going up or going anywhere. Ascension is about bringing more of our authentic soul aspect into our physical body. Ascension is also about, to a certain degree, it's about more vitality, a revitalization of the physical body. Because as the energy pathways are opened to receive more of this expanded God energy that I'm talking about, what is occurring is that our physical body revitalizes. So the ascension process is a physical process as well as a process of expansion of consciousness. It's both. And it's really only kicking off now in 2020, much more powerfully. So the energies that are coming through my voice now, which are source energies, are coming from a more expanded God creation energy matrix at the heart of 22 galaxies, which are configured together in a vast multigalactic diamond-shaped grouping, which is interesting in itself because when I started to do the energy work, I was bringing energy from source. I had Golden Tara and Maitreya and me. So it was creating a diamond-shaped pattern. So the energies of source that are coming from this more expanded multigalactic 22 galaxy matrix are coming through to activate us, not just us on Earth, but all life within this Milky Way galaxy and all life within the other 21 galaxies of this multigalactic diamond. So this upgrade, this ascension upgrade, is not just about people on Earth. It's not just about Earth. It's a massive thing. It's a massive advancement for not only for humanity, but for all life within the 22 galaxies of the diamond. And this is why we're all opening up now with more insight to our understanding that we've had lifetimes on other star systems and in other galaxies. And that we are in Pyramid Valley, I think it was 2012, when I first met Ramarshi Patriji here.
it was because I wrote a book called Sunshine Before the Dawn. And I was contacted because of that book. Sunshine Before the Dawn is a book about the creation of the human being and the fact that the human being was created by God, of course, we are God beings, but also created by the genetic input of star races, founding races, guardian races within this Milky Way galaxy who contributed an aspect of their own DNA code, their own genetic makeup to create the human. And so the human was deliberately created around 100,000 years ago by these star nations who were part of a galactic union or a galactic council, and deliberately brought to see the Earth so that in 4 great cycles of Earth precession, which is 4 cycles of approximately 26,000 years, Earth and the beings, the human beings that were created, because Hu is a sound that means of God, the beings, the people that were created as God beings could be activated by energy words of new creation by God to upgrade and advance. And that's exactly what is happening now. You see, we have just begun this new cycle, this 5th great age. This 5th great age is the age of the golden coming. It's like the time of the great return. It's the time of the returning to the truth and the authenticity of who we are. But it's also the time of returning to this more expanded capacity that we all have within ourselves as human beings. And this is the important thing, because within our DNA, our human DNA, there's a lot of DNA which is so-called junk DNA. Scientists understand it doesn't seem to have a purpose within our human genome, our DNA code. But what spirits say to me is it does have a purpose. It just has not been the right time to activate that DNA to express. Because when that DNA that is really there within our human genome, so-called junk DNA, is switched on to expressed by energy words of creation from a more expanded source God energy, there's no telling what is going to happen for us as a race. And we certainly need this now, don't we? We need this activation of our human capacity to be expanded, because we have to step up, all of us, and change our world. Because we see all the changes out there. We see what is happening. We see the fact that there are a small number of people who control the planet, and most people who work and struggle throughout their lifetimes. And that is not what the divine intended for us as human beings. The way forward is that people wake up. The way forward is that everybody begins to understand their more expanded soul aspects, and that we unite together to co-create from love, from peace, and from unity together, creating win-win situations and outcomes for all life. And there's very many people who are trying to do this now, but it's like a situation where, as we awaken, each one of us is like a little light, and as we combine our little lights, then we can create wonders and seeming miracles. No one person can do it alone, and that's the most important thing. And so this is why it's so important and so gratifying to me to see all of you young masters come together and share, because this is the seeding, this is the nucleus. And it's wonderful to see Brahmarshi Patriji also, that Pyramid Valley is bringing this energy forward for the young people of India and the planet, because it's absolutely the time to do this. And it's absolutely the time to help people understand meditation, but also to help people understand that our capacity to meditate and become still and go within is what is actually going to open us to the acceleration and the ascension activations and openings
the upgrades and advancement that Spirit wants to bring to all of us now. But we have to be ready. And the readiness depends on our capacity to open our heart and to love, our capacity to still our mind and become peaceful, our capacity to get out of our own way. Because we are human beings, but we're also energy beings. We're also souls in a human body for a very tiny amount of time. And during that time, that 70, 80, 90 years that we're in the human body, we have to have fun. We have to enjoy. Because our birthright is to be in joy. Our birthright is to be happy, to be well, to be happy, and to live our lives in joy. And that's why meditation is so profoundly important also, because we can't get to that peace and love and joy unless we can get away from the endless thoughts that go round and round and round in our mind as human people. You know, we've all had many lifetimes in human form on planet Earth. And one of the things that, one of the downsides of that is that we have accumulated a lot of what's called karma. Karma is not really payback, or karma is not terrible things happening to us just by chance. Karma is the energy accumulation of what's called karmic miasmic patterning, which is the energy, the discordant or dissonant, out of pitch energy that has been created within our energy fields, within our chakras, in every aspect of us on a physical and energetic level. And even within our what's called our soul DNA, the soul DNA is like the soul's Akashic records. There's also this out of pitch, off pitch, discordant, incoherent energy there that we call karmic miasmic patterning. And this, when this vibrates, and it does when we go through change, it starts to vibrate when we try to step out and do something new. It starts to vibrate when challenging circumstances pop up for us in our life. And of course they do, because we're human, and it will always happen like this, because that's part of life. It's part of human existence. So if we can understand that this karmic miasmic patterning is like a tape recorder going play, and it's playing the same old tune. And how we know it's playing the same old tune is that we will think and feel and respond to certain situations in our life in the same old way. And this is not just the same old way from our childhood. This is the same old way that tracks us and travels with us from lifetime to lifetime to lifetime. I have an Ascension library. It's ascensionlibrary.org. And the Ascension Library has many tools for healing and transmuting karma. But what I want to do with you all now is I want to bring through some energies to help you shift very quickly into the states of consciousness that we all want, and we want to have them permanently, which are peace, love, and joy. So we're going to begin with peace. So what Spirit are doing is that they're going to bring through certain frequencies that if there is energy discordancy within you, which is not at the vibratory level of peace, that's going to be taken out. A bit like vacuuming out the discordancy. And then we'll move to the other two, love and joy. So we'll start with peace. We'll remove any aspects of self or soul or fragments of energy that are not aligned with peace. And just be, put your hands palm up. So what I think you will feel, hopefully, is a feeling of just relaxing energy going out. If you do feel this, just write me a little message in the chat box.
Ishtannabadi, akala shtannabadi, ishtadasannabadi, alugolabadi sellakia, istasokadi, istasokadi, akologalabadi sadishti, akalagali standisi, akalabadi sanishti navalesi, akolagalagadi sadikadi, akalagadi sadidi, circulisia, akishtanna de zakadi, alalagodadakode de kadi, alakadagalazati, ishtadakadesi. So what you're feeling is you're feeling the like spirit with these energy words. It's like a suction. It's like sucking out energy discordancy. It's not really sucking out thoughts. It's more sucking out or removing the energy that at times can vibrate within you when you're challenged, when you're going through a challenging situation in your life. This is the energy that takes you out of your peaceful, calm state and like ruffling the waters of your being. Akalakalakalagali sadagadi, Ishtanamalea, Alabalakadia, Alakalakalakalistania, Ikistania, 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 Okulukalabadestania, the Badia, Akulistania, the Badia, Okulukalabadakalistania, Ekasadik Sabadagala, Godesia, Alukulabadia, the Badia, Mystia. So if you have some water beside you, just drink some water. I will, because we need lots of water when we're running this kind of energy through the body, because water hydrates and it helps the energy, just helps the energy work better through the physical system. So, hope you're all feeling good. Now what we're going to do is we're going to work with any energies that are discordant and not at the vibration of love. And for this, you can just put your hands like this, just over your heart chakra like this. And just be, because there's nothing that we have to do. And yes, close your eyes and just feel the energy. It's not me doing this. It's spirit doing this because of the love and the support that they have for all of us, which helps us know that we are not alone. And sometimes we can feel a bit in our human selves and we feel a bit alone because all of you and some of you expressed that in your childhood or growing up, you felt a bit out of it, a bit alone, different from others. And the thing is, you are different from others because not everybody does what you were going to be doing. And it is a lonely road at times because you are at the advanced guard, if you like. You are at the forefront. You are at the beginning of this surge of energy. And sometimes that is lonely because some people don't understand this. You do because you feel it and you know with your own being. Because you, all of us, including Patricia, we all put up our hands on soul level to be here and do what we've come into this lifetime to do. We probably chose this a long time ago. But this time on the planet is when we've come in to do it, because it is the divine right time for these changes to occur. And so we probably had some training or experience in other lifetimes, many lifetimes, where we've stood in the light and supported the light and tried to help people find the light, mainly in themselves. And we've had many lifetimes where, as we have tried to help people find the light within themselves, they haven't understood us. And in those lifetimes, we may have been even killed. And so this is trauma energy. It's karmic, miasmic trauma energy.
And this is the energy that's locked away within our being, you see. And when it's locked away within our being, on all levels of our being, when we are tasked to step forward and step out, it goes vibrate, 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 play. And we may get anxious. We may get physical issues coming up because our physical body wants to keep us safe, because last time we weren't that safe. And so these things are what can happen. So now we're going to remove and clear blocks, energetic blocks, to opening into more love, because the more we can open into love, the more spirit, God, source, all that is, the more spirit can bring the energy through us. You see, if our energy circuitry is really clear and opened unto love, then they can bring the energy through. When we're tight and stressed and anxious and we don't relax, it's much harder for spirit to do their work in helping us, which is also another reason why meditation is so very important, because that's when we relax and we know and we go within and we trust the truth of our own heart and the truth of our own knowing. You see? So let's bring this energy through now to do with the heart and the love. Moko ki se ti ki se bit kusi di sia ala bana bala sti de salva la coda sadia mela casella la casati istanda casella kia akala kan se staka zemedestidia akola kala 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 stidia akala kala kala bada kala bada istonna bala esadia akola bada kala de kala bada zestaki akata bada kala bada kala se bada kala sadia mela kala bada sadia Ogolo kalapata 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 they see. Akara they sat the kadia. Akara sat ya. Akara castidity. Mokola castidity. Mokola castidity. A class sedish ton no kia. Ogolaba de codans of the sedity. Akala castidity. A castidity. Mokola sedish ton nabadia. Okola kalabata sa. A kiss of the sebit goodies to the barista barista. A melacolo they sage. They calm. Matia. Matia, 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 which in this energy language, Matia, Matia, Matia is multi-galactic language, really. It's translatable, this part, and it means you are loved, you are blessed, and so it is. Matia, Matia, Matia. You are loved, you are blessed, and so it is. Amen. So just take a big deep breath. And what we're going to do now is we're going to work with joy, to let joy come in. Joy, the joy vibration, when we feel joy, is like a catalyst also. Joy is like being on this super duper sports car, being in this amazing fast car, because it's the fast ascension car. It's the fast car that's going to take us where we want to go on our ascension and human journey to be and do what we're here to do. It's the joy vibration that is the catalyst. So the more we can hold the joy vibration within our being, and we'll go to that piece in a minute, the more the energies of God, of source, of all that is, can work through us as the energy conduits in the vessels that we are. So the more change we can enact and do and make out there in the world, on the planet. So now we need to clear blocks to joy. This is the karmic miasmic patterning of the past life thought and belief that has shut us down. And as some of you will maybe know, but as you begin to clear this heavy energy, the old thoughts and feelings of what shut you down in the past might come up again. It could affect you physically. I mean, for example, I know I'm going through this process at the moment where I'm being worked with by spirit to open me up wider and wider and wider as a channel, as a conduit. But in the process, what actually happens to me is little niggly aches and pains come up
because there's aspects of my own physical being where I'm holding discordant energy, incoherency, this karmic miasmic patterning, locked away in the body where I've, in past life, had some physical trauma happen to me. And that's true for all of us, but we're all unique. So we're all going to have our own set of physical or emotional or thought-related karmic miasmic clearings. Another way that it can affect you is that you'll suddenly not think in the way that you normally think and behave. And you might revert to old patterns of thinking, old patterns of doubt about yourself, or old patterns where you attract from other people antagonism, they don't understand you even more. This is all part of the clearing, where you will, as part of the releasing of these old outmoded thoughts and feelings about self, you will have them come up into your face, really. They will come up into your consciousness even more strongly for a time. The way to deal with this is to see these thoughts and feelings as like a paper tiger, not a real issue. It is not you losing where you've gone or what you've gained. You're not reverting into an old time in an old way. What is happening is that the old energy that has been almost hidden under the bed is being exposed to the light of day, and it is leaving you once and for all. So the energy that we're going to transmit now will help this, any emotional vibrations that stop you from being joyful in your life. This is about clearing this, letting it leave you with more ease and more quickly. Some of you might feel a bit of emotion come up. And this is because as we release this energy that is blocking our joy, we're like connecting to a deeper part of ourselves that we might not have really been able to access. Sometimes there's like, because of all these lifetimes that probably all of you have had, where you've stepped out and tried to hold the light in so many times and in so many situations. There's a feeling of probably tightness in you at times, where the anxiety or the slight stress that you have to do it, like a stress that you know you're here to do something really quite powerful and important to life on this planet. I'm sure all of you do. You might not know what that is yet because you're still young, but just trust the process, just surrender, because everything is orchestrated and everything that is going on in our destiny plan, if you like, of the soul, is already written. All we have to do is get out of our own way and follow the still small voice of the heart, what our intuition says. Follow this because it's telling the truth, and step forward and do what our intuition, our voice of the heart, is actually telling us to do. And sometimes that's the hard part, because when we start to do this, we have all sorts of people say, oh no, you shouldn't do this, or we feel afraid or anxious about it. And we don't know at times how to do it. But if we just step forward one step at a time, and that's what's so good about a group of you being gathered together, because you can all support each other in this process. It's really hard to do it alone. So joining together as a group is so very, very vital here, and so very, very important. So let's work now more with the joy vibration. This is about opening to more joy, opening that
thousand petal lotus of the heart, the love and the joy, and just being. It's not about doing anything, you see. It's just about taking a big deep breath and just letting go and letting God. Surrender. Total surrender, which is another aspect of meditation. Total surrender. Watching the breath. Total surrender. Mi clear que sage lo se media. Ako kaliki sa balaka li sage to koya. Le que sa balaka sa ko de la media. Moka la balaka de la media. Ulaka di sa stan la kala kush di si. Akala kazi di sa ko dia. Akala kazia. Akala kazia. Akala kazia. Akala kazia. Akala kazia. So just be really gentle with yourself. Don't criticize where you're at. Understand that to get from A to B and step out in the way that your soul is destined to do, it's like sometimes 2 steps forward and 1 step back, or you go down one pathway and you have to come back and go down another. That's part of being human. It's part of trusting the process. And so we are all tested, not by any person sitting up there on a cloud testing us, but we're all tested in our capacity to go deeper into our own being by our own soul. And when we are ready, then we are given by our soul, by the soul group that we come from probably also, the green light to step forward and go to the next stage of our development and the next stage of what it is that we have come to do. And this will happen automatically. It's like synchronicities occur spontaneously. Opportunities come to us out of the blue. Just like today, I was invited to speak to you all. This was like an opportunity out of the blue. And so I'm here. But what is this actually teaching me is to let go and let God, because normally I pre-plan what I'm going to say a little bit because I'm human and I like to try to do a good job. But today, Spirit said to me, we don't want you to pre-plan anything. We want you to say namaste and open your mouth and begin. And that's what I've done. So I'm shown by experience to do it a little bit differently and not to let go, to trust the voice of the heart, to trust Spirit to come through, because we are all channels, we are all conduits for the divine. And when we get out of our own way and trust the process and just do what we intuitively feel to do and say what we intuitively feel to say, then they can do the job that they are trying to do with each of us so much better. You see? So it becomes easier and easier the more we break through really into the vibrations, the triple vibrations of peace, love, and joy. It's like a pyramid. Peace, love, and joy. The way we can do that is also to sit in meditation and just focus. Just imagine that there's a beautiful magenta color pyramid. Magenta's purple, pink. And after you do Anapanasati, you could also try this, where you imagine there's a magenta color pyramid above your head, anchored above your head. And you're just reaching up to the triple vibrations of peace. You just create the feeling of peace, reaching up to the vibration of love. And then reaching right up to the apex of the pyramid, which is going all the way up to source vibration at the heart of the 22 galaxies of the multigalactic diamond. And this is joy. Once we reach up with our mind and with our heart and our mind consciously to this vibration of joy, it's like opening a doorway to that joy, opening a doorway to that peace, opening a doorway to that love. And this energy will flood and flow down through our physical body vessel. Just try it.
opening to joy now. Miki Salashta Samelakishta Samakodia. Akadakazabidakalakalakalisati. Akalabadakalakalabadigistolaki. Ashtikazishtanamadisalagi. Agulugurabadisalaki. Akadabadikadabadikalakalisati. Amachtaniki. Shtakazakolaki. Akalakazidikazabadikulugurabadiki. Akalakazidiki Zatakazabadi. Akalakalagadabadiki, Kulakstanabadi, Akalishtanabadi, Alabadagadishtanabadi, Akalukudisia, Akalakalagadabadagalashtanabadi, Akadabadagalabadagadabadiki, Aka, 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 Aka. And take a deep breath and relax. So what is happening now is that we're being prepared divinely by God, by Source, by all that is, and we are supported by many beautiful beings of light. Light beings on the earth in human bodies, and light beings off the earth and throughout the 22 galaxies of the diamond. Because they're preparing us for upgrade and advancement. So what might this upgrade and advancement mean for us, or look for us, or look like for us in the years ahead? We're just beginning this more expanded and accelerated ascension cycle in 2020. It's interesting that we have all been locked down in our homes, that the earth is going through unprecedented changes right now. It's shaking people up. It's all of us have had to look at life the way we know it and see the life the way we know it is changing, and we've had to adapt to that. We are adapting to that. You know, this virus was not made by God, but we have been pushed into an adaptation process where we've been forced by circumstances to look within. We've been forced by circumstances to reach out to the people in our lives more, and to our communities, and to support the people in our communities more. The desires that we have for success, money, etc., have had to be questioned. And we've had to come back to the heart. Because we've had to realize that it is through the heart. It is through the creation of a win-win methodology, an energy of supporting all people and dealing with the problems that this planet faces, climate change, ecology, etc., that humanity can actually bond together as a human and soul family and advance. It's all of you who are watching today, who are part of that wave of helping that advancement. And I'm profoundly grateful for all of you and the younger people of this planet who are opening and awakening and activating and stepping forward. Thank you. And Spirit thanks you too. And they have a blessing for all of you, so that you really feel the strength of your own worth, so that you really understand the soul that you truly are, and why you've come here, and why you've been born where you've been born, into the families that you've come into, and how important it is that the light begins to stream out from all the countries of the earth, through the people of the earth, and the young people of the earth, who are beginning to remember, because all of you came to the earth with this more expanded sense of knowing of who you are. And now is the time to truly trust and feel into this knowing.
and to open yourselves to God, to Source, to the infinite oneness of all of creation, to be and do what you have come to be and do, with strength, with heart-centered power. So a blessing. Ikli kasaj la koisania simedia, malili lishtuan semi samalush to cinemedia, alala la sadi, molas the dishtan la codia, alakala saduk shlosisi, mishtos la calasabadia, alakala hujula sanabadi servalada codia, alakala zabadi, moshtes abadis, alagaista the dishtka, ikalakas edishtan the melakasiki. Alabadishtan Melakazes Leshtaka, a Makalisa Dishtan Badia, a Kolakazidi, Mashtan Baladi, Mishtan Badadi, a Kalakalakalisa Dishtan Koyaka, Aka, 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 Aka. The ka is ancient Egyptian word for the physical body, the ka. And our ka, our physical self, is changing to accommodate the energies that are now wanting to come through, as it is meant to be. So thank you. Thank you. And I feel now I talk with Sahil. He's going to moderate questions now. Thank you, Sahil. Thank you so much, Judy. It was simply a mesmerizing session to hear you. I feel everyone can just go back to these sessions of yours and just listen to it when they are meditating. You know, it's like a meditation in itself. You know, it's so much to observe in every word that you say, every word that you emit. It's so much of energy, and it was truly experienced, Judy. It was a blessing, and I'm so grateful that I'm able to moderate this session. I'm already feeling a little different right now. Great. Yeah. Thank you for reaching out to me and inviting me. And Varmashi Patriji, thank you for hosting me in Pyramid Valley so many times. It feels like my soul home, actually, truly. And I was very disappointed not to be able to come when I was in India last year when I fell over and hurt myself. So maybe another time in the future would be wonderful. Thank you. Thank you. So before we move to the questions, we would like Patriji, if you have anything to share and ask Judy, ma'am, then we can start from you, and then we have some questions. Okay. As I see you, there is a violet band across the whole screen. Yes, well, that's not my computer. I've never seen that before. It's energy, Yeah. I think. Yeah. Yes, it's interesting. right above across my head. Yeah. Right from morning I'm here, but I'm only seeing when you have come onto the screen. I know. I've never seen it on my Zoom calls before either. So it's just tonight here. Yes, yes. Something is happening and we are receiving it. Definitely. And something's also, like I said, something's also happening to me beyond, something's really happening to me also during the process. I'm well aware of this. That I'm well aware that I was meant to be speaking to all of you today for a more profound reason than I might understand right now, actually. Because, you know, every time I've been in Pyramid Valley, it's been a massive awakening and opening for me on different levels. And so I feel that this link into Pyramid Valley today is also a big opening for me in terms of my own work in what I'm meant to be doing in the years ahead as well. And that's what I think this band of energy across my body is about. So thank you. It's interesting. Thanks for bringing this band of energy across the screen. You're welcome.
You brought it. I brought it. Yeah. Well, I've done a lot of Zoom calls and I haven't noticed it before. So it's just new today. So we'll see what happens. So Sahil. Yeah. So if anybody wants to ask a question, then please raise your hands in the Zoom app. There's an option to raise your hands in the chat section or in the participant list. If you raise your hands, I'm going to bring you in with that. Okay. As people take time to raise their hands, we have already a question for you. So the question would be, how does the pyramid structure play the role in our human evolution, and do they have any significance with interconnectedness with the intergalactic civilizations? Definitely it does, on both counts. So the pyramid is a metaphysical, to do spirit, metaphysical vehicle of transformation. It's to do with the Trinity. That's why we had peace, love, and joy. Because when we create that pyramidal structure, we actually transform. And so when you sit inside the pyramid to meditate, it is a catalyst for your own awakening and your own opening. It's like an energetic catalyst. When fruits and vegetables are grown underneath the pyramid, I know there's been experiments with that, the plants grow much better. So it is an energetic catalyst for transformation. Perfect. So do we see pyramids in other civilizations also? Do they use the energy of the pyramid in other civilizations? Yes, they do. And when I wrote the book Sunshine Before the Dawn, I saw it, and every word that I wrote was transmitted. I heard it in my head, like someone speaking to me, and I wrote it down like I was taking dictation. And I saw pictures. It was like a movie unfolding in my head. So on Sirius, I saw that the character Isayenya was living in a house which had a pyramidal structure, like a pyramidal, had a normal ground floor and had a pyramid at the top. And there were stairs that went up to the pyramid. And so the pyramid structure was very important because of the energy, you see. And she lived in a place called the Mountains of the Morning Star. And the Mountains of the Morning Star sort of were in this green mist, because the green mist was like very powerful regenerating energy, powerful regenerating mist. We also see, apart from the pyramid, there's the Fibonacci spiral, which is also about creation. And also on Sirius, the Syrian Council, the council chamber of the Syrian Council was like a Fibonacci spiral unfurling front as it started at the top and it went all the way down to the speaker's podium in the bottom. So these are signs of nature. They're signs that they're examples of God's creation, and they come across in nature all the time. The three and the Fibonacci spiral, and we see it in a nautilus shell as well. So I think that answers the question. Right, that's beautiful. Thank you so much. That's a beautiful answer there. So I'll invite Shashank to come on board and ask his question. So he's going to be coming on board and asking his question, which he has said, which he has. Okay. So hello, the session you had right now. Hello. So the session was really very awesome. Completely, I felt the energies you passed on to us. So, like my question is, as we came to know from this session that we have intergalactic beings all around. We can experience them all around. As you said, they share their energies with us. They help us in our spiritual evolvement and many other aspects. So my main question is, what are the key emotions or feelings which we have to overcome to experience their energies completely, to receive their energies completely? So thank you, Sachank.
The key emotions or feelings that we need to overcome are doubt. Doubt, not trusting ourselves when we get inspiration or when we feel something. It's about really following those feelings. When we get words in our head about a book we should read or somewhere we should go or someone we should see, follow those gut feelings. If you feel good about it, if it feels expansive to you, then it's probably your intuition or your higher self or even spirit talking to you. So the key thing that we need to overcome is lack of faith and trust in ourselves as people, in ourselves, and then lack of faith and trust in God to support us, really, spirit to support us. That's what we mostly need to overcome. And there's a whole raft of human emotions like anxiety, doubt, anxiety, fear, but this is really dealt to when we just keep on walking forward. In my Ascension Library, which is ascensionlibrary.org, there's many very powerful tools and programs that Spirit have brought through me in the past 10 years or so, and I've put them in the library because the Ascension Library was set up as a library, really, where you can take a program out, you listen to it online, you don't take it out anywhere, but it's like going into a public library and taking a book. You choose where your heart is wanting you to go. Samita mentioned Ladakh. We have a program there called Search for the Golden Tara. In Search for the Golden Tara, we met Golden Tara's energy today, but the Search for the Golden Tara program is video and it's audio, and it was actually created live with the people that Samita and I took to Ladakh in 2018. So when you go on that virtual journey to Ladakh, and you do go over the high passes, the high mountain passes, it's as if Golden Tara is guiding you forward, and you will go through quite a profound shift when you work with that program. She's helping to usher you into your future, as is Maitreya, future Buddha. It's time, it's their energy, it's their time, it's their essence coming forth now. Not necessarily as at this time as human people in human bodies, but as lights leading us forward. See, hope that helps, Shashank. Yes, thank you so much. I really feel connected to the answer, and this connects me to a line that I have read once in a book, and it goes like, trust and you shall receive what you seek for. Exactly. Trust, and it's in the Bible as well. Jesus Christ said, like there's what you sow, so you reap, which is like the actions that we take, the things that we sow, we reap the good from. Also about, Jesus spoke about the faith of a mustard seed. When you have the faith, like the little grain of a mustard seed, this is what grows, this is what we need. It's that holding on to that faith and trust of ourselves most, of all of us as being, we've had many lifetimes where we've done so much more than we think we can do now. And we just have to reconnect to that knowledge and that ability. And this is what Ascension is actually going to be doing for us in the next 13 years as well. There's so many things that all of you will just spontaneously be able to do in the future that you honestly don't know you can do now. And it will just happen spontaneously. And the catalyst really to make it happen is letting go of doubt and surrendering and stepping forward, allowing this pebble, if you like, to be cast upon the waters, the still waters of our own mind, and opening the heart into love and consciously creating the vibrations of peace and consciously creating the vibrations of joy. Because there's a saying, you may have heard it, fake it until you make it. Fake it until you make it means if you sit every day at the end of your meditation and you consciously
create that magenta pyramid of peace, love, and joy, and you deliberately feel the emotion of joy and create it as strongly as you possibly can, then we will become more of that emotion of joy. See, it's what we follow, the threads that we follow lead us to where we want to go. See, we can be the creators of our own reality because we all have a mind. We all can think. We all can create emotion, energy in motion. And as we create the emotion of energy in motion, so we go towards that vibration in all of our life, in all of our being, in every aspect of who we are. We move towards that vibration of peace, love, and joy. See? Thank you. Thank you so much for this Welcome. beautiful sharing. I'll surely work upon my doubts. Thank you so much. Thank you. All the best to you. All the best to you. Thank you. That's beautiful. Thank you so much, Judy. That's a beautiful answer. Well, I guess doubt is all we have to. So the key is doubt. I mean, you have to let go of doubt. So excellent. We have another question from Geeta Manhali. She asks, how to connect with our spirit guides, how to invite them to help us for our progression. Okay, so let me teach you how to connect with spirit. It's not as difficult as you might think because you're already connected up with spirit, you see. And this is also about going into the stillness of the heart. So if you just shut your eyes, I'll just talk you through a very simple process. Okay. And just put your hands crossed over your heart chakra because the first step is love. The first step is the deliberate creation of the love vibration within the heart. So just feel this love energy within the heart and deliberately create it. And just let this beautiful bubble of love that you're creating within your heart chakra, see it spread out around your body and flow out through your auric field. See it as beautiful rose pink in color, like a beautiful pink bubble of love that you're sitting within. So expand it out about 3 feet around your body, this love vibration. And you'll probably feel your body start to tingle and grow warmer. And that's a sign that you're opening to channel, that you're opening to spirit. Now I want you to imagine that you're reaching up with your mind, just like you're taking your mind up in an elevator. You're reaching up with your mind to the light of spirit. You're reaching up to the spiritual realms, to the light of God, of all that is. So just as you take a breath in, just imagine on every in-breath that you're going up like you're going up in an elevator, and you're going right up to God, right up to spirit, to the spiritual dimensions, more expanded reality for us. So on every breath, imagine that you're going higher and higher to the realm of spirit. And now I want you to imagine, just with your inner sight, that in front of you is a beautiful golden doorway, like a beautiful, huge golden doorway. Behind that door is a more expanded connection with spirit for you. Behind this door is an expanded world of light, of love, of peace, of great blessings for you. And just ask within your heart whether you wish to walk through this golden doorway into the light, into this more expanded light. And if you feel ready, imagine that you're gently opening this door, or it might just swing open automatically, and you're walking into the light. And as you walk through this golden doorway into the light, imagine that you're calling to you the highest level guide who is aligned to you from the light, the highest level spiritual guide who is aligned to you from the light,
to come forward to greet you now. And just let whatever happens, happen. Don't judge the process or yourself. Ask again in your mind for what you want to have happen, which is the heart to greet you. And just wait with your mind like a blank TV screen and feel and see with your inner sight what you feel and see. Trust the process and trust yourself. It is the birthright of every human being to be able to do this with ease. You are worthy of whoever has come to you. That's why they have come to you. And just allow whatever is happening to happen. And ask whoever it is to strengthen the connection between you and the realm of spirit, now and forever. To make it easy for you to connect again and again whenever you choose, for your upliftment and your human and spiritual advancement. Take note of how you feel and how expanded you feel right now. And know that in 3 simple steps, you can come here again. You don't have to create the golden doorway anymore. You just go to the light. And the light will come to you. So thanking Spirit and coming back down into your normal reality now. Bringing with you all that is beneficial and supportive for you from this experience. And great blessings and much love. Amen. Oh, Judy, the answers to your question is only energy, and it is profound. It's profound. I could really feel the connection with the light, and I could feel the being and the tower of light that is connecting with that source of light that we went through after the Golden Gate, and I was feeling a lot of things. It was amazing, and it's such an important. Geeta has already said thank you. She's saying thank you right now for the beautiful session that she's received it and she's felt it herself. And so with that, there's another master called as Naga Srinivasa. He would like to ask that question himself. So I'll just bring him online. Thank you. Thank you. Hello. 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 Namaste. Naga, hi. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. During your session, like I felt terrific energies. It's unbelievable, unbelievable. Like it's unbelievable. Like the energies I felt every moment. Like even still I could feel those energies. Like so, my question was how to get connected to the higher self, or the like the source of energy or the God. I think that was my question.
So it was your question, that question. So how did you get on when we did that process? Did you connect to any specific being or just energy? Just like that. Energy, like a feeling of energy. Only energy. Yes, yes. So it's, you see, when I learned to channel 22 years ago, but we've moved on since then. So it's not necessary to get a name of a being anymore, you see. It's more about just connecting to source, connecting to expanded light. That's all it is really now. And so, and the catalyst and the key and the gateway in is really love, as you discovered. We all discovered. Love is the key in the way. Love is the entry point. And so when we create that feeling of love, which is pretty easy really for all of you, and expand that love around us and then reach up to the light of God, that light of God just automatically comes down. See? So that's all we really have to do. And then we can ask questions and you'll get answers, because you all have beings of light around you to help you get answers. So is that okay, Naga? Thank you. Okay, Naga had another thing that he wanted to ask, is that his body vibrates a lot. Like right now, his body vibrated a lot. So is that happening for a particular reason? It's even happening now. So can we help him in any way to that vibration this? Is just that vibration, Naga, is just an indication that you're very open to the energies and you're very sensitive to the energies. My body vibrates too. It's nothing to do with how spiritual we are. It's to do with how wired up we are and how receptive we are to the energy. But it's nothing to do with ascension or whether we are evolved or not evolved. The feelings that we feel are nothing to do with our spiritual capacity. The feelings that we feel are to do with our soul experience through many, many past lives. And you're very open to the energies because your soul in other lifetimes has been like a sage, like a energy master. See? And you are now, I think. And so you know your body is wired up, very open to the energies. My body does the same. Thank you. That's a very I guess that kind of validates him very well, and I'm sure he'll have his answer now. So now there's another master named Jeevandhar. Jeevandhar, if you are there, if you can on your camera now, and I'm gonna you are now. You can ask. Hello. 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 Namaste. Namaste. Ma'am, after listening you, actually while listening you, I went to deep sleep. First of all, and then after listening you, I'm feeling to go through the book Sunshine Before the Dawn once again. Is it because of your energy or really it is my soul feeling, ma'am? Well, I feel when I wrote Sunshine Before the Dawn, I'm sort of re-editing it at this time because I feel that there's new information that needs to be brought into the book now, because I first wrote the book in 2011 and it was published in 2012. It's just, I've always just put it out through my, you can, it's on my website. I think it's in the library. So it's a book which is a catalyst and a key to awakening. And because we're at this new time of awakening in 2020, it needs to be slightly altered and upgraded because it's designed to be a catalyst to awaken. And so as we're being awakened in a more expanded way now, that the energy behind the words of the book needs to be slightly altered. That's what I'm doing this year, altering it. Thank you. Thank you. And there's also other stories to come. Like there's other stories of Beyond the Beyond. There's other stories of the multigalactic diamond that are to come now. I think there's probably 5 at least books. I just have to write them. Thank you so much.
Thank you so much, madam. And we are really looking forward and extremely excited to receive those books. I mean, I'll be the first person. I'm sure there's so many of us here who would be who would just wait for the book to come and they'll just get their hands on it. So that's amazing. And so now we have, I guess, last two questions. So one important question that I feel is, what is the most significant work that needs to happen in the planet Earth, or that we all need to do for mass contact to become easier? For physical mass contact to become easier? I don't know this myself, so I'm going to ask Spirit to say, okay, what is the thing that we need to do? And they're saying, open the heart, be loving. You know, they won't come near us while there's mass consciousness of people who are scared. So it's have no fear, open the heart, be loving, understand that they're not ETs, that they are us. You know, we are an aspect of them. We are all co-created. We are created in a human image. They're created in the image that's appropriate for their particular environment or their particular planets or star systems or even galaxies. But they are still of God and they are still of the same heart. You know, in Jesus Christ talks about, in my house there are many mansions. And he could be saying, in my house there are many mansions, meaning in the galaxies, there are many different places where there is God created life, Spirit created life, and we look different to them. So we have to get over the feeling of alien, seeing beings from other star systems or other galaxies as aliens. They're not aliens. They're same as us, just in different body configurations. Just like people on the planet have different skin colors, we're the same. And so we need to understand that we are the same as them. And when they feel this opening, this welcoming of the heart, then they will come closer to us. It's not quite the time yet, though. Really. Yes, it is. It is. Thank you so much. I guess that says the most important question, that we have to be more accepting, more loving. And when we are open to receive these beings as friends, as families, then yes, I'm sure they will land better. So it will show up. You see, this is one of the things, this is one of the reasons I was asked to write Sunshine Before the Dawn, is to help people understand the bigger picture of human creation. Yes, and because once we do, we realize that we are not alone here on this planet, and we realize that we are the same as them, just in different types of bodies for the earth bodies. See? Exactly. Yeah, I mean, I guess that's so important. And I guess PSSM and we personally as an Awakened Youth also are taking this up on ourselves, that we inform people about extraterrestrial existence and normalize the awareness about them, because they are simply friends and they're waiting for us to open the doors for them. So yes, thank you so much. Thank you so much, Judy, for being such a beautiful door. I mean, as long as people who are unable to connect, but you are being a door for all of them who's able to receive these wisdoms, these guidance, these perceptions of a higher dimensional reality, and the energies that you share. Everything that word that you said was significant, and every energy that you emit is so tangible. Everyone who listens to your light language will for sure does experience it in the core of their being. So thank you so much, Judy. And I would like to tell everybody that Judy already has a 6-week open free session for people who want to log into her session. She already has a ascensionlibrary.org. This is where it is. People can log into ascensionlibrary.org and join in for the free 6-week course for ascension. So it's going to help her. Yes. It's going to help you guys ascend and the vibrations. And she has a 6 weeks free session. So people, please join in, make the most of this session. And you can also explore her library for free, which she was talking about, the Ascension Library. So guys, log in and make the most of her offering. Yes, thank you. So what you can do with the Breaking Through series, it's a transformation process that after we went into lockdown around the planet, Spirit asked me to bring forward. And it's really important, I feel, and I've been told, to get it out to as many people as possible. And you just register by going to ascensionlibrary.org on the homepage and just put your name and your email in, and you're automatically registered for all of the sessions. And you can catch up. This week is
This coming week is the 3rd session, but you can catch up at any time. It's not time sensitive. This is a process of energy alchemy. It's a bit like we're becoming, it's a bit like the eggs that the butterfly lays on the leaf, and then the caterpillar eating the leaf to get the energy for transformation, for going into the chrysalis, and then going into the chrysalis. And a process of alchemy is going to happen to everybody in the stage of the chrysalis, and then coming out like the butterfly just sitting on the leaf drying its wings and then flying off. So this whole breaking through series, which can be done at any time, not necessarily over the next few weeks, so that though I am taking a weekly program, which is on Thursdays at midday New Zealand time, which is probably quite early in the morning for people in India. But if you register, you can get the replay, even if you can't listen live, and you can just listen to the replay. If you register, you'll go direct to the landing page of this program, this series, so you can read all about it there. There's a lot of information about what it's going to do, how it's going to do it, how it can support you. But it's a process of metamorphosis, really. Complete change. And it's designed for 2020 to get people over the hurdle to really start to run in this ascension process, really, and to step up more quickly and to do what you're here on this planet to do more quickly with greater ease. That's what it's about. Yes, and it's a great gift by Judy Satori. So it's a gift from her because it's free, and so people can register in it. It's a 6-week session, and so people make sure you use it, because I logged in and I tried. So you can also look into the back sessions, even the sessions that happened in the past. You can log into that and you can see those sessions and then catch up with her, because she's doing it every week for the next 6 weeks. So make the most of it, guys. And I just also wanted to say that Samita, who introduced me, she is the person in India who represents the Ascension Library. So if we could just talk to Samita briefly again, she can help people in India. You can bring her in. Yes. She is. She's here. There she is. So. Hi, Judy. Hi, Sahil. Hi. Yes, so Ascension Library, I think Judy has already told most about it, and it is really a gift, and it's so nice that she has come up with this library. As she said, it's like getting the book and we can read anything. So especially we were talking about it, how we can get people from India also to connect to your library, and we had this in the when we did the Golden Tara group, what she was talking about in Ladakh. And that's how we got the idea that let's put all this Golden Tara group at one place so people can access, because we recorded the whole tour. And that's how we thought that this library, if you put it, people can access from wherever they are, and the library can be the thing. So we come up with especially for the India group, and she has so wonderfully accepted that this library has a membership, and if you log in on the links that you will be shown now, and if you log into the links, there is a link to even connect to the India group of people. So the membership is around $33, but Judy has very nice of her that she told me that we'll have a special prize. As I said, we can have a special prize for India to join the membership, which is just 1,700 rupees. So it's really nice that you can connect to the library and access, and you can download, like you can hear, of course, the MP3s of her, all that she has put in the library. It's like amazing. And people who are using already in India, there are many of them already into it. And they are really grateful because it's like a gift from Judy. So please access the library, use it, or any questions you have regarding the library or being the membership. I'm here in India. You can connect with me on WhatsApp. I can explain you how you can get into the membership and help you to connect and be the part of the library there.
So thank you, Judy, all to you. Thank you, Samita. But just want to also say that there's two things. There's the Ascension Library, and it's a membership library, but there's also the Breaking Through series, which is free to everybody. You do not have to be a member of the library to access that. And also in the Ascension Library, there's quite a lot of free material there as well, which you can explore. So the membership library is like an Ascension catalyst. It's to help people get there quicker, basically. That's all. Yeah. Thank you so much, Judy. That is for sure very significant. Thank you, Samita, too. And I'm sure every content in that is significant. And thank you so much, Judy, for this beautiful time. We will for sure make the most of what you have to offer in the website. And we've already experienced the greatest bliss in this session. Thank you. Thank you so much, Judy. Thank you so much for having me. Bye. Thank you. Bye. So thank you, everybody, guys, who've tuned in. We're going to break for lunch. We're going to be breaking for a quick lunch. So I'll see you all guys by 2. So 2 p.m. we're regaining the session. So post lunch, we're on back with you. So till then, see you and have a quick lunch and come back, because we have amazing Odisha masters who are going to be sharing their experience from 2 to 3. So hang on for that. Thank you so much, guys. Everybody. See you. सांस को अपना है ध्यानी बन जाए, 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 सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए, सांस को अपनाए ध्यानी बन जाए। सृष्टि के आरंभ में था लोगोस, महाविस्फोट, प्रारंभिक ओम। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार भौतिक सर्पिल ब्रह्मांड एक अकल्पनीय गर्म और सघन एकल बिंदु से प्रकट हुआ, जो विलक्षण कहलाता है। पिन की नोक से करोड़ों गुना सूक्ष्म। क्यों और कैसे, ये स्पष्ट नहीं। कोई वस्तु जितनी रहस्यमय हो, हमें लगता है हम उसे जान गए हैं। ऐसा सोचा गया कि अंततो गत्वा गुरुत्वाकर्षण या तो विस्तार को धीमा करेगा या ब्रह्मांड के लिए विकट स्थिति पैदा करेगा। लेकिन हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन की छवियों से पता चलता है कि ब्रह्मांड के विस्तार में वास्तव में तेजी आई। जो ये महाविस्फोट से बाहर आया, इसमें तेजी से विस्तार होने लगा। पता नहीं कैसे, पर ब्रह्मांड में भौतिकी के पूर्वानुमान से कहीं अधिक द्रव्यमान है। लापता द्रव्यमान की खोज में भौतिकविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल 4% परमाणु खनिज है, जिसे हम सामान्य खनिज कहते हैं। ब्रह्मांड में 23% अविज्ञ पदार्थ हैं,
और 73% निष्क्रिय ऊर्जा है, जिस पर पहले हमने रिक्त स्थान के रूप में विचार किया था। ये अदृश्य तांत्रिक तंत्र की तरह है जो सभी वस्तुओं को संबद्ध करते हुए समग्र ब्रह्मांड में संचालित होता है। प्राचीन वैदिक शिक्षकों ने सिखाया कि नाद ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। कंपायमान क्षेत्र समस्त मूल आध्यात्मिक अनुभव और वैज्ञानिक अन्वेषण का आधार है। ये ऊर्जा का वही क्षेत्र है जिसे संतों, बुद्धजनों, योगियों, मनीषियों, पादरियों, शमन और मठवासियों ने अपने भीतर खोजकर महसूस किया। इसे संपूर्ण इतिहास में आकाश, प्रारंभिक ओम, इंद्र का रत्नजाल, खगोल का संगीत और न जाने कितने हजारों अन्य नाम दिए गए। ये सभी धर्मों का आधार है। और ये हमारे भीतरी और बाहरी दुनिया की संपर्क कड़ी है। तीसरी सदी में महायान बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड विज्ञान की जो व्याख्या की गई है वो आज की उन्नत भौतिकी से भिन्न नहीं है। इंद्र का रत्नजाल अति प्राचीन वैदिक शिक्षा को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक उपमा है जो ब्रह्मांड की संरचना को स्पष्ट करता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य को जन्म दिया और वायु एवं जल को गतिशील बनाया। मकड़ी के जाल की कल्पना कीजिए जो सभी दिशाओं में फैला होता है। जाला ओस की बूंदों से बना होता है और प्रत्येक बूंद में जल की अन्य सभी बूंदों का प्रतिबिंब होता है और प्रत्येक प्रतिबिंब ओस की बूंद में आप अन्य सभी ओस की बूंदों का प्रतिबिंब देख सकेंगे। उस प्रतिबिंब में इसी प्रकार पूरा जाल अनंत सीमा तक फैला होता है। इंद्र के जाल को स्वलिखित ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां प्रकाश की क्षणिक झलक में भी पूर्णता का एहसास होता है। सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को कभी कभी 20वीं सदी की खोज करने वाले व्यक्ति का श्रेय दिया जाता है। टेस्ला प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की खोज तथा कई अन्य सृजनों के लिए विख्यात थे, जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। प्राचीन वैदिक परंपराओं में अपनी रुचि के कारण टेस्ला पूर्वी और पश्चिमी मॉडल दोनों के माध्यम से विज्ञान को समझने की अद्वितीय स्थिति में था। सभी महान वैज्ञानिकों की तरह टेस्ला ने न केवल बाहरी संसार के रहस्य को गहराई से देखा, बल्कि अपने भीतर की गहराई में भी झांका। प्राचीन योगियों की तरह टेस्ला ने स्वर्गिक अनुभव को वर्णित करने के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया, जो सभी वस्तुओं में प्रसरित है। टेस्ला ने योगी स्वामी विवेकानंद के साथ अध्ययन किया, जिन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा को पश्चिम तक पहुंचाया। वैदिक शिक्षाओं में आकाश स्वयं में शून्य है, वो शून्य जिसमें अन्य तत्व भरे हैं जो कंपन सहित उपस्थित रहते हैं। दोनों अभिन्न है। आकाश यिन है और प्राण यांग। एक आधुनिक संकल्पना जिससे आकाश अथवा प्राथमिक अस्तित्व की अवधारणा का हमें पता चल सकता है, वो है अंश की अद्भुत कल्पना। 1980 के दशक के बाद ही कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति ने प्रकृति के ढांचे की गणितीय कल्पना कर उसे वास्तविक रूप में पहचानने का हमें अवसर दिया। फ्रैक्टल अर्थात अंश शब्द का गठन 1980 में गणितज्ञ बेनॉइट मेंडलब्रॉट ने किया, जब उन्होंने कुछ गणितीय समीकरणों का अध्ययन करने पर पाया कि एक सीमित दायरे में दोहराने पर वो अंतहीन गणितीय अथवा ज्योतिमितीय रूप में बदलती है।
वो सीमित हैं, लेकिन साथ ही अनंत भी। एक अंश एक स्थूल ज्यामितीय आकार है जिसे अनेक हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक लगभग संपूर्ण आकार का संक्षिप्त प्रतिरूप है। एक गुण जिसे समरूपता कहा जाता है। मेंडलब्रॉट के अंश को ईश्वर के अंगूठे की छाप कहा जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमाय स्वाहा। आप प्रकृति की स्वयं निर्मित कलाकृति देख रहे हैं। यदि आप मेंडलब्रॉट की आकृति को एक विशिष्ट तरीके से घुमाएं, तो ये किसी हिंदू देवता अथवा बुद्ध के समान दिखाई देगा। इसे बुद्ध ब्राट आकार नाम दिया गया है। सर्वजनं मे वशमाय स्वाहा। यदि आप किन्हीं प्राचीन कला और स्थापत्य कला के रूप में देखें, आप पाएंगे कि मानवों ने जमाने से सौंदर्य और पवित्रता को फ्रैक्टल पैटर्न के साथ जोड़ा है। अत्यंत जटिल, फिर भी कण कण में उसकी पूर्णता का बीज है। फ्रैक्टल यानी अंशों ने सृष्टि और इसकी संचालन प्रक्रिया पर गणितज्ञों का दृष्टिकोण बदला है। आवर्धन के हर नए स्तर के साथ मूल से भिन्नता उजागर होती है। जब हम फ्रैक्टल के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पारागमन करते हैं, तो सतत परिवर्तन एवं रूपांतरण घटित होता है। ये रूपांतरण ब्रह्मांडीय सर्पिल गति में होता है, दिक्काल के सांचे में सन्निहित बुद्धिमता। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमाय स्वाहा। फ्रैक्टल यानी अंश सहज रूप से अस्त व्यस्त शब्द एवं नियम से भरपूर हैं। हमारे मस्तिष्क किसी आकार को जब पहचानते या परिभाषित करते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर यूं केंद्रित होता है मानो वो कोई वस्तु हो। हम आकारों को देखी गई सुंदरता के अनुरूप ढूंढते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क में इन आकारों को बनाए रखने के क्रम में हमें शेष फ्रैक्टल्स हटा देने चाहिए। फ्रैक्टल्स को चेतनाओं में समाविष्ट करना, इसका संचालन सीमित करना है। ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा तटस्थ, शाश्वत, आयामहीन है। हमारी अपनी रचनात्मकता और आकार की पहचान, क्षमता, सूक्ष्म जगत एवं ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। लहरों का शाश्वत जगत और ठोस वस्तुओं का जगत। चिंतन की स्वाभाविक सीमाओं में अवलोकन करना एक सृजनात्मकता है। हम वर्गीकरण द्वारा नाम देकर चीजों के ठोसपन का भ्रम पैदा करते हैं। दार्शनिक कीरकेगार्ड ने कहा, यदि आप मेरा नाम रखते हैं तो आप मुझे नकारते हैं। मेरा नाम रखकर, वर्गीकरण कर, आप उन सभी अन्य चीजों को नकार देते हैं जिनकी मुझ में होने की संभावना हो सकती है। आप कण को नाम देकर उसकी वस्तु के रूप में व्याख्या कर देते हैं। आप उसके अस्तित्व को परिभाषित कर उसका सृजन कर देते हैं। सृजनात्मकता हमारी सर्वोच्च प्रकृति है। वस्तुओं के सृजन से ऐसी स्थिति बनती है जब चीजों में ठोसपन का भ्रम हो। आइंस्टाइन पहला वैज्ञानिक था जिसने महसूस किया कि जिस अंतरिक्ष को हम शून्य मानते हैं, वो ऐसा है ही नहीं, उसकी विशेषताएं हैं। अंतरिक्ष की प्रकृति अथाह आंतरिक ऊर्जा से भरपूर है। प्रतिष्ठित भौतिक शास्त्री रिचर्ड फैनमैन ने एक बार कहा,
अंतरिक्ष के अकेले क्यूबिक मीटर में इतनी ऊर्जा है कि विश्व के सभी महासागर उबल सकें। गंभीर ध्यानी जानते हैं कि अधिकतम ऊर्जा मौन में है। बुद्ध के पास इस तात्विक सार के लिए एक और शब्द था जिसे उन्होंने कल्प कहा, जो सूक्ष्म कणों या तरंगिकाओं की तरह हैं और प्रति सेकंड खरबों बार उत्पन्न व लुप्त होती हैं। इस अर्थ में वास्तविकता स्वलिखित फिल्म कैमरे में तेजी से गतिशील फ्रेमों की श्रृंखला द्वारा सातत्य का भ्रम पैदा करने के समान है। चेतना के पूर्णतया स्थिर होने पर यह भ्रम समझा जा सकता है, क्योंकि ये चेतना ही है जो भ्रम को संचालित करती है। पूर्व प्राचीन परंपराओं में सदियों से यह समझा गया है कि सब कुछ कंपायमान है। नाद ब्रह्म ब्रह्मांड ध्वनि है। नाद शब्द का अर्थ है ध्वनि या कंपन, और ब्रह्म ईश्वर का नाम है। इसके साथ ही ब्रह्मा ब्रह्मांड या ईश है और ईश सृजक है। कलाकार और कला अभिन्न है। उपनिषदों में, जो कि प्राचीन भारत के प्राचीनतम मानव जाति के अभिलेख हैं, यह कहा गया है, कमल पर बैठे सृजक ब्रह्मा के नेत्र खुलने पर जगत अस्तित्व में आता है। ब्रह्मा के नेत्र मूंदते ही जगत का अस्तित्व मिट जाता है। प्राचीन रहस्यवादियों, योगियों और ऋषियों ने माना कि चेतना का मूल एक आधार है, आक्षिक क्षेत्र अथवा आक्षिक अभिलेख, जहां विगत, वर्तमान और भविष्य की सभी जानकारियां, सभी अनुभव अस्तित्व में हैं और सदा रहती हैं। ये वही क्षेत्र अथवा आव्यूह है जहां से सभी वस्तुएं प्रकट होती हैं, उपपरमाणु अणुओं से लेकर आकाश गंगा, नक्षत्र, सितारे और समस्त जीवन चक्र तक। आप इस
Last 5 seconds. अपने दोनों हाथों को अपने हाथों पे रखें। Hello. Now, very slowly and gradually come back to your normal senses. अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करें और आराम से सेटल हो जाए. We had a really great session, Mahesh भैया. जो म्यूजिक आप बजा रहे थे, we could totally feel vibrating within our body. जो डिजिरिडू आपने बजाया, जो सिंगिंग बॉल आपने बजाया, जो हैप्पी ड्रम आपने बजाया, वो सब कुछ बहुत बेहतरीन था. आई होप हमारे सभी दर्शकों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में. Thank you guys. Thank you so much. बस एक बात बोलना था. एक्चुअली काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से मैं कभी कैसे सीखा नहीं हूँ. उतना कुछ जो मेरा म्यूजिक से मेरे अंदर से आ रहा है. ठीक है, मतलब एक रिदम था मेरे अंदर और यही रिदम सभी लोगों में.
तो एक ट्यून स्टार्ट हो जाती है लाइक, तो हमारे हाथ ऐसे हम कुछ पैर से रखना चालू हो जाते हैं, लाइक हम अपने गर्दन को ऐसे करना चालू कर देते हैं। तो मतलब सभी में रिदम है, अपने रिदम के साथ जुड़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा डीप मेडिटेशन में जाने के लिए। आप एक बार ट्राई कीजिए, और वही एक जो हम बोलते हैं हैप्पीनेस, जॉय, आप इस रिदम के साथ जुड़ जाएंगे तो आप वही हैप्पीनेस और वही जॉय के साथ जुड़ जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है कि हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ, मस्ती के साथ लाइफ को जीना ही है। तो बस रिदम आपको वहां तक भी ले जा सकती है, तो बस अपने रिदम के साथ कनेक्ट रहिए, अपने साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mahesh Bhaiya. Thank you so much for coming here and giving us this blissful experience. मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी बाकी लोगों को भी बहुत मज़ा आया. Thank you so much. So guys, with this now, I would like to call Anubhav Agarwal for the next session. Thank you. Thank you so much. A wonderful sound lead is Mr. Andrew Cohen, all the way from USA. Andrew is an internationally respected spiritual teacher and the founder of Evolutionary Enlightenment. At the age of 16, Andrew experienced a spontaneous revelation of cosmic consciousness, which marked the beginning of his spiritual journey. A fateful meeting with the revered master, Shri Harivansh Lal Ji Punja, in 1986 marked a life-changing awakening in him, and he quickly began developing a unique spiritual teaching. Today, he will be joining us to speak about the evolution of enlightenment. Welcome, Andrew. How are you? Happy to be with you. Hi, Andrew. Hi. A very warm welcome to you, Andrew, for here. And without furthering any delay in this session, I would request you to please take over the session. So I was told that should I give a talk? I thought I was told that someone wanted to speak to me about the evolution of enlightenment. Swamiji, namaskar. Oh, nice. How are you, sir? Nice to see you. Namaste. We are all waiting for you. Thank you. So nice to see you, sir. Mm-hmm. Where are you now? I'm in Bangalore. Okay, sir. In Bangalore city, in our apartment. And where are you? I am in Hyderabad. You're in Hyderabad. Okay. Yeah. Very nice to see you again. Locked up in Hyderabad. The whole world is locked up. But still, we are able to see Andrew. That's very sweet. I was listening to your, a few days ago, I was listening to you speak about the three selves. About the ego and the soul and the cosmic self. Yeah, that is from the book, Going Deeper. I very much appreciated and was agreeing with those distinctions. I took it from the book, Going Deeper. I also thought it must have been from your own direct experience. I don't have any experience like you. I don't believe you. You must believe me, Baba. I'm a good man. You must believe me. I don't think a man with no experience could attract thousands of people like you do. I am a good man. My goodness attracts. But the goodness speaks of higher truth, cosmic truth, absolute truth. That I learn from others like you, and then repeat. Maybe so. I don't know. I listen to all the enlightened masters.
and they absorb some of it and then radiate it, retell it. Yes, sir, we are all waiting for you. So I was told that the host, I was told he wanted to interview me about the subject of the evolution of enlightenment. Please proceed, sir. I was told he had questions, so should I give a talk? Yes, sir, you should give a talk first, then answer the questions. Okay. So we're gonna have a expression of yours in this topic for some time, and then we will have a Q&A after some time, after you're done with the expression. And how long would you like me to talk for? We have the whole slot for 1 hour, so you can use 1 hour as you feel like. Very good. So I was told that one of you was very curious about this notion: is enlightenment evolving? This is the question I heard that somebody had that they wanted me to answer. Is that true? Was that you? That's Anubhav, and he had this question, the one who hosted you today, and he had this question about the absolute. If the absolute is constant, or is there something which is absolute constant, or it is ever evolving? So Anubhav, would you like to put the question again to the master? The question that you always had, in a more brief manner, in a smaller manner. So I would like Anubhav to get the answers on. Sure. While I was meditating, so this was the question that came in my mind, and the question was such that we are in a constantly evolving world, and we are learning from our experiences. Since we keep learning, our consciousness keeps expanding. Because we are a part of the cosmic consciousness, now if we are expanding constantly, is the cosmic consciousness also expanding, or is the cosmic consciousness something which is absolute? Well, I think it's a very good question. It's a fantastic question. It's a profound question, and I'm going to do my best to try and answer. It's a very complicated question. So, first of all, we want to speak about what is the nature of the absolute, what's the nature of God, what's the nature of the absolute. So the absolute is both fully self-actualized, fully complete, fully realized on one hand. Brahman is absolutely complete, self-realized and self-actualized. And he is also in a state of becoming. He's also evolving. So God, or the absolute, or Brahman, is both fully realized, fully complete in all aspects. Cannot possibly be improved. It is a state of absolute perfection. Brahman is a state of absolute perfection that cannot be improved upon. This is the realization of the greatest realizers and the greatest masters, on one hand. I'm getting some background voices in my ears. Good. So Brahman is absolutely and fully realized already, always already full and complete. The nature of Brahman, or the nature of the absolute, is always already full and complete, always already perfect. So that which is perfect can't be improved upon. So this is the nature of the absolute. This is the nature of Brahman. This is the nature of God, on one hand. But on the other hand, Brahman, or the absolute, which is inherently always full and perfect, is also in a state of becoming, is also evolving, and is also in a state of ever-completing complexification. So I think one way to understand this is that the universe, the manifest universe that we are all part and parcel of, the universe, the world of time and space and life and mind, emerged or came out of or emerged from primordial emptiness, primordial nothingness, primordial voidness. So voidness or nothingness or emptiness exists prior to time, prior to space, and prior to mind. So before there was time, before there was space, before there was mind, there was nothing whatsoever.
So this absolute nothingness, this primordial emptiness, is the ground of all of reality, is the substratum or the ground of, is the ground of the totality of reality. This voidness, this emptiness, this nothingness is the womb. You could call it the womb of creation. The womb of everything that exists is this timeless, formless, beginningless and endless emptiness, nothingness and voidness. So this voidness that exists before time is the realm of reality in which we discover eternity, in which we discover the infinite, in which we discover the nature of the absolute. And also in this timeless, formless emptiness that's beginningless and endless, we discover a mystery, a mind transcending mystery that reveals to us a truth that transcends the mind, that the mind can't possibly understand. But the recognition of that truth is the source of enlightenment, or the mind of enlightenment, the mind of God, the mind of the Buddha. This is the truth that the Buddha realized. This is the truth that all the greatest realizers have realized. And it's a mystery that reveals itself in its own time when the mind becomes completely empty and the mind becomes completely quiet. So when the mind disappears, the world disappears. And when the world disappears, we become aware of this timeless, formless, beginningless and endless empty void. And this voidness is empty of all things that can be seen or imagined. But inherent in this emptiness, in this nothingness, in this voidness, is a mind transcending, thought transcending mystery that reveals the ultimate truth about the nature of reality to us, which anybody can grasp and understand if their mind becomes quiet enough. So the nature of the absolute, the nature of God, the nature of Brahman, reveals itself to us when we are able to penetrate into this mystery, when we can penetrate very deeply into this mystery, when our own mind has become quiet and when our own mind has become completely empty, then this mind transcending mystery begins to speak to us in its own language. And we begin to understand things that the mind can never understand. We begin to understand the nature of being. So when you begin to understand the nature of being, all doubt is removed. When we begin to understand the nature of being or isness, being or isness or non-duality are all the same thing. Being or isness or non-duality are all the same thing. It's a vibration. It's not a thought, it's a vibration. It's a transcendental knowledge. The transcendental knowledge of an ultimate mystery that the mind can never understand. So in isness or being, there's knowing. And it's not knowing of this or that, it's knowing of a mystery. But when that mystery begins to reveal itself to us, when it begins to speak to us in its own mysterious language, we experience metaphysical or existential relief from fear, relief from doubt, and relief from suffering. So it seems that out of this nothingness, out of this voidness, out of this emptiness, out of this nothingness, a great explosion occurred. And this explosion apparently occurred about 13.7 or 14 billion years ago. There was a great leap from nothing to something, from formlessness to form, from being to becoming. And this leap from nothing to something, from being to becoming, from formlessness to form, was the beginning of time, the beginning of the creative process, and the beginning of the evolutionary process. So in order to understand your question, we begin to understand that the evolving universe, the universe is not a static place. The universe is in a state of becoming, is in a state of constant creative evolutionary becoming. The universe is in a state of growth and infinite complexification and infinite emergence. So out of timeless, formless, beginningless, and endless emptiness or nothingness, a creative process was unleashed.
And a creative process began about 14 billion years ago, and this creative process is still continuing. And in the midst of this creative process, human beings emerged. Apparently, only about 200,000 years ago, human beings emerged. Out of this mysterious creative process, human beings emerged. And what made human beings so extraordinary was that human beings are the only forms of life that have this miraculous capacity for self-reflective awareness. In other words, in human consciousness exists the ability to be aware of awareness. Dogs and cats and birds and snakes have the experience of consciousness, but they don't have the capacity to be aware of consciousness. Human beings are the only forms of life that have the capacity to be aware of awareness or to be aware of consciousness. And this is what makes human beings so unique in the evolution of the universe and the evolution of life. So what's most miraculous about this evolutionary process is that in human consciousness and in human cognition, there's this miraculous capacity for self-reflective awareness, or for consciousness to become aware of itself. And within this miraculous capacity of self-reflective awareness, or consciousness being aware of itself, the creative process that we've been speaking about, the creative process of infinite becoming, simultaneously gains the capacity to awaken to itself or to become aware of itself. So in human beings, evolution, or the creative process that is the universe in a state of constant becoming, becomes self-aware, which means that in human beings alone, in the unique consciousness of human beings, the universe gains the capacity to become self-conscious or to become aware of itself. So when the universe becomes self-aware, becomes aware of itself, in the self-reflective awareness of highly evolved human beings, the creative process becomes conscious, becomes self-aware. So human beings have the unique capacity to realize, awaken to, and become aware of the ground of being, the timeless, formless, beginningless, and endless womb of creation. So it's a place where time doesn't exist, and where space doesn't exist, and where mind doesn't exist, where no thing exists except a primordial transcendental mystery. So human beings have the capacity to realize this ultimate mystery. And this is what, for example, the Buddha realized, this ultimate mystery. And human beings also have this simultaneously the miraculous capacity to become aware of the creative process, the evolutionary impulse, of the energy and intelligence that created the universe and that's creating the universe. And to be aware that out of this timeless and formless emptiness, this nothingness, this isness, this beingness, this creative unfolding is emerging and has been emerging. So the answer to your question is that the universe is both being, immortal and absolute, and becoming. The universe is still, the absolute is stillness and emptiness and timeless and formless, and free from becoming, and is becoming at the same time. Both are happening simultaneously, and both are the expression of Brahman, or the expression of God. Are you still there, Mr. Arubav? Is he still there, or should I continue to speak? Yeah, hi. I'm still here, and I'm trying to absorb the wisdom that you've been sharing. So my answer to your question is that the universe is both the absolute, the nature of Brahman, the nature of God, is both timeless and formless and beginningless and endless, transcendental nothingness, that is absolutely static and unmoving, and untouched by anything that ever happens in time. That is the absolute. And the absolute also gave rise to the creative process. This timeless, formless emptiness, which is the womb of creation, gave rise to time and space and form and life and mind, and all this, and the creative process that is the evolving universe, that is the manifest universe, is emerging
from this timeless, formless emptiness, and both are Brahman. One is unmanifest Brahman, and the other is manifest Brahman, but both are Brahman. But manifest Brahman and unmanifest Brahman is a paradox. Because the unmanifest Brahman is uncreated, unborn, unbecome, timeless, formless, and empty. And manifest Brahman is the entire evolving universe that's in a state of becoming. The universe is on a journey of becoming. It's a journey of endless complexification and higher development. And because first there was light, then there was energy and matter, and from energy and matter there emerged life, and from life, mind. And this whole miraculous process is continuing, and it's going to continue eternally into the unimaginable future. So Brahman is both being and becoming. Brahman is both timeless, formless, beginningless, and endless, infinite, inconceivable, transcendental being. That's when in India when we chant Om, is the vibration of being, of timeless, formless. The freedom of being is Om. But Om, or timeless, formless freedom of being, is only half the picture of Brahman. Brahman also took a leap, and Brahman took form as the whole evolving universe. And you and I are part of Brahman in a state of evolution. And the most, as I was trying to explain a few minutes ago, the most extraordinary aspect of Brahman, who's in a state of becoming, is this miraculous capacity that's emerged in human beings, this capacity of self-reflective awareness. Because in human consciousness and human cognition, awareness gains the capacity to be aware of itself. Consciousness gains the capacity to be aware of itself. So God, or Brahman, can know himself and herself through human consciousness in a way he can't through the consciousness of a snake or a dog or a horse or a tree or an ecosystem. So in human consciousness, Brahman gains the capacity for self-knowing and self-cognition in a way that's not possible in other forms of life, which makes human beings which makes our presence in this universe so profound and so extraordinary. Andrew, that raises one more question in my mind. And so if we're saying that the cosmic consciousness is in a constant state of becoming, and it is also being, so in human, it's both at rest and in a state of becoming at the same time. Yes, it's a paradox. Yes. On one side, there's no movement. There's infinite rest and infinite being. That's always perfect. Yeah. On one side. Yeah. And the other side is this infinite state of becoming and infinite creativity. Right. So in humans, we are all aware that in humans, there are some people who are more evolved than some other people. So is it that in the entire human race, we are seeing all the stages of evolution right now at this particular moment of time? No, we're not seeing all the stages of evolution. We're seeing evolution at a particular stage. We can see where we've come from. Where we can see where we've come from. But where we're going in the future is as yet unimaginable. Because there are higher states of consciousness and higher states of cognition and higher levels of complexity that we are not yet at the stage that we can actually even able to conceive of them. They will come into being in the future, but they don't exist yet. So from where we are now, we can see where we've come from, and we can glimpse the immediate future, but we don't know where we're going to be in 1,000 years, and we don't know where we're going to be in 10,000 years, and we don't know where we're going to be in 100,000 years or 200,000 years or 1,000,000 years. It's inconceivable. How consciousness is going to evolve and what consciousness is going to be capable of in its infinite creativity 1,000,000 years from now is beyond imagination. So the universe is in a state of constant innovation, and human beings are playing a very significant role in the capacity of consciousness to innovate and to create itself anew. Human beings are the only forms of life that are capable of innovation and creativity. Human beings are programmed to give rise to that which is new
that which has never existed before. So human beings are driven to give rise to that which is new, that which has never existed before. And all truly great geniuses, whether it's in art or music or science or politics, all geniuses give rise to something that never existed before. Great geniuses give rise to that which never existed before. So there's a force in the universe called the evolutionary impulse. The evolutionary impulse is the force of creativity in the universe that when it awakens to itself in human beings, those human beings become geniuses. And those geniuses give rise to something that never existed before. So the universe is trying to create itself anew through us. It's not Andrew or Patriji as individuals. It's the energy and intelligence that created the universe is trying to create itself anew at a higher and more complex level through creative geniuses. So that's why when Einstein realized his theory of relativity, the world was never the same, because this was a new idea. It was a new concept. It was a new way to understand things. When the Buddha had his enlightenment, his understanding of enlightenment was a revolution at that time. So he had a new unprecedented insight about the nature of moksha, about the nature of consciousness. So what's very fascinating is to see that the universe is constantly trying to reinvent itself at higher and more complex levels, and higher and more complex levels, and higher and more complex levels. But to do that, it needs to do it through the forms of life that it created. So you are and I am not merely the human beings we appear to be, but we are really the energy and intelligence that created the universe, realizing itself or awakening to itself through the human beings that we appear to be. But our human beingness, our maleness, our femaleness, and our relative egos are just vehicles. They're not really who we are, and they're not the reason that we're here. I believe, it's my understanding, that we're here to co-create the universe with the energy and intelligence that created in the first place that's creating it right now. But in order to do that, we have to become enlightened or evolutionarily enlightened. We have to realize who we really are. I'm not merely Andrew Cohen, who was born in New York City in 1955, but I'm the energy and intelligence that created the universe and that's creating the universe right now, awakening to itself through the body, mind, and personality of Andrew Cohen, who happened to be born in New York City in 1955, and who realized when he met his guru that his body, mind, and personality was just a vehicle, and it's not really who he is. It's a vehicle for what? Vehicle for consciousness. The body, the mind, and the personality is a vehicle through which consciousness can evolve. And so when I realize my body, my mind, and my personality is not who I am, but is merely a vehicle through which the energy and intelligence that created the universe can consciously create itself, we discover a completely different reason to exist, a completely different reason to be ourselves. And I think that's the whole point of moksha, the whole point of enlightenment. Thank you so much, Andrew. Thank you. That was like I've been looking for this answer for quite a long time, and you've answered the question very well. So we want to. Along this question, we want to understand that the universe is evolving, and the universe has an outside and an inside. And the outside of the universe is matter and energy, and the inside of the universe is consciousness and subjectivity. So the universe is evolving inwardly and outwardly. And when human beings experience the spiritual impulse, when we just experience the spiritual impulse as the desire to become more conscious, when I awaken to a spiritual impulse and I feel a desire to become more conscious, what's really happening is the universe is trying to become more conscious through me. I think, my ego thinks this is my spiritual desire, my spiritual need, but in fact, it's really the universe trying to evolve through me, or the energy and intelligence that created the universe trying to evolve through me. Right. Andrew, we have a couple of more questions for you. Yeah. So what is your thought on the current pandemic that is going on around the world, that is the coronavirus? And how do you think that this lockdown will help in human evolution? Well, I hope. I have no big
big theories about this particular pandemic. I have no big theories about it, but I hope this will help us all to become more human, more loving, more compassionate, more caring about the environment. I hope this will help us to become less materialistic, less egotistical, more interested in inner development, being more interested in the source of the soul. And I hope this will help us to find deeper values and a deeper source of meaning in our own existence, because so many people are just we're running after security, running after materialistic desires, running after money, running after possessions. And hopefully this lockdown will help people to slow down and maybe to think more deeply about the big fundamental spiritual questions, which is, who am I and why do I exist? And it's my belief, if we don't know who we are and we don't know why we exist, how can we possibly know what we should do with the life we've been given? If we don't know who we are, we don't know why we exist, how can we possibly know what to do with the life we've been given? Right. So many people are just running around like programmed. I need to get a good education so I can get a good job, so I can get married, so I can have kids. So they can get a good education, so they can get a job, so they can get married, so they can have kids. And it goes on forever. So you say, very good, but why? Why do I want to do that? Yeah. Why do I want to do that? Who am I and why am I here? Why does the universe exist? What's the purpose of life? What's the purpose of existence? Why do I exist? Am I here just to make money and make babies and to eat good food? Or is there a deeper purpose in the fact that I exist? So I hope this crisis will help more people to think more deeply about the most important questions, which is, who am I and why am I here? As a matter of fact, Andrew, in fact, all of us who are a part of PSSM or who have been, attracted to meditation and who have been meditating for quite some time now, these are the pertinent questions which have arisen in people's minds. This is what has attracted all of us into meditation. What is the purpose of life and why are we here? And what happens after we die? These are the most pertinent questions that have been constantly, cropping up in all our minds. And meditation has helped us in, finding out the answers to these questions. And I'm sure as a collective consciousness, humanity is waking up to this pertinent question. We hope so. Yes. Because sometimes fear and great suffering can help people to wake up, but not always. Sometimes when the fear and the suffering goes away, people go back to sleep again. So sometimes fear and suffering can wake people up in a dramatic way. And let's hope that this terrible crisis will help more and more people to wake up and to want to wake up. Right. So Andrew, having said that, I would request you to please share your experience when you were all 16 years of age and you had that revelation of cosmic consciousness, and also your experience when you met your guru, Shri Harivansh Lalji Punja, and what changed in you, what was that awakening in you which sparked you onto this spiritual journey. We would all love to hear that. When I was at the big conference you guys had in Hyderabad, I spoke for a long time about that, so I'll just speak very briefly, that when I was 16, I had an experience where I suddenly realized, it just happened suddenly for no reason, I don't know the reason, but I realized that the whole universe was a cosmic being. The universe was a conscious, self-aware, intelligent being. And this cosmic being was experienced as a kind of impersonal, absolute love that was physically unbearable to experience because it was so intense. I realized when I was experiencing this love and that there was no such thing as death. Death has no meaning. There is no death and there is no birth. And I realized that all points in space are exactly the same place, that from the perspective of this cosmic being, which is the nature of everything. This cosmic being is the nature of everything. There's no here and there's no there. There's no here and there's no there.
everywhere we go, everywhere we possibly can go in time and space, we're always there or here. There's nowhere to go. There's nowhere to go, and there's nowhere to go because we're always absolutely at the center of the universe. So this being was self-aware, and this being was a kind of love that is crushes the mind into out of existence. The mind disappears, and all there is love. And this is what I realized, and it was so powerful. It changed absolutely everything for me. That's when I decided I wanted to become an enlightened person. And when I met my guru, he reintroduced me to this same truth. It was he sitting in his presence. He reintroduced me to this absolute truth, to this ultimate truth about the nature of reality. He reawakened me to what I had already realized when I was a young man. And through his grace, that realization became stabilized in my soul. And that was about 35 years ago. Wow. That must have been one good experience, I'm sure. Well, when this happens to you, you can't go back to who you thought you were. Once you wake up to who you really are, you can't go back anymore. There's no way back to the dream of being a unique individual, because now you realize I am the creator. I'm the energy and intelligence that created the universe and is creating the universe. This is mine. I am everyone, and I am the whole universe. And this is all my responsibility, because there's only one creator. In Vedanta, we constantly hear that the ultimate truth is that there's only one. Vedanta tells us that there is only one. And when we understand that there is only one truth, and that there's only one I in the whole universe, in the entire universe, there's only one subject. And I am that. I am that one without a second, which also means I am the only one that could have chosen to create this whole universe, because there isn't anybody else except me. So when I realize I'm the only one who could have chosen to give rise to this entire creative process, this reorganizes one's thinking in a way that is very profound, because one realizes this is my creation. And therefore this is an enormous responsibility to create the world in the most beautiful possible way I could imagine. And so when this happens to somebody, they give their life to creating heaven on earth. And all great realizers want to give rise to utopia. Or they want the perfection that they've realized in their own experience of higher states of consciousness. They want that vision to become actualized in a very loving, kind, and compassionate and infinitely creative human world. And all great realizers want to create utopia on earth, want to create heaven on earth. And that's why they help people to do that in the same way, for example, Patriji's helped people with meditation, so people can have that same vision and want to help co-create utopia, co-create heaven on earth with him. And then together, all of the practitioners gather together with their master in order to give rise to this unique spiritual vision of utopia or heaven. And that's what the disciples of Jesus did with Jesus. That's what the disciples of the Buddha did with the Buddha. And that's what the disciples of Patriji are doing with him. It happens as a universal manifest expression of enlightenment, that the realizer transmits his vision of utopia, his experience of utopia, to his disciples. And the disciples realize that vision, and then they want to give rise to that vision with their bodies and their minds and their souls. And together, the Sangha, or the students of the great realizer, together they give rise to a vision of utopia in the kind of relationships they have with each other. The world becomes changed through the kind of relationships realized beings have with each other. And it's a vision of utopia, it's a vision of heaven on earth. And the spiritual vision, the vision that we experience in consciousness is a vision of perfection. It's an inner vision of perfection. And when we've experienced the inner vision of perfection, we want to do nothing but manifest that perfection in the world that we give rise to. So inwardly we experience perfection, and outwardly we want to manifest the perfection that we see within us. And when we can do that with other people, when people together try and create an expression of the perfection that they see inwardly in the world around them, they want heaven to exist on earth. And all the greatest realizers have had a vision
utopia, a vision of perfection, a vision of heaven. And I think ultimately that's what we're here to do, is to make Earth into a true paradise. Andrew, since we're talking about evolution, there have been in the past a couple of masters who have gained that power, that spiritual power, but somehow, somewhere, that spiritual power has been misused. So, is this also a part of the evolution of enlightenment? Well, I think that all human beings are inherently imperfect. So human beings we can realize perfection. We can experience perfection. We can realize perfection. But inherent in being human is imperfection, because all human beings are works in progress. So this is also true for human beings who have powerful spiritual experiences. We can have powerful spiritual experiences and still be imperfect human beings. And imperfect human beings are capable of making mistakes. It's also part of being human. Perfection is a state of consciousness. There's no human being that is perfect. Consciousness is perfect. And the realization of in the realization of consciousness, we can experience perfection. But human beings by nature are inherently imperfect. So we're allowed to make mistakes. It's not a matter of being allowed to make mistakes or not. Making mistakes is part of the learning process. It's how we learn, it's how we grow. And ideally, if we make mistakes and learn from them, then it's all for the good. But if we look at the evolution of human consciousness, we can see that there's been a learning process for the last 5,000 years, 4,000 years, 3,000 years, 2,000 years, 1,000 years, 500 years. The last 300 years, 200 years, 100 years, there's been a human consciousness has been in a process of evolution, development, and growth through different stages of consciousness, different stages of growth. And those different stages of consciousness and stages of growth are able to happen because there is an individual and collective learning process. And the collective learning process is the evolution of consciousness. And this is also learning how to live the human experience in a better way, in a way that is more wise, that is more compassionate, that is more loving, that's more inclusive. So I think the human experience is a learning process, and making mistakes is part of how human beings learn. And sometimes we make terrible mistakes. Sometimes as human beings, we make absolutely terrible mistakes. But we even need to see the worst mistakes, ideally, hopefully, as part of a larger process of learning. For example, the atomic bomb was dropped only twice. And so it seems that what we realized when those bombs were dropped was an energy that was so powerful. It seems that, looks like, we realized that this is a power that's too much. We don't ever want to do that again. And so far, knock on wood, we haven't, which is a miracle. It's a miracle. It's a miracle. We haven't destroyed we haven't destroyed ourselves. This is a great miracle, and you can see it's a great accomplishment. So we could see that as a part of learning. And in human beings, there's less war on the planet now than there's ever been. There's less fighting, there's less war, there's less genocide. For example, there's less killing, there's less murder, there's less violence than there ever has been. There's a great psychologist from Harvard University called Steven Pinker, who wrote a book about the evolution of violence. And he's done a lot of research, and this whole book is called The Better Angels of Our Nature, and The Better Angels of Our Nature. He explains how, and through many statistics, that violence has been decreasing as human consciousness has been evolving. And so it's a lot of human beings don't realize that, but the human world that we live in is a safer place to be in relationship to violence than it's ever been. The world is more peaceful than it's ever been, in spite of the fact that we're aware that there's so many problems that we're confronting with the environmental catastrophe that we're facing, and obviously this global pandemic, and there's so much inequality and there's so many problems. In spite of that, in so many ways, human life is so much better and so much more fair and so much more ethical than it's ever been.
So as a species, we are learning and we're evolving in spite of the fact that there's still many problems that we have to solve. Thank you so much. Thank you so much, Andrew, for your wonderful wisdom. And it was an absolute pleasure having you. And we would like to close the session here, where we have other masters waiting. And thank you so much, so much. And it was a pleasure listening to you. And you answered so many of our questions. And I'm sure there's a lot more that we can get from you. And I hope that we can get in touch with you some other time, and you can answer to many more of our questions. Thank you. It's been an honor, and thank you, Patrici. Thank you, sir. Abhinav, you have been great. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Keep it up. Keep up your spirit like this. Thank you, sir. Thank you. It's an honor very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. It's a paradox. Totally. It's all about a paradox. A huge paradox. Huge. Yeah. Mind-boggling paradox. Good. It is so, because we can't understand it. We can see it, but we'll never understand it. We can only recognize it. We can feel that it is a paradox. Yes. Indeed. Indeed. Thank you, sir. Thank you. It is our honor. Thank you. Honor is mine. Thank you so much. Thank you so much, Andrew. Thank you so much, Patriji. Now I would like to request Shrinita Auntie to please take over and invite the next master for our next session. नमस्ते सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते पत्री सर नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम मैं नमस्कार। उड़ीसा से कटक से श्रीनीता बोल रही हूँ एंड मैं धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस यात्रा में हूँ ऑन दिस ब्यूटिफुल फोरम टुडे आई टेक द अपॉर्चुनिटी एंड द प्लेजर टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू a beautiful and a very great master, शुभांगी वशिष्ठ, जो कि गुड़गांव से है और हमारे साथ आज इस वंडरफुल जर्नी में जुड़ रही हैं। शुभांगी की स्पिरिचुअल जर्नी काफी कम उम्र से स्टार्ट हो गई थी और आज वो अपने हस्बैंड के साथ, हितेश के साथ ध्यान प्रचार कर रही है, ध्यान सिखा रही है, मेडिटेशन सिखा रही है, and she is spreading love. She has been helping people in their journey with the help of many spiritual tools and workshops. Workshops वो लोग 1-to-1 भी लेते हैं और ग्रुप्स में भी लेते हैं. These workshop includes past life regressions, inner child healing, breath work, family constellation, and many more. Today, I am honored that on this beautiful forum, I am inviting her with a beautiful topic that she has chosen to speak about, awakening of the divine feminine, जो कि इस साल पत्री जी का मूल मंत्र है. I think she is an angel, she is a beautiful angel, and she is the right candidate to talk about feminism and the divinity in it. So I now, without wasting any further more time, I invite Shubhangi to take over. नमस्ते सभी को और थैंक यू श्रीनिता जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. थैंक यू वेरी मच. और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली अवेकन यूथ उड़ीसा
टीम का और पीएमसी हिंदी चैनल का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे बोलने के लिए, अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन. So thank you everyone. Thank you Patri sir. Thank you all the viewers. Thank you for joining. तो आज का टॉपिक है अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन. और ये टॉपिक का जैसे कि नाम है कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, तो कहीं ना कहीं जो मेल्स हैं, जो आदमी है, उनको लग रहा होगा कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन है तो ये तो महिला से जुड़ा हुआ है या ये महिलाओं के अंदर अवेकनिंग के लिए है. तो मैं उन सब मेल्स को कहना चाहूंगी कि अगर उनके अंदर ये क्वेश्चन है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है तो प्लीज आप बने रहे मेरे साथ कुछ और समय के लिए, जिससे आपको समझ आ पाएगा कि ये डिवाइन फेमिनाइन है क्या, और इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि इनकी क्वालिटीज के बारे में. तो डिवाइन फेमिनाइन हम पता करते हैं कि ये है क्या. ये जो डेफिनेशन है डिवाइन फेमिनाइन को और गहरा समझते हैं. अगर हम ब्रह्मांड को देखें, अपने आसपास के यूनिवर्स को देखें, तो हम देखेंगे कि हर चीज, अगर वो इंसान है या पौधा है, जानवर है, हर चीज के अंदर दो तत्व है. और वो दो तत्व जो है वो है पुरुषा और दूसरा तत्व है प्रकृति. और इसके भिन्न भिन्न नाम भी हैं इस पुरुषा और प्रकृति के. और इस पुरुषा और प्रकृति को हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन भी कह सकते हैं. इसको हम शिव और शक्ति भी कह सकते हैं. इसको हम यिंग और यांग भी कह सकते हैं. इसको हम आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड भी कह सकते हैं. तो इस चीज के बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, पर है तत्व यही दो जो हम सब के अंदर है. और ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही ये फेमिनाइन होगा और आदमियों में नहीं होगा. तो ये दोनों तत्व हम दोनों जेंडर के अंदर है, चाहे वो महिला है चाहे वो आदमी है. तो हम ये देखेंगे कि अगर ये है डिवाइन फेमिनाइन, कि ये एक तत्व है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है हमारे अंदर. तो हम आगे जानेंगे कि इस समय में, जैसे अभी श्रीनिता जी ने शेयर किया कि सर बोल रहे हैं कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, ये उनका भी एजेंडा है. इस ईयर को हम बोल रहे हैं कि सबके अंदर अवेकनिंग होनी चाहिए डिवाइन फेमिनाइन की. तो ये समय हमें क्या बता रहा है, इससे हमें सीखना है कि ये डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है इस चीज का. तो अगर हम देखें कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ अभी का समय नहीं है. अगर हम और पिछले अपने कहीं युगाज में 4000 साल पीछे, 5000 साल पीछे भी जाएं, तो जब जब धरती पर घृणा, डिस्ट्रक्शन, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत, ग्रीडी, जब ये चीजें हमारे धरती पर बढ़ने लग जाती हैं, तो हमें डिवाइन फेमिनाइन की जरूरत पड़ती है. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो पूरा आउटसाइड है, बाहर की तरफ है. और हम अपने अंदर से, अपने भीतर के साथ जुड़ने से दूर होते जा रहे हैं. और हमारा फोकस बाहरी दुनिया पर है कि हम कंपटीशन में है, कि हमें भागना है, हमें ग्रोथ चाहिए. तो हम यूज कर रहे हैं चीजों को, लोगों को, अपने आसपास की चीजों को. तो हम क्या करें, ये सारी जो क्वालिटीज है, जो ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हो रहा है कि हम नष्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये बैलेंस है, प्रकृति का जो नियम है वो है बैलेंस पे, संतुलन पे. तो जब तक ये संतुलन जब भी बिगड़ता है, जब भी एक्सेस ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी रहती है, तो हमें फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करना पड़ता है. तो अगर हम युगास की बात करें, तो एक प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर है जो लिटरेचर पर लिखते हैं, और उनका नाम है जोसेफ कैम्बल. उन्होंने बहुत अच्छा कहा है. उन्होंने कहा है, द फंक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल सिंबल इज टू गिव यू a sense of aha. Yes,
I know what it is myself. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? वो बोल रहे हैं कि जो भी ये पुराण है, जो माइथोलॉजी, जो ये युगाज में हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप उसको रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, कोई भी माइथोलॉजी को ले लीजिए, ये पुराण हमें बता रहे हैं उस एसेंस को कि हम क्या हैं, और वो हमें जीने का एक चीज, जीना कैसे जीना है हमें, वो सिखाते हैं हमें। तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है। माइथोलॉजी हम लेते हैं कि तो ये हिस्ट्री है, ये हमें बताती है, बट ये हिस्ट्री ना रहकर ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब कि एक रूपक है जो हमें मदद करता है जीने के लिए, कि हमें कैसे जीना है इसको, और कैसे बैलेंस, कैसे संतुलन बनाना है। तो हमें दोनों ही एनर्जी को संतुलन में रखना है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो। बस इस समय जैसे कि हमारा सारा फोकस हेड पर है, तो हेड क्या है? हमारा मैस्कुलिन है, बट एक्सेस ऑफ हेड, हम हमेशा सिर्फ लॉजिक माइंड से सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने में सोच रहे हैं, बट वो कैसी ग्रोथ है? कि किसी को मार कर, किसी से हम घृणा कर कर, मदर अर्थ को, प्रकृति का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये डिसरिस्पेक्ट, जब हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अवेकनिंग, जो ये डिवाइन फेमिनाइन है, उसका जन्म होता है। चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो। तो ये है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और इसीलिए ये जो समय है, और इस समय क्यों, जब ये लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज थी, हम उससे दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो गए हैं, क्योंकि वो तत्व हमारे ही भीतर है, वो प्रकृति का तत्व हमारे ही भीतर है, हम उससे दूर हो चुके हैं। तो क्या है ऐसी क्वालिटीज जो हमें डिवाइन फेमिनाइन के करीब लेकर जाती हैं? तो हम उन क्वालिटीज को समझेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, कि जिससे ये अवेकन हो, दोबारा से हम अपने प्रकृति के तत्व से मिल पाए, जुड़ पाए। तो पहली क्या विशेषता है इस डिवाइन फेमिनाइन की? तो डिवाइन फेमिनाइन की पहली विशेषता है टू नर्चर। नर्चर कह सकते हैं हम, पोषण करना, पोषण करने की। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से सोचते हैं कि एक गार्डनर है, तो वो एक बीज लगाता है। तो जब वो धरती में बीज लगाता है तो उसका पोषण करता है। वो कैसे पोषण करता है? उसको रोज पानी देता है, उसको खाद देता है, उसको जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सब उसको देता है, सनलाइट देता है, सब कुछ दे रहा है। और जो आसपास के वीड भी होते हैं, जो जरूरी नहीं है उस पौधे की ग्रोथ के लिए, उसको भी उखाड़ता है। तो कोई भी नर्चरेंस, ये क्वालिटी, कोई भी मनुष्य, चाहे वो कोई भी गार्डनर बन सकता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्त्री हो। तो ये जो क्वालिटी है नर्चरेंस की, ये हमें अपने अंदर अवेकन करनी है। आप किसी भी चीज को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उसको नर्चर करना है। और नर्चर कैसे करना है? ग्रो, आप एक कॉन्शियसनेस को अपनी ग्रो कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो कैसे करना है? जैसे कि हम बोलते हैं कि ध्यान एक बीज है, हमें उसको नर्चर करना, उस ध्यान को नर्चर करना है। वो कैसे करेंगे हम? जो सर ने इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमें बताई हैं, स्वाध्याय और सज्जन संगति, कि हमें स्वाध्याय कर कर, हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहकर, और दूसरा हमें राइट बुक्स पढ़ के। तो जो पौधा लगा है ध्यान का, ये और बढ़ता है, और फूलता है, और खिलता है। तो ये है नर्चरेंस। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हम लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं होती। हमने उस ग्रोथ को मार दिया, खत्म कर दिया है, क्योंकि अपना लॉजिक लगाया है। तो उसके लिए हमें नर्चरेंस की विशेषता चाहिए अपने अंदर, तो हम नर्चर करें इस चीज को। तो ये है पहली विशेषता। तो दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी है टू फील, जो कि बहुत
मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट विशेषता है एक फेमिनाइन एनर्जी की, टू फील, महसूस करना। तो मैं ये कहूँगी कि ये ना ही फीमेल और मेल की क्वालिटी है, ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है। एक ह्यूमन की क्वालिटी है टू फील, उसको महसूस करने की क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल कंडीशनिंग, अगर आप बचपन में, अगर आप आदमी हैं, अगर आप तो आप देखेंगे आप पुरुष हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बचपन में कहा गया है कि रोते क्यों हो, लड़की हो क्या जो रो रहे हो। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम फील करते हैं उसको दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, खासकर आदमियों के साथ। और अगर हम यही महिलाओं के बारे में बात करें तो उसी का ही वो उल्टा है। और महिलाओं को हम कहते हैं कि वो वीक है अगर वो रोती हैं, अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं, बोलती हैं। तो दोनों में ही डिसबैलेंस हो रहा है इस समय। जो ये समय है, हमारा सारा फोकस, अगर आप फीमेल्स का भी देखें, आउटर वर्ल्ड पर है। वो compete कर रही है इस पुरुषा से। तो हमें compete नहीं करना, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को। क्योंकि हम compete उससे करते हैं जो हम एक जैसे हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है, तो हम compete कर ही नहीं सकते। हम यूनिक है, हमें उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है इन दोनों एनर्जीज के साथ। तो हम फील करें, जो हमें महसूस होता है उसको पूरी तरह से देखें कि आपके दिल में कहीं ना कहीं हमने ये अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। हम समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, महसूस ही ना करना चाहते कि इसके अंदर है क्या। तो हम, जैसे अगर मैं अपने काम के बारे में बताऊं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो हम बहुत, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लोगों के लिए होता है कि हाउ आर यू फीलिंग, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, हमारे पास 2-3 आंसर मिलते हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। पहला कि अच्छा लग रहा है, दूसरा ये होता है कि ठीक नहीं लग रहा, तीसरा होता है कुछ हो रहा है पर पता नहीं है कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अपनी ही फीलिंग से दूर हो चुके हैं। हमें अपने ही बारे में नहीं पता कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमने उस चीज को नम कर दिया है। और हम नम कैसे करते हैं? बहुत सारी चीजों से नम कर देते हैं। कोई नम करता है कि कोई ट्रॉमा है, कोई लाइफ में, हम उस चैप्टर को देखना ही नहीं चाहते कि ये क्यों आया है इस लाइफ में, मुझे उसको देखना ही नहीं है, पर वो फिर भी आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको भूत के जैसे आपके पीछे पड़ा हुआ है। वो क्यों है? कहीं ना कहीं हम वो देखना नहीं चाहते, उस दर्द को फील नहीं करना चाहते। तो हम उसको नम कैसे करते हैं? हम शॉपिंग चले जाते हैं, हम अल्कोहल लेने लग जाते हैं, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं हम मंच करते हैं, हम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो भी जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसको महसूस नहीं करना, इसको दबाना है। तो सेकंड क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनाइन की है, टू फील, महसूस करें। इट्स ओके टू फील योर फीलिंग्स। कि हम अपने आप को कहें, दिल पे हाथ रखें और कहें कि कोई बात नहीं, अगर ये टाइम है तो ये कुछ आया है मुझे सिखाने के लिए, इट्स ओके एंड वी कैन मूव ऑन। और ये टेम्परेरी फेस है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये दूसरी क्वालिटी है। तो हम तीसरी क्वालिटी पे जाते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की? वो है टू अंडरस्टैंड, समझने की। तो इस समझने को और गहरा समझते हैं। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे आप इसको और गहरा समझ पाएंगे। कि एक इंसान होता है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता होता है। तो वो एक गांव में रह रहा होता है और उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो दूसरे गांव में रह रहा होता है। तो उससे मिलने के लिए घर से निकलता है, तो वो थोड़ा सा परेशान सा होता है जब वो घर से निकलता है। तो वो पैदल जा रहा होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो गर्मी बहुत हो जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो बड़ा इरिटेट फील करता है। वो बोलता है कि इतनी धूप हो रही है, ऊपर से क्या है, मैं कब पहुंचूंगा, इतना धूप, पसीना हो रहा है, बहुत इरिटेट हो जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर मैं पेड़ की छांव में थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। तो वो पेड़ की छांव में लेट जाता है, थोड़ा आराम करता है। तो जैसे ही वो लेटता है तो ऐसे सर अपना रखता है, तो ऊपर पेड़ को देखता है, उस पेड़ को, जिस पेड़ की छांव में वो बैठा होता है। तो वहां देखता है वो जो पेड़ होता है वो एक वॉलनट का पेड़ होता है।
वॉलनट बोलते हैं जिसको अखरोट का, कि अखरोट का पेड़ होता है। तो वो लेटता है, वो देखते है कि अच्छा अखरोट का पेड़ है, तो वो अपना टर्न लेता है, दूसरी तरफ देखता है और वहां देखता है, उसकी जब नजर पड़ती है तो वहां पे एक बुश लगी होती है, एक बेल लगी होती है पंपकिन की, एक कद्दू की, बहुत बड़े कद्दू की। तो वो बोलता है कि वैसे ही वो इतना इरिटेट होता है और वो बोलता है भगवान को कि क्या भगवान, क्या आपने ये दुनिया सृष्टि क्या बनाई है, इतना छोटा सा फल इतने बड़े पेड़ पर, और इतना बड़ा फल जो है वो एक धरती पर छू रहा है, एक बुश पे छू रहा है, ये कैसी सृष्टि है, ये क्या है। तो जैसे ही वो बोलता है, उसके धपाक से वॉलनट सिर पर गिरता है, और जब वो वॉलनट सिर पर गिरता है, वो रियलाइज करता है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही सृष्टि बनाई है, थैंक गॉड यहाँ पे पंपकिन नहीं था, तो मैं मर ही जाता। तो फ्रेंड्स, ये एक डीप मैसेज बता रही है नेचर की विजडम का, कि हम इसको समझें कि जो ये टाइम है, अगर हम इस टाइम, इस लॉकडाउन को समझे, तो एक डीपर मीनिंग हमें वो बता रहा है जो हमें समझने की जरूरत है। कि अगर ये कोरोना वायरस आया तो क्यों आया, क्या रीजन था, क्या ऐसा हमने गलत किया या संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये आया, और हमें ये क्या सिखाने आया है। जैसे हम बोले लॉकडाउन, लॉक ताला, कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर एक ताला बंद कर दिया है, हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते, और उस लॉक को हमें डाउन करना है, उस लॉक को हमें खोलना है। तो ये है लॉकडाउन, एक बिगर पिक्चर समझाता है आपको ये क्वालिटी अंडरस्टैंड की, कि ये हो रहा है। अगर लाइफ में आपके कोई इंसान है तो वो ऐसा है, तो वो क्यों है, आप उसको समझ पाए अच्छे से। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप ग्रॉस लेवल पे मत देखिए, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा है और इससे मुझे क्या सीखना है। सीख बहुत जरूरी है, लेसन बहुत जरूरी है इस चीज का, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो इस टाइम में अंडरस्टैंड करें इस लॉकडाउन को, इस कोरोना वायरस को। और कोरोना वायरस हमें बता रहा है करुणा, कि कोरोना से ही हम कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो ये डिवाइन मैसेज है कि अपने भीतर लॉक को खोलने का, इनसाइड वर्ल्ड में जाने का, कि हम सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक रूपक है कि हमें अपने भीतर जाना है। तो ये है नेक्स्ट क्वालिटी डिवाइन फेमिनाइन की। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वालिटी जो है डिवाइन फेमिनाइन की, टू एम्पैथाइज। तो सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो सिंपैथी क्या है? सिंपैथी होती है कि जैसे कि एग्जाम्पल से बताओ कि अगर मेरी कोई फ्रेंड आई और वो मेरे से बात कर रही है और वो बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, यू नो, मेरे हस्बैंड बहुत ट्रबल करते हैं, मेरे बॉस भी बहुत ट्रबल करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं भी कहूँ हाँ बिल्कुल सही स्टोरी है, इनफैक्ट सारे मर्द ही ऐसे होते हैं। मैंने ऐसे भी बोला कि मर्द ही ऐसे होते हैं कि आदमी लोग समझते ही नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक्ड रहते। तो क्या हुआ, ये सिंपैथी हुई, मैंने भी अपनी वाइब्रेशन नीचे कर ली और मैं उसके साथ आ गई जहां पे वो थी। तो मैंने उसको रिलीफ नहीं किया, मैं उसके साथ हो गई। तो ये क्या सिंपैथी है, कि मैं उसके पेन में मैंने अपना पेन भी ऐड करके, मैंने उसमें फ्यूल डाल के उसके साथ हो गई। बट एम्पैथी हमें क्या सिखाता है? एम्पैथी सिखाता है कि आपने समझा कि वो पेन में है, बट आपको उसको अपनी पीस में पुल करना है। आपको उसको अपनी वाइब्रेशन, जो हाई वाइब्रेशन में आप हो, आपको उसको वहां से उठाना है और उसको रियलाइज कराना है कि यू आर योर ओन क्रिएटर, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जब आप उसको ये समझाएंगे कि तुम ध्यान करो, अपने भीतर जाओ और इन सवालों को पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये है एम्पैथी होना, कि आप एम्पैथी कर रहे हो उसके साथ, कि आप उसको समझा रहे हो, उसका ट्रू एसेंस बता रहे हो कि वो क्या है, उसकी पावर को जान पा रहे हो। तो ये है एम्पैथी करना। और एम्पैथी सिर्फ हम इंसानों के साथ ना रखें। अगर आप सोच रहे हैं, आप ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस एम्पैथी को ग्रो करिए। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, हर एक जीव जंतु के साथ,
हर एक पौधे के साथ आपको एम्पैथी होनी चाहिए। आप फील कीजिए कि वो कैसा फील करेगा। आप इस लॉकडाउन में बोल रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि ये कब खत्म होगा, मतलब इट इज वेरी अनोइंग एंड इट इज एक्सटेंडिंग, और बहुत ज्यादा मुझे बॉदर कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो अगर मैं कहूँ, आप अगर अब इस समय इस लॉकडाउन को आप ये समझ रहे हैं कि इतना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपको, आप कभी पोल्ट्री फार्म में गए हैं जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है? आई टेल यू, अगर आप वहां चले गए और आपने वो देखा, तो आपको ये लॉकडाउन से प्यार हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि लॉकडाउन किसको कहते हैं। वो 2x2 जो केज होता है, उसमें 2 मुर्गियों को रखते हैं और सारी जिंदगी वो डार्कनेस में बिताते हैं। देयर इज नो लाइट एट ऑल फ्रेंड्स। एक रोशनी की किरण नहीं होती। वो पूरी लाइफ उस डार्कनेस में, उस 2x2 केज में बिता देती है जस्ट टू गिव एग्स। इतनी गर्मी होती है वहां पर कि उस एग को भरने के लिए वो गर्मी पैदा करते हैं कि जिससे रोशनी ना आए, अंधेरा करके रखते हैं। तो आप फील कर पाएंगे, एम्पैथी कर पाएंगे उन जानवरों से। और आवाजें जो आती है, जब मैं छोटी थी तो मैं वहां से निकली थी और जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, मुझे लग रहा था कि वो रो रही हैं, कि उनको वहां से बाहर निकालो, उनको बंद करके रखा हुआ है। और उनको खाने को क्या दिया जाता है? सीमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हमें कैल्शियम मिल रहा है वहां से किसी को पेन देकर। ये एम्पैथी, ये फीलिंग, ये जो इनर हमारी डिवाइन क्वालिटीज है, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम कैसे उस प्लेट में रखे उस जानवर को खा सकते हैं? क्योंकि आई थिंक खा सकते होंगे वो लोग जो अपने फीलिंग से दूर है, जो अपने आप से दूर है, तो वो दूसरों को कैसे समझेंगे? और अगर वो अंडा देना जब बंद कर देती है, उनको बुचर शॉप्स पे दे दिया जाता है कि कट करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये लॉकडाउन तो बहुत अच्छी चीज है, जो हमें एटलीस्ट एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, फोन है, खाने को मिल रहा है। आप उन जानवरों का सोचिए जिनको उस जेल में, उस 2x2 जेल में बंद करके रखा है फ्रेंड्स। तो प्लीज समझिए, एम्पैथी कीजिए, एम्पैथी को ग्रो कीजिए, हर एक लेवल पे ग्रो कीजिए। प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सब मनुष्य के साथ, जो भी इस धरती पर आया है, सबका राइट है जीने का। हम उस राइट को नहीं ले सकते। तो ये है क्वालिटीज डिवाइन फेमिनाइन की, टू अंडरस्टैंड, टू एम्पैथी। और ना एक और है जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, वो है इंट्यूटिवनेस। कि बहुत ज्यादा हम इंट्यूटिवनेस अपने, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कि हमें फीलिंग होती है। अभी हम जो एक्सपीरियंसेस भी लोगों के सुने हैं, हमने सुबह से जो ध्यान कर रहे हैं, उनकी जो इंट्यूटिवनेस, कि उनको आया अंदर से कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मेडिटेशन अटेंड करना है, और उनको वो सच की अनुभूति हुई। तो ये इंट्यूटिवनेस आपको गाइड करती है आपके सॉल्यूशन की तरफ, कि आप क्या करना चाहते हो। आप दिल की एक आवाज है जो सुनने को मिलती है। तो इस इंट्यूटिवनेस को सप्रेस ना करें, इस दिल की आवाज को सुने और उस पर काम करें। और ये दिल की आवाज हम सबसे बेस्ट कब सुन सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने साथ समय कुछ बिताते हैं शांति में, तो हम इस आवाज को और क्लियरली सुन पाते हैं दोस्तों। तो इसको और बढ़ाइए, ध्यान करिए और इस इंट्यूटिवनेस को सुनिए। ये गाइड है, ये एक ब्रेथ जो आपका गुरु है, वैसे ही ये गाइड करती है आपके भीतर ही सारे उत्तर छुपे हैं। तो इस इंट्यूटिवनेस को और यूज कीजिए और ग्रो करिए। और नेक्स्ट है हमारी टू बी क्रिएटिव, कि क्रिएटिव होना। कि अगर आप देखिए कि कोई भी जो भी इस
टाइम पर हम कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये डिजिटल ध्यान यज्ञ कितनी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। जैसे सुबह सर ने कहा कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठा और मैं कितने हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी बात हो पा रही है, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। ये एक क्रिएटिव पार्ट निकल कर आया है। तो ऐसे क्रिएटिविटी को अपने अंदर और क्रिएट कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए। आपको गाना गाना पसंद है, गाइए। नाचना पसंद है, नाचना करिए। खाना पकाना पसंद है, खाना पकाइए। और आप सर को भी देखेंगे, सर कितने क्रिएटिव हैं। सर वही ध्यान को समझाते हैं, बट आप जब भी मैं उनकी क्लास में जाती हूँ, मैं एक नया साइंटिफिक वे से, एक सिंपल वे से ध्यान को और समझ पाती हूँ। वो सिंपल एक ध्यान ही है कि आंखें बंद करो, 3 लॉक्स लगाओ, बट कितने डिफरेंट क्रिएटिव वे से सर समझाते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी, ये ही डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, क्रिएट करना, हमेशा रचना करना कुछ नई चीज की। जैसे सर कुक करते हैं, ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है, कुक करना, बिकॉज वो नर्चर कर रहे हैं। तो ये करिए, क्रिएटिव कुछ क्रिएट करिए अपने लाइफ में, कोई थॉट नया क्रिएट करिए, कुछ ये समय आपको दिया गया है, इसको यूटिलाइज कीजिए और क्रिएट करिए कुछ अपने लिए। और लास्ट जो क्वालिटी आती है वो है टू लव। और ये जो वर्ड है दोस्तों, ये जो प्यार शब्द है, हम इसको बहुत ग्रॉस लेवल पे समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया हाँ आई लव माई सेल्फ और मैं आपसे प्यार करता हूँ तो बस प्यार हो गया। नहीं, प्यार वो एक एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है जिंदगी को देखने की एक डिवाइन की आंखों से। और उस आंख से देखने के लिए हमें इन 2 आंखों की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो एक आंख है, यही उसके लिए काफी है, जो हमारा तीसरा नेत्र। क्योंकि डिवाइन की क्या क्वालिटी है, वो निर्गुण है। ना ही वो तामस है, ना ही वो रजस है, वो निर्गुण है, जिसमें वो अटैच्ड ही नहीं है। जैसे हो वो वैसे ही आपको प्यार करता है। आप कोई भी मास्टर ले लीजिए, बुद्धा ले लीजिए, आप उंगली मारकर अगर हम स्टोरी सुने तो बुद्धा ने कितने प्यार से उसको भी प्यार से ही देखा, चाहे वो क्रिमिनल था, चाहे वो डाकू था, पर कितने प्यार से। तो यही डिवाइन लव है कि जब आप किसी को देखें विदाउट जजिंग दैट पर्सन, एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज इट इज, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ उसको एक्सेप्ट करिए। ये है प्यार। कि अगर आप काली देखें, दुर्गा देखें, कोई भी गॉडेस देखें, वो हर एक अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करती है, चाहे वो सिनर हो चाहे वो सेंट हो, दोनों उसके लिए इक्वल है। माँ के लिए दोनों ही प्यारे हैं बच्चे। तो ये प्यार है, ये क्वालिटीज है डिवाइन फेमिनाइन की। और अगर हम गॉड और गॉडेसेस की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटीज अगर आप देखें, अगर आप जीसस देखें, अगर आप कृष्णा देखें, राम देखें, आप बुद्धा देखें, आपके आप इन सारी क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई हैं फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ आप ये सारी क्वालिटीज आप उनके अंदर देख सकते हैं। योगानंदा जी देखें, महाअवतार बाबा जी देखें, माँ तारा देखे, काली देखे, सबके अंदर ये क्वालिटीज है फ्रेंड्स। चाहे वो गॉड है, शिवा है, कोई भी है, चाहे। और लाइव एग्जांपल हमारे सामने पत्री सर है कि मैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज देखती हूँ कि नर्चर करने की, कि वो कैसे इस ध्यान को नर्चर करें। इंट्यूटिवनेस उनके अंदर आया इस पिरामिड को एक साथ एक्सपेरिमेंट करने का, और उन्होंने वो पिरामिड्स बनाना शुरू करे क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और वो अंडरस्टैंड करते हैं बिग पिक्चर को। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे उनके अंदर लाइव दिखाई देती हैं। तो इन सब क्वालिटीज को हम एम्ब्रेस करें। जब हम ये एम्ब्रेस करते हैं तो हम बैलेंस क्रिएट करते हैं प्रकृति में, और बैलेंस पे ही सिस्टम थ्राइव करता है फ्रेंड्स। वो ही एक बैलेंस है जब ये सिस्टम उस पे थ्राइव करता है। तो इस बैलेंस को और इस सारी क्वालिटीज को, तो मेरे लिए व्यूवर्स के लिए ये क्वेश्चन है कि आप अपने आप को समझिए, जानिए कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करते हैं अपने अंदर, या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं।
मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने भीतर इस क्वेश्चन को पूछिए। और क्या आप तैयार हैं इन क्वालिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए, इसको अपनाने के लिए? तो अगर आप तैयार हैं तो हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं इन क्वालिटीज के ऊपर, इनको एम्ब्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें क्वालिटीज बताना चाह रही हैं हमें अपने आप के लिए। तो इस समय आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ सकते हैं और अपने उंगलियों के बीच में उंगलियों को डालिए और लेग्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या चौकड़ी मार सकते हैं और आंखें बंद कर दीजिए। बहुत आराम से सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करें और 3 गहरे लंबे श्वास लीजिए। नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण के लिए पॉज करें और उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरा लंबा सांस नाक के द्वारा लेते हुए मुंह से उसे बाहर निकालें और एकदम रिलैक्स हो जाए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे हैं, आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक कण एकदम शांत होता जा रहा है। सर से लेकर पांव की उंगलियां एकदम शांत, कोई भी तनाव नहीं। और इस समय अपने आप को विजुअलाइज करें एक प्रकृति के खूबसूरत दृश्य में। उस दृश्य में सब कुछ है जो आपको पसंद है। हर एक फूल, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, जो भी आपको पसंद है वो सब इस जगह पर है। और जैसे जैसे आप इस प्रकृति के दृश्य को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप और शांत होते जा रहे हैं। और इस समय आप जैसे जैसे इस प्रकृति के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, आपको दूर कहीं एक पेड़ दिखाई दे रहा है, खूब बहुत बड़ा पेड़। और आप उस पेड़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि कोई वहां आपका इंतजार कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में या फॉर्मलेस में, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज, डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है। वो कोई भी गॉड, गॉडेसेस, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, शिवा, बुद्धा, कोई भी हो सकता है।
आप उस पेड़ की तरफ जाएं और जैसे जैसे आप उस पेड़ के पास पहुंच रहे हैं, आप उस ऊर्जा का, उस शक्ति का आभामंडल महसूस कर पा रहे हैं। और पास, बिल्कुल पास जाते हुए उस पेड़ के नीचे उस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से उसे महसूस करें। कैसा लग रहा है आपको जब वो आप उस ऊर्जा के सामने है? उस ऊर्जा को आप नमन कर सकते हैं। पूरी तरह से इस ऊर्जा को महसूस करें। कैसा दिखती है ये ऊर्जा? कोई फॉर्म है या फॉर्मलेस है? कोई कलर है? पूरी तरह से महसूस करें। जैसे जैसे आप इसको, उस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र, आपका अनाहता चक्र और खुलता जा रहा है। आप और एक्सपैंड होते जा रहे हैं। और ये ऊर्जा एक माँ के रूप में जैसे एक बच्चे को सहलाती है, वो अपना हाथ आपके अनाहत चक्र पर रख रही है और बहुत प्यार से उसे सहला रही है। पूरी तरह से महसूस करें इस स्पर्श को, इस ऊर्जा को, इस प्यार को जो इस समय आप इससे रिसीव कर रहे हैं। और इन सारी क्वालिटीज को एम्ब्रेस कीजिए। नर्चरेंस की, फीलिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एम्पैथी की, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, लव की एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए पूरी तरह। और ये ऊर्जा, अगर आपको कोई संदेश या आपका कोई सवाल है, आप इससे पूछ सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं उस विजडम को, उस मैसेज को। पूरी तरह महसूस कीजिए। ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। इस प्यार को पूरी तरह महसूस करते हुए। और जो ये ऊर्जा है, जो ये शक्ति है, अब ये एक ऊर्जा के रूप में बदलती हुई आपके अनाहत चक्र में जा रही है, एक लाइट के रूप में, एक रोशनी के रूप में। और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके दिल में जगह बना रही है, आप पूरी तरह फील करें, इसे जगह दें अपने दिल में और अपने आप को कहें, आई एक्सेप्ट माई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और एक गहरा लंबा सांस ले। इस ऊर्जा को एंकर करें अपने अंदर, अपने हर एक कण, हर एक शरीर के पार्ट में। बहुत अच्छे। इस ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए, थैंक यू। Thank you for guiding me. Thank you for awakening the divine feminine in me.
और एक गहरा लंबा सांस लेते हुए हम इस क्षण में वापस आते हुए धीरे धीरे उस प्रकृति के दृश्य से इस जगह आते हुए जिस जगह आप बैठे हुए हैं, और अपने साथ ये सारी क्वालिटीज, ये इनसाइट्स लेकर आते हुए, वो मैसेज लेकर आते हुए जो भी आपको डिवाइन से मिला है, पूरी तरह से उसको वापस लेकर आते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को महसूस कीजिए और उस एनर्जी को अपने दिल में आप हाथ रख सकते हैं और एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें, फीलिंग रिफ्रेश्ड, कंप्लीट, होल। जब भी आप तैयार हो, आप बहुत जेंटली अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू एवरीवन। अगर आप ध्यान से वापस आ गए हैं तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो हम बाद में उसका जवाब दे सकते हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी स्टोरी से मैं एंड करना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। तो एक लड़की होती है, एक 10-11 साल की लड़की होती है और उसकी मदर होती है, और उसकी मदर घर का काम करती होती है। पैसा कमाने के लिए वो घरों में सफाई वगैरह करती होती है। तो वो अपनी बेटी को पालन करती होती है। तो वो बेटी रोज अपनी माँ को देखती है कि वो रोज जाती है, उसकी मदर हर दूसरों के घर में और सफाई करती है। बट जैसे जैसे होता है तो वो थोड़े टाइम बाद उसकी माँ जो होती है वो एक दिन बीमार पड़ जाती है और उनको बुखार आ जाता है, तो वो नहीं काम पे जा पाती। तो उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं काम पे चली जाऊंगी, 2 दिन की बात है और फिर मैं आप चले जाना। तो उसकी माँ कहती है ठीक है कि तुम चले जाओ 3 दिन काम करने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है कि वाह मैं सफाई करूंगी। तो वो जाती है तो उसकी माँ की और सहेलियां होती हैं उसके साथ जो उसको लेके जा रही होती है। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, तो सबसे पूछती होती है कि सफाई कैसे करते हैं, आप मुझे बताओ क्या क्या करना होता है, कोई चीज डालनी होती है। तो ये सब उसके सवाल रहते होते हैं। तो एक दिन निकल जाता है। तो एक जो औरत होती है, एक और उसकी औरत, वो रोज इसको देखती होती है कि ये रोज क्वेश्चन पूछती है कि कैसे सफाई करनी है, कहाँ सफाई करनी चाहिए, क्या चीज यूज करनी चाहिए। तो दूसरा जब दिन आता है तब वो फिर से वही सवाल लोगों से पूछ रही होती है। तो वो जो लेडी उसको देख रही होती है तो वो लेडी उसको खींचती है और उसको बोलती है कि तुम ना लाइट साफ किया करो। तो वो कहती है कि क्या? वो कहती है आज तुम लाइट को साफ किया करो, क्योंकि कोई लाइट नहीं साफ करता, सिर्फ झाड़ू कटका करते हैं। लाइट को कोई भी साफ नहीं करता है। जो झूमर होते हैं, जो लाइट्स होती है, तो तुम उनको साफ करके देखना। तो कहती ठीक है करूंगी। तो वो जाती है काम के लिए और वो वही करती है, लाइट साफ करती है, झूमर साफ करती है। तो जो उस घर की मालकिन होती है तो वो बोलती है वाह, मतलब घर एकदम ही चेंज हो गया लगता है, मतलब इतना रोशनी घर में दिखती है। तो वो बहुत खुश होती है, वो कहती है कि वाह कितना साफ घर, तुमने क्या किया ऐसा कि घर इतना सुंदर तुमने बना दिया। तो वो बहुत खुश होती है और उसका पति भी आता है शाम को और वो कहते हैं कि वाह घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इस लड़की को तुम रोज बुलाना और इसी से ही काम कराना और इसको एक्स्ट्रा पैसे भी देना कि इसने कितनी अच्छी सफाई करी है। तो वो बड़ी खुश होती है और वो चली जाती है फ्रेंड्स। और ये ऐसी कहानी है, बट इसमें एक डीप मीनिंग छुपा है दोस्तों, कि क्या हम अपने भीतर की रोशनी को कभी साफ करते हैं, जो हमेशा हमारे अंदर है। हम उस रोशनी को साफ करना भूल जाते हैं और वो रोशनी को साफ करना ही हमारा मकसद है। अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, जो ये लाइट है, जो ये प्रकृति तत्व हमारे अंदर है, हमें इसे जगाए रखना है। और कैसे जगाए रखते हैं? ध्यान से, वेजिटेरियनिज्म से, ये सारे जो स्वाध्याय से, संगत सज्जन सांगति से, ये सारी, इस लाइट को आप डिम मत होने दीजिए। इस लाइट को हमेशा क्लीन करते रहिए, साफ करते रहिए। अगर आप इस लाइट को शाइन करेंगे
तो आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे उनकी लाइट को शाइन करने में. तो स्प्रेड दिस लाइट एंड लेट दिस लाइट शाइन इन व्हाटएवर वे. उसको शाइन करने दीजिए और इस रोशनी को हमेशा स्प्रेड करते रहिए. तो यही मेरा आज, मैं इसी पे ही आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आप सेशन को मैंने बहुत एंजॉय किया, और पत्री सर, सब लोग टीम का, कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू व्यूअर्स. थैंक यू बाबा. थैंक यू शुभांगी जी. थैंक यू सर. थैंक यू. It's always a wonderful thing to hear you. Thank you, sir. Sir, same here. Every day we are listening you, and the concept that you are sharing is amazing, sir. Absolutely amazing. आपका वो हस्बैंड किधर है क्या उधर? हाँ जी सर, हितेश यही है सर. एक मिनट. हेलो सर. क्या हो रहा है बाबा? गुड सर. बहुत अच्छा सर, सब कुछ. हाँ, सब बहुत बढ़िया सर. अरे वाह. पूरा लॉकडाउन में है? लॉकडाउन में है सर. एंजॉय हो रहा है लॉकडाउन में. लॉकडाउन ही नहीं लग रहा सर. लॉक को खोल रहे हैं हम. लॉकडाउन जो है, अपने भीतर के लॉक को खोल रहे हैं, घेर रहे हैं. लॉक ओपन हो रहा है. ओपन हो रहा है. अनलॉकिंग हो रहा है. अनलॉकिंग हो रहा है. वेरी गुड. आपका बुक कैसा चल रहा है सुंदरम? बुक बहुत अच्छा चल रहा है सर. बुक का सुंदरम ने अभी मैसेजेस भी दिए हैं कोरोना वायरस पे, तो हमने वो मैसेजेस भी शेयर करे हैं. तो बुक भी बहुत अच्छी चली. कल हमारा स्वाध्याय. क्या है मैसेज कोरोना के ऊपर? सर, सुंदरम के 3 मैसेजेस हैं बेसिकली कोरोना वायरस पे. उन्होंने पहले ये चीज समझाई है कि अगर आप C फॉर कोरोना देखते हैं तो C फॉर कंपैशन है, C फॉर को एग्जिस्टेंस है, C फॉर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है. तो आप इन 3 चीजों पे काम करेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली उस पे काम होता है. अच्छा. और दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि ये जो कलेक्टिव समय है हमारे लिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी कॉन्शियसनेस को ठीक करने का समय है. कि आपको देखना है कि आप किन लोगों के साथ इस समय बंधित हैं, with whom are you locked down, और किस सिचुएशन में लॉकडाउन है, क्या काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको इस समय दे दिया गया है. तो इस चीज को हमें अपने लिए यूटिलाइज करना है, अपनी कामिक लर्निंग्स को जीने के लिए और उनसे सीखने के लिए, रादर देन कि हम फिर से ब्लेम और गिल्ट के जोन में जाएं. और तीसरा उनका कहना है कि दैट यस, दिस इज द टाइम व्हेन द डिवाइन फेमिनाइन इज राइजिंग, बिकॉज somewhere we've moved away from our heart and we have lost our heart. So corona virus से उनका कहना है कि have heart for this, because existence में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सुंदर नहीं है. So if something exists, that is beautiful for sure. So you need to learn to see the meaning behind this corona, because this time in the in the centuries it would never come. So it is the most creative and the beneficial time for the whole entire planet. And so we are moving to a new earth with this, and the vibrations are quite visible. So यही उनका मैसेज है सर. Right, oh Baba. Yes. And because of this corona, we are happily sitting at home, Baba. Yes, sir. Yes. And talking to each other. Absolutely. Absolutely. From Hyderabad to Delhi. देखो. Yes, sir. जो पहले हम नहीं किए थे. जी जी जी. अब सब लोग सड़क के ऊपर थे पहला, अब तो घरों में है. जी बिल्कुल बिल्कुल. And you got any other book in your offering? Sir, right now I'm working on these messages, but yes, there is one more book that I'm working on. So so that is what I mean. उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर yes, I'm working on it. समय लगना चाहिए बाबा, नहीं तो ठीक प्रोडक्ट नहीं आएगी. जी जी सर. और शुभांगी जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा. थैंक यू सर. आप इतना समय निकाल कर दिए नहीं सभी लोगों के लिए. Privilege, sir. Divine feminine is the most important thing. We have entered the divine feminine age. Yes, sir. Absolutely. From the stupid masculine से निकल कर. All males are stupid, Shubhangi.
excepting your husband. No. Every man who is meditator and who is following vegetarianism, they are the wiser men. And the ones who have embraced their own feminine self. Absolutely. अच्छा बाबा. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Shubhangi, for this wonderful session. मैडम जी, आपके बारे में आप नहीं बोले. आप हम आपका सुनना चाहते हैं. आप कैसे आए ध्यान में? सर, हम एक तो इमोशनल रैक थे 2010-11 में, और उसी टाइम में मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे को लेके गई मदर इंडिया के घर पे. हमारा घर और मदर इंडिया का घर एकदम जुड़ के है. अच्छा. तो वहां मेरे को लेके गई कि बोली कि भाभी यू जॉइन, अब वहां जाओ, मेडिटेशन करो, पता नहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा. तब तक सर इतना बुरा हालत था मेरा कि मैं नशा करने लग गई थी. आई वॉज हैविंग टोबैको. मैं नींद का गोली खाती थी. मेरे बॉडी में इतने बीमारी थे और घर का माहौल एकदम भी अच्छा नहीं था. तो 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया सर, लेकिन कहीं पे भी मेरे को शांति नहीं मिला. तो जब से मैं मदर इंडिया के घर जाने लग गई, वहां पे हरीश भाई ने हम लोग को, मदर इंडिया ने हम लोग को मेडिटेशन करना सिखाया, और तब से रेगुलरली मेडिटेशन कर रही हूँ. धीरे धीरे करके मेरे अंदर हिम्मत आई. मैंने अपने आप को संभाला. मैंने मतलब परिस्थिति का सामना किया. एंड सर, द टर्निंग पॉइंट वाज 5 years बैक, जब मेरा सारा एडिक्शन विद इन अ स्पैन ऑफ 15 days मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मैं पान मसाला और जर्दा खाती थी सर, जो कि 22-23 बरस खाया मैंने, एक दिन में छोड़ दिया. नींद की गोली खाती थी सर. एक दिन यदि नींद की गोली नहीं खाती थी तो मेरे को नींद नहीं आता था, उसको छोड़ा. रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जिसके लिए मेरे को हर 21 days में इंजेक्शन लेना पड़ता था और बहुत पेनफुल था सर वो. एक दिन जस्ट मैंने डिसाइड किया, और मैं ये पेन अब सहूंगी नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और मैंने उसको भी छोड़ दिया. एंड सर 5 साल हो गया है, मैंने आई हैव नॉट लुक बैक. मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा है. बहुत अंदर में गुस्सा था सर, वो भी बहुत काम डाउन हो गया. आई विल नॉट से कि 100% निकल गया है, लेकिन हाँ 90% तक अपने आप को कंट्रोल किया है मैंने. और जो प्रॉब्लम्स को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उन सबको मैंने एक्सेप्ट किया है. एंड नाउ लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल. आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ. एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिनसे मेरे को प्रॉब्लम था उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, और वो भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं मेरा मेडिटेशन में, मेरा जर्नी में. ही सपोर्ट्स मी एंड आई एम वेरी हैप्पी सर. और आपसे मिलके तो इट इज जस्ट ब्लिस सर. अभी हम लोग का जो हुआ था प्रोग्राम शहीद भवन में, उस टाइम में मेरे को फर्स्ट टाइम मौका मिला था सर आपको एक अच्छा वाला हग देने का. एंड I really cherish those moments, sir. Thank you, sir, for being there in my life. That's great, Baba. तो सर बहुत धन्यवाद, और भी सब मास्टर्स लोग का, जिन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया, मेरे को रास्ता दिखाया, इंफॉर्मेशन दिया सर. इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला, so I could choose the right path. Thank you so much, sir. Love you, sir. Right, Baba. So now I call upon Sahil to take over. Sahil, please come. We'll take the question. Okay, we have one little question for Shubhangi before we close. So I would like to invite Shipra. Okay.
Yes, we have one little question from Shipra Bhabi. So we'll invite Shipra Bhabi on the stage so that she can ask one question. And this is the only question we are taking before we close. So to Shubhangi on the Divine Feminine. So Shipra Bhabi, please. Is Shubhangi there online? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Are you here? I am audible? Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, Shipra. Yeah, your session was amazing, and I have learned so many things from your session. One thing I have कि आपने जो पोल्ट्री फार्म का स्टोरी बताया एंड हैन का जो पेन बता रहे थे, ऐसे ही हम लोग दिन रात कुछ ना कुछ देखते हैं, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो, चाहे हम लोग जब केज में देखते हैं कि वो एक बर्ड्स इतने सारे अंदर में है, वी फील सो मच पेन फॉर देम बट वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग फॉर देम, एंड फिर हम लोग लेटर उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज पेन को रख करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So how we can heal the pain of the animal or birds when we see them or when we feel their pain? How can we heal them? Right, right. जैसे मैंने बोला था शिप्रा कि एम्पैथी ये सिंपैथी है. अगर हम उस पेन में अगर खुद ही पेन के साथ जुड़ जाएंगे तो वो सिंपैथी हो जाएगी कि मैं अपने उस पेन में ही चली गई. बट हमें एम्पैथी दिखाना है. एम्पैथी क्या है? हमें उसकी प्यार में, अपने पीस में उसको खींचना है. तो हम कैसे कर सकते हैं वो? एक तो हम सबसे बड़ा है कि ध्यान, कि हम ध्यान में वो ऊर्जा भेजें और कॉन्शियस रहें कि हम ना नॉनवेज खाएं. पहली बात वो है कि हम अपने से शुरू करें, कि हम साथ में अपने घर वालों को अगर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी ना खाएं, बट वो उनकी चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शन को लेके और एम्पैथी रखें और प्रेयर कर सकते हैं हम उसके पेन को लेके, जो भी पेन है, और एजुकेट करें हम पीपल को. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेशन लीजिए कि क्यों नहीं खाना चाहिए हमें. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एजुकेट कीजिए लोगों को कि ये देखिए कितने पेन से वो जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं, तो जो हम खाते हैं वही वैसा तन बन जाता है, मन बन जाता है. तो सोचिए कि वो कितने पेन में है वो जानवर, और उससे वो जो सामान हम खा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं वही बन रहे हैं. तो सबसे बेस्ट पार्ट होगा आप एजुकेट करिए लोगों को इस बारे में, समझाइए इसके पीछे का रीजन. और दूसरा एम्पैथी रखिए, सिंपैथी नहीं. हमें पेन में नहीं जाना, हमें उसके प्यार में, उस पीस में उसको खींचना है, बाहर निकलना है. तो आप एजुकेट करेंगी तो वो बहुत बड़ी बात है. इसको स्प्रेड करिए वेजिटेरियनिज्म को. ओके, दैट वी आर डूइंग. यस, ग्रेट. तो और उसको ग्रो करिए और क्रिएटिव आइडिया लेकर आइए कि कैसे हम इसको और ग्रो कर सकते हैं. एक साइंटिफिक रीजन दिखाइए उनको, एक बायोलॉजिकल माइंड से समझाइए कि हमारे टीथ देखिए वैसे नहीं है. उनको रीजन बताइए कि क्यों नहीं हमें ये खाना हमारे लिए जरूरी है. तो जब हम ये रीजन उनके सामने लाएंगे, प्रैक्टिकल रीजन लाएंगे, लोग और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को. ओके, थैंक यू मैम. Thank you, Shipra. Thank you for asking me. क्या हो रहा है शिप्रा जी? नमस्ते सर. प्रणाम सर. क्या हो रहा है बाबा? सर आज तो पूरा दिन ध्यान में सुन रहे हैं. You are doing very well. सर आपको बहुत बहुत प्रणाम. Odisha people are doing very well, Baba. I am very happy. सर आपका ब्लेसिंग्स है. स्वामी जी है क्या उधर? नहीं सर, अभी तो नहीं है. अभी नहीं है. अच्छा. एक्चुअली कटक में थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो गया है तो वो बाहर गए हैं. अच्छा, ठीक है. सर आप कैसे हैं? मैं बस ऐसा हूँ, बस आइसक्रीम खा रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, पका रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ. खंडाला नहीं जा रहा, बस उतना ही. बिना खंडाला ऐश हो रहा है. सर सबका ही ऐश हो रहा है. हाँ. लॉकडाउन में हम लोग को खुद को ग्रो करने का मौका मिल रहा है, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं. थैंक यू बाबा. थैंक यू सर. स्वामी जी को प्रणाम बोलना. So thank you everybody. Thank you very much for such a beautiful session. And with this amazing session of the Divine Feminine, हमारी Divine Feminine आ गई time पे. So we are very grateful and
Thank you. Very everybody about everybody who's and before we go, Patri, 1 minute. Before we go, I would like to call Neelam Bhabi so that we call Patri ji in and we share. Hello, namaste sir. Thank you, Baba. Namaste sir. Thank you. Thank you sir for giving Team Odisha such an opportunity to do Dhyaan Yagna-3 sir. And sir, I am really thankful to all the masters for their blissful wisdom sir. And I'm also thankful to the technical team sir who are working backstage and handling the most important thing sir. Now sir, your wisdom sir. म्यूजिक कम करो। बस सब कुछ हो गया ना, और क्या है? कैसे बदलेगी हमसे हमसे ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे। बाय 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 सर। पत्नी जी, आपको कैसा लगा सर? क्या योर We want to hear from you sir. Your experience, how did you feel? And आपको कैसा लगा सर? Please, your last statement से हम लोग close करेंगे सर. आपका last statement. सुबह से मैं बैठा हूँ, शायद 1 घंटे के लिए बाहर गया हूँ, नहीं तो बैठा हूँ मैं. I'm very happy with all the masters. See, everybody has to listen to everybody else. That is the yoga by itself. Everything can be turned into yoga. Listening is a great yoga. When you listen, your mind is silent. When you're talking, your mind is active. What to talk? But when you are listening, you are not there. You don't know what to listen, but you are listening. There is no expectation. So you live in a lot of non-expectation when you are listening. The more you listen, the more enlightened you automatically become. Even if you listen very carefully to a stupid fellow, you will become more enlightened. And over and above that, if you are listening to a great master, और क्या चाहिए? Pyramid Spiritual Society movement, listening is very important. I have been listening to all the masters for the past 40 years. And I want to hear every master's experience for the next 70 years. I got a big plan of listening and listening and listening and listening and listening. That's the best way to train one's own soul. Listening, you are the divine feminine. If you want only to talk, that is the stupid masculine. When you want to listen, it's the divine feminine. Thank you, Baba. Sahil Saab, you have done a great work. Thank you so much. Sir. Message, sir. Thank you so much. That we call this.